Chad, we are live for day number 3 of Freestyle Chess and क्या ही धमाकेदार पोज मारा हुआ है मैग्नस कार्लसन ने हमारे सामने भाई। रिलैक्स करते करते लग रहा है बीच पे चेस खेल रहे हैं साज भाई, जैसे हम लोग भी खेल के आए थे मतलब अभी गोवा में। वेलकम साज भाई, फ्रीस्टाइल चेस डे 3। कल अर्जुन हार गए, लेकिन क्या वो आज कम बैक कर सकते हैं? Thank you so much, Sahil bhai. And let's also not forget, Sahil bhai just 10 seconds before the stream started, just won a bullet match. तो उनका अलग ही मतलब मजा चल रहा है. But भाई भाई बात करें हम अगर अर्जुन की, he's playing against Hans, and I think that's a very dangerous opponent. या But I feel जीत सकता है. Like I feel he has a good chance, but I would not say that he's a clear favorite. Like Hans is a या dark horse for me. कल भी वो बड़ा I feel अरुणियन के साथ it was kind of unfortunate what happened to him. So it will be a nice match regardless. But the star matchup, Sahil bhai, is of course Sindarov versus Magnus Carlsen. Let's go. दैट इज टफ एंड ऑफ कोर्स अर्जुन करेंगे कमबैक। कमबैक का ही जमाना है भाई, मतलब ही कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम लेजेंड्स लाइक अक्षय खन्ना कि कमबैक कैसे करते हैं। एंड बहुत बहुत मजा आएगा हमें देखने में। साज भाई, आपने धुरंधर मूवी देखी क्या? नहीं भाई, कैसी है? Is it good? बहुत सही है भाई, जाके देखो भाई। इससे पहले गो टू बुडापेस्ट, वॉच इट। बहुत ही क्रेजी क्रेजी भाई मूवी है। अभी तो मैंने वो देखी यार, नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट, एंड आई एम इन डायर नीड ऑफ वॉचिंग अ गुड मूवी आफ्टर दैट, क्योंकि वो हाँ, मजा नहीं आया भाई. do check it out. Check out that movie and check out the game and the position in front of you भाई। एक जमाना था मैग्नस कार्लसन और ओनियन कितने सारे टफ टफ गेम्स आपस में खेले हैं, आज साथ में ही एनालाइज करते हुए। एंड ऑफ कोर्स मैग्नस कार्लसन के होंगे ब्लैक पीसेस, आई थिंक सेम फॉर ओनियन। एंड इफ यू कैन गो टू द अर्जुन गेम साज भाई, ही इज एज यू मेंशन इज प्लेइंग हैंस नीमन, जो बहुत ही tricky खिलाड़ी है। ऑन हिज डे ही कैन रियली बीट anybody in the world, and we know how motivated he is। मुझे एक फेमस क्लिप याद है जहां पे आई थिंक वो अभिमन्यु मिश्रा, ही हैड दैट हैबिट ऑफ लुकिंग एट द बोर्ड फ्रॉम बिहाइंड यू। तो वो कुर्सी ऐसी होती थी, वो बंदा ऐसे आके पीछे से देखता था, ऐसे करके भाई ऐसे देखता था। तो हैंस नीमन खुद जाके खड़ा हो गया भाई, वो खुद जाके खड़ा हो गया उसके उसके बगल में जाके भाई। तो देख, हैंस नीमन इज एनिमेटेड, लाइक ही इज अ लॉट ऑफ फन एंड ही इज गोना मेक द गेम इंटरेस्टिंग। एब्सोल्युटली भाई, थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी भी हो गया भाई, तू करेगा तो मैं भी करूंगा. एंड समटाइम्स इट कैन वर्क, समटाइम्स इट कैन वर्क फॉर श्योर. लाइक आई थिंक इट हैज हैपेंड टू मी व्हेन जब अपोनेंट चाल चलता है ना, देन दे लाइक स्टेयर एट यू, लाइक क्योंकि उनको हाँ पता है कि अगर इफ यू स्टेयर बैक देन आप ही का टाइम जा रहा है. देन व्हाट यू शुड डू हाँ इज व्हेन यू मेक अ मूव, यू स्टेयर बैक एट देम, अब देखो भाई. तो इट्स लाइक सम रिवर्स हाँ साइकोलॉजी गोइंग ऑन. बट या भाई मजा तो आएगा इस गेम में. इज हांस टेस्ट। प्रिपेयरिंग ऑन हिज ओन या फिर क्या हो रहा है? Ooh, can we look for hands? Because Arjun तो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं. We can see. I mean, he has Magnus. That's great company to have. Where you're kind of preparing an opening in a completely random position, and we have the starting position. Sahaj, we can see the board there. King on F1, Queen अपने original square पे है. Rook H1 अपने original square पे है. Rook is already on E1 and Knights कोने में फेंक दिए हैं A1 और C1. So काफी interesting position मेरे हिसाब से, जहां पे आई थिंक दोनों बिशप्स ऑपोजिट साइड ऑफ द बोर्ड पे है। तो एक देख रहा है क्वीन साइड की तरफ, एक देख रहा है किंग साइड की तरफ। जहां भी ब्लैक किंग कैसल करेगा वहां पर अटैक पॉसिबल है। Nicely pointed out. I think the only kind of drawback in this position is your knight sitting on A1. या बाकी सब pieces तो more or less developed ही लग हाँ रहे हैं. So I'm guessing some move like C4 या फिर F4 type is what I would go for just to activate the bishop. Maybe not F4 क्योंकि आपका king भी expose हो रहा है, but C4 could be interesting. What are the players analyzing? That's the question. Yeah, I think C4 definitely is my move for choice as well. And players भी I think C4 ही देख रहे थे, E4 भी कंसिडर कर रहे थे। I think something I saw the pawn being on E4. And welcome chat, जितने भी लोग chat पे एक बार हाय लिख दो। क्रैश चिकू भाई, थैंक यू सार्थक भाई। मैग्नस इज आउट फॉर रिवेंज, आई एम श्योर ही इज यार। कल वो एक गेम हारे, अब उसका बदला चुन चुन की सबसे लेंगे। ठीक है, हनीमून पे नहीं जाओ, हैंड्स पे फोकस मत करो। हनीमून पे भी जाएंगे भाई साल के एंड पे, बट फिलहाल के लिए भाई हैंड्स हनीमून पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सबको 1 मंथ मेंबरशिप फ्री कह रहे हैं सार्थक भाई। वाह वाह, सार्थक भाई कितने दयालु आदमी है कि खुद गिफ्ट करने की सोच रहे हैं। साज भाई कितने भाई बड़े आई थिंक आदमी है इट्स मतलब। बिकॉज आपकी शादी हुई ना, तो शादी में कुछ तो गिव अवे होना चाहिए ना भाई. 1 month भाई membership to like a to everyone. एवरीवन तो नहीं भाई। भाई शादी के टाइम पे आई फील जितने खर्चे होते हैं लोगों को आपको देना चाहिए भाई, रादर देन फोटोग्राफर्स। That is true. That है is ना? true. I agree with that. I agree with तो सार्थक it. भाई But आई थिंक, हाँ बोलो बोलो भाई। I think शादी के बाद तो गिव अवे हो सकता है हाँ ना, शादी तो हो गई ना अब. हाँ 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 Like हाँ। now it's सो time थोड़ा to.
थोड़ा चेसकॉम की अगली सैलरी आने तो उसके बाद मैं करता हूँ गिव अवे। फिलहाल तो हम लोन पे चल रहे हैं भाई, ओके। कमिंग बैक आउट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट, टिको भाई आपकी रेटिंग कितनी है 960 चेस की? भाई मैं उतना खेलता नहीं हूँ, खेलना चाहिए मुझे। बाय द वे अरुण की जो शर्ट है, ये मतलब डिजाइन है कि इसमें पानी गिर गया थोड़ा सा? हाँ, आई थिंक डिजाइन है भाई, बट कम ऑन, थोड़ा पानी गिर गया। बेचारा बेचारा लेमॉन। आई एम नॉट आई श्योर होप एक्चुअली। अच्छा हुआ हिंदी में बोल दिया आपने, नहीं तो नहीं तो भाई क्रेजी हो जाता, क्रेजी। But yeah, bhai, हाँ Vincent Keimer, of course, classy as usual with his white shirt and orange, I think, suit. He's भाई, playing against Levon today. Important match. विंसेंट को क्या सूट करता है भाई, ये येलो ऑरेंज सूट यार, इट जस्ट लुक्स सो ऑसम ऑन हिम, लाइक मतलब लगता है उसके Hmm. लिए ही बना है। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ही डिफीटेड अर्जुन यस्टरडे। सो कहीं ना कहीं पे मोमेंटम उनके पास है। एंड बाय द वे गेम्स आर स्टार्टिंग, लेट्स गो टू अर्जुन गेम एज सून एज पॉसिबल। बाय द वे पॉन टू E4 खेला है फैबियानो कारुआना ने अपनी गेम में, अर्जुन के गेम में पॉन टू E4 इज वेल। सो साज भाई, E4 इज द मूव ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट प्लेयर्स। Yeah, and Caro Khan chosen by Arjun. I think I mean, if activating the it can be bishop. called But Caro Caro Khan can. 960 वर्जन, भाई Caro Khan ही हुई ना ये तो E4 C6, but अब Uh, D4 खेलेगा तो D5. But हाँ, yeah, I think E4 was it the best move in the position? Actually no, I yeah, think, D4 and C4. yeah, बट okay, 19-20 yeah, का ही फर्क है. He goes D4 हाँ, and he goes F6. Look at this. Arjun not immediately going for the center. I think trying to keep more and more pieces on the board ताकि वो जीत सके black pieces से. Of course, that, yesterday he lost, but आज fifth place के लिए वो fight कर सकता है. बिल्कुल फिफ्थ प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन इफ मैग्नस फिनिशेस फोर्थ, यू फिनिश फिफ्थ, दैट वुड बी एन अमेजिंग टूर्नामेंट। बाय द वे आफ्टर F6 हैंस जिमन ने पीछे देखा ऐसे किसी को, ऐसे लग रहा था, होता है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, वो कहते हैं भाई ये क्वेश्चन तो पेपर में पक्का आएगा भाई, लिख के ले ले भाई, तू लिख के ले ले। आप कहते हो नहीं भाई कोई चांस नहीं, भाई तू मान, भाई की बात मान। एंड देन यू गो, ये आप एक पोर्शन ऑफ सिलेबस करते हो बिकॉज आपका दोस्त कहता है कि यही आएगा। आप पेपर देने जाते हो, पेपर में कुछ भी नहीं होता भाई, सारा उल्टा होता है। तो दोस्त की तरह देखते हो भाई, तेरी वजह से फेल हूंगा मैं आज। वही आई थिंक वहां पे देखे थे हैंस इवन मे बी हिज जो उनके साथ साथ तैयारी कर रहे थे, शायद F6 उन्होंने देखा ही ना हो। एंड नाउ हैंस इज लाइक भाई Yeah. ये तो हमने देखा ही नहीं। एग्जैक्टली, एंड ऑफ कोर्स पॉइंट ये कि दोनों साइड से आप ब्रेक कर सकते हो, आप E5 से भी और D5 से भी, एंड दोनों के डिफरेंट लाइक सिचुएशंस आ सकती हैं. चैट अभी अभी स्टार्ट किया है, बट एक क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन आपके लिए. व्हाट इज द वर्स्ट मूव इन दिस पोजीशन फॉर व्हाइट? ओह, बेस्ट तो चलो हम निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट मूव हियर अकॉर्डिंग टू यू फॉर व्हाइट? इंटरेस्टिंग सवाल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक ही इंटरेस्टिंग। चाल है, उतनी खराब नहीं है वैसे वो चाल, बट उससे मतलब लॉस्ट, ऑलमोस्ट लॉस्ट लॉस्ट हो जाएगी. कोई ऐसी चाल नहीं है उसके अलावा, आई थिंक जिस पे पोजीशन लॉस्ट है. ही डजंट प्ले इट, ही प्लेज F3. बट चैट, एनीवन वांट टू टेक अ आई एम गेस? ऑल्सो I am also thinking, I mean, bishop C4 must be black's move, I'm thinking. So how can I make it really bad for me, yeah? एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली. लोग कह रहे किंग E2 आई थिंक कुड बी, बट किंग E2 से कुछ मर नहीं रहा. द मूव इज नाइट CB3, because उसपे bishop C4 check Ah, and you have to go rook E2, and then okay, you're losing an exchange. yeah, But okay, he nice, doesn't fall nice. for it, he plays F3. Yeah, very, very logical. And also, I think knight CB3 positionally as well would not make sense, Chad, because आप दूसरे knight का भी square ले रहे हो. So वो knight likely B3 पे आएगा, ये वाला D3 पे आएगा. And then of course, you can open up your bishops. F3 is a right step in that direction. Bishop on G1, smiling already. And he goes E5, breaking the center. Let's go, the fight is on. कितनी weird position है भाई, ये golden pawn तो दोनों ने ही, मतलब पहली 3 चालों में दोनों ने ही पुश कर दिया भाई. ये गजब बेइज्जती है. नहीं नहीं, आई थिंक साज में आपके रूल्स में भी फ्री स्टाइल के लिए अडेप्टेबल है यार, मतलब मे बी इट्स नॉट द F पॉन इन फ्री स्टाइल पोजिशंस, इट्स अ रैंडम पॉन। यहाँ पे क्या पता वो A पॉन हो, G पॉन हो, लाइक इट चेंजेस इन फ्री स्टाइल चेस जैसे ही पीसेस की प्लेसमेंट चेंज होती है। एंड चैट मीनवाइल स्ट्रीम लाइक करो भाई लोग, जल्दी से 100 लाइक पहुंचा दो। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आपको चाहे शादी की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, आपको 500 लाइक की जरूर मिल सकती है। तो भाई जल्दी से वो अंगूठा दबाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, क्यों साज भाई? एग्जैक्टली, जिंदगी में भी आगे बढ़ो, लाइफ में भी आगे बढ़ो, एंड लेट्स गो. ही प्लेज E5. अब हंस नीमन सोचते हुए, बाय द वे, टेकिंग अ वेरी क्विक लुक एट सिंडारोव्स पोजीशन, बिकॉज गेस व्हाट साहिल भाई, it is exactly the same. वाओ, Magnus Carlsen has gone for the same C6 and F6 approach.
आई एम गेसिंग मैग्नस एंड अर्जुन ने साथ में कुछ देखा होगा ये। हाँ। एंड व्हाइट, दोनों साइड व्हाइट से अब सोच रहे हैं बिकॉज व्हाइट ने प्रिडिक्ट नहीं किया था ये मूव। Oof, this is very interesting. And it's funny कि bishop on b1 defense a2, bishop on g1 defense h2. So फिलहाल के लिए black has no threats. But I really like the setup. Yeah, आप दोनों pawn खेल दिए. अब e5 भी possible है because my bishop on b8 defends e5. d5 भी possible है because bishop on g8 defends d5. So मैं central break instantly नहीं किया, but मैं करने वाला हूँ. मैं आ रहा हूँ. Like this threat is एग्जैक्टली, stronger than the execution. एग्जैक्टली, सत्य वचन। एंड आई थिंक इसी के साथ सिंडारोव थोड़ा सोचते हुए, I think he's going to take some time to think. While that happens, should we switch back to Arjun? Actually, Hans अभी Yes. भी सोच ही रहा है 3 मिनट से। By the way, chat, let's not forget the time control of this section is 30 plus 10. So that means कि आपको 10 सेकंड इंक्रीमेंट मिलेगा हर चाल पे. But what we saw yesterday was a trend कि भाई पहली 10 चालों में players बहुत टाइम ले रहे हैं. They find it difficult to come up with the best moves. And उसका मतलब कि time pressure is again going to be big factor. Saj bhai, I have a question for you and chat for you as well. Let's say कि you have a freestyle position, ठीक है? And आप यहाँ पे खेल रहे हो. What would you prefer? और 10 मिनट एडवांटेज इन द फाइनल मोमेंट्स, लेट्स से कि ओपोनेंट के पास है 30 सेकंड, आपके पास 10 मिनट 30 सेकंड, और एन एडवांटेज ऑफ अ पॉन, बट बोथ हैव 30 सेकंड ईच. व्हाट वुड यू प्रेफर सहाज, व्हाट वुड यू प्रेफर चैट? टाइम या फिर मटेरियल? टाइम, टाइम इज टाइम मोर है. इम्पोर्टेंट देन मटेरियल भाई। मटेरियलिस्टिक लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। वाह. या तो अगर मटेरियल मटेरियल दे रहे हो तो यार कुछ ढंका वंका दो ना यार, मतलब कौन क्या बाबा होता ग्रोवर जी, सलाम हो भाई. है। टाइम चाहिए भाई, टाइम, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। वाह. वाह वाह, बाबा ग्रोवर जी तो के सत्य 10। वचन. आई थिंक we can have, I think, these बाबा ग्रोवर के सत्य वचन at once or twice a stream, है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैया जी भी बोल रहे टाइम इज मनी भाई, एग्जैक्टली। एंड बाय द वे हांस, सॉरी, ही गोस F3 एंड E5, हांस अभी भी 5 मिनट से सोच ही रहा है भाई। ऐसा क्या हो गया? Like he can go knight c, oh, knight b3, I guess. It looks logical. But also bishop f2 is apparently a good move in this position. ये तो कौन ही खेलेगा? आई थिंक वो एक कैसल करने की तैयारी में भी, या यू वांट टू कैसल एज क्विकली एज पॉसिबल कि बिशप को लाओ एंड हटाओ. Hmm. बिशप C4 चेक जो है ना, इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग. यू सी दैट चेक, आपको लगता है किंग F2 कभी खेलना पड़ सकता है. यू डोंट वांट टू डू दैट. एंड दैट रिमाइंड्स मी, वुड यू कंसीडर बिशप C4 एनीवेज? बिकॉज आई इफ व्हाइट प्लेस अभी बिशप D3, दैट्स अ गुड ट्रेड फॉर ब्लैक, नो? no, 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 no. I think my bishop is way stronger than your bishop. मेरा bishop पूरा Ooh, diagonal control कर रहा है। आपका bishop थोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे। got it. Like what I would do is भाई, what I would do is I would play D5 just for the memes, yeah. Because look at this, it's exactly the same position, symmetrical, and it's not even bad. I would just for the memes I would play D5 here. But I think, oh, he doesn't play it. Yeah, Bishop F7, Arjun being very solid. But I'm curious if Magnus plays it. Like, I would not be shocked. And same position in Magnus as well, F3, E5. So, copy, paste, Control C, Control V का पूर्ण उपयोग कोई इनसे सीखे भाई. Crazy. या भाई वो पीछे देख रहा होगा सिंडारोव, जो वो खेल रहा है वही कॉपी हो रहा है यहाँ पे। And yeah, F3 E5 is exact same position, and again Sindarov is thinking for a long time as well. So, oh, he played C3 as well. Bhai, what? Why? Now Magnus has to go bishop F7, and we are literally in the exact same position. What is going on? But I think Magnus found his new, chadi buddy. It's Erigesi Arjun, and dono same ही चाले चल रहे हैं. I'm also checking other games. Other games में, I'm not kidding. We have we could have the same structure in all the games at some point. If we swap games quickly, go to the game of Aronian with black, it could transpose directly. Oh, he played his F3. Oh भाई, क्या He चल just रहा है played भाई? F3. भाई अब उसको खेलना है C6, वो खेलेगा D4, exact same position आ गई भाई लो। Damn. So 3 games similar. Finally, Maksulu game में, is it possible to transport here as well after E5? I think it's possible, और right? Oh, मसूदो played. ने B6, भाई साहब, बट उसने भाई. B6 खेल दिया ना, तो थोड़ा डिफरेंट है ये। थोड़ा उसने B6 पता नहीं क्यों खेला इसने। लेट्स गो लाइक फ्रॉम द टॉप। E4 C6 हुआ, D4 F6, okay, F3 knight C7, okay, this is was not played. Arjun went for E5 straight, knight C7 was a slight inaccuracy, knight B3 आया, B D6 क्या चाल है भाई? B6 नहीं समझ आई मुझे। अच्छा, I नाइट think C5 he. रोकने के लिए, ओह लुक एट हाँ. दिस, नाइट C5 नाइट हाँ. B7 में हो क्वीन ट्रैप हो रही थी Queen भाई, trap. क्रेजी। Nice. C3 E5 है, नाइट D3 एंड ही इज थिंकिंग हियर, होपिंग यार, पर हम लाइक स्कोर्स अ विन टुडे। भाई उसके लिए तो बहुत खराब लग रहा है यार। ही इज राइट नाउ लाइक 0 True. आउट ऑफ व्हाट 9।
True, something like true, that. true. That's Yeah, sad. yeah, yeah. And also, But if maybe other players play bhai, d6, maybe, huh? look at this. Magnus played bishop f7 as well. So Magnus and Arjun are literally in the exact same position so far. Chat, don't let any टीचर tell you कि भाई आप आंसर आगे वाले का कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज चेस में तो पॉसिबल है भाई। चेस में तो लिटरली तो बैठ के क्वेश्चन पेपर देख के आंसर डिस्कस करके भी अपना एग्जाम दे सकते हो भाई। अलग ही है, सेम पोजीशन, बाद में कैसल्स ऑन द बोर्ड, कैसल्स एंड नाउ नाइट ab6। I'm switching back to Arjun keyboard पे थे ना आप? Castle, Castle. हम्म। Castle was a slight inaccuracy. Okay, no, it's not an inaccuracy. Short Castle and Knight AB6 हुआ. By the way, Magnus ने भी Castle किया है. So basically, this is the position in Magnus's on board. अगर White Castle करता है, Black Knight B6 खेलता है, तो this would be ditto, same position Lords, in Magnus's wow। board. Isn't it a good sign Arjun playing Magnus? Of course it is. It's a great sign, I would say. The only thing is, you have to continue playing like Magnus beyond, let's say, 10, 15 moves. That's where the real skill lies. And also, I think, कोई question है कि भाई लोग GCL कब से? GCL, by the way, I think day one is on 14th, if I'm not mistaken. So GCL starts very, very soon. It's going to be an exciting event. बहुत सारे top players खेलेंगे. We'll have Gukesh, we'll have Vidit, we'll have Arjun, Prag, Sahaj bhai, any team you're supporting, any player you're supporting at the GCL? Tough question, bhai. Very tough question. But obviously, full support to Gukesh. I think he's a world champion, and like I feel like this wasn't his year so far, and I think GCL जीतने के बाद maybe that's some concession. So maybe I'll say Gukesh. But Yeah, yeah, I mean it's just an interesting event, and I have never covered it before, so it would be a lot of fun like on site. But देखते हैं भाई क्या होता है. बिल्कुल। एंड आप टाइम किसको सपोर्ट कंट्रोल, कर रहे हो? मैं भी, आई थिंक, I'm not sure. Anish ki team, I think, is my favorite one. I forgot the name. I get confused, yeah, teams names se kai baar, but Anish ki team is my favorite one. But I think Gukesh, of course, full support to him as well. And also, I think the time control is very interesting. I am seeing something. I'm not sure if that's the time control. Don't want to misquote it. But GCL के time control is traditionally been something very, very unique. So मजा आएगा भाई। लास्ट टाइम याद है जब विदित और नोदर बे खेल रहे थे भाई, टक 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 टक, हाँ. दैट वाज एंड क्रेजी। देन आई थिंक विद इट कुछ तो विनिंग पोजीशन पे था, एंड देन वो टाइम पे हार गया था तो ड्रॉ हो गया था, समथिंग लाइक ड्रॉ हो दैट. गया था। या। बाय एंड बाय द वे, कासल नाइट b6. ओ हाँ, बाय द नाइट वे बी लुक, सिक्स। डिट्टो सेम पोजीशन भाई. मैग्नस आल्सो प्लेड नाइट b6. भाई भाई चैट साहब। 6 चालें हुई हैं इस पोजीशन में, एंड वी आर इन द एग्जैक्ट सेम पोजीशन. डिफरेंस इज मैग्नस के पास है 26 मिनट, एंड अर्जुन के पास है 29 मिनट, almost 30 minutes. So Arjun is actually playing faster than Magnus, and So, he's playing like Magnus. so Arjun is not playing like Magnus. Magnus is playing like Arjun actually, हाँ, because he's मैग्नस taking more पीछे देख time. रहा है. मैग्नस पीछे देख रहा है हाँ, भाई अर्जुन कैसा खेल रहा है, और उसको देख देख के खेलते हैं. हाँ। और टाइम डिफरेंस भी देखो भाई, 21 मिनट है हांस के पास. 8 मिनट डिफरेंस इज अ लॉट ऑफ टाइम. True, true, true. And also accuracy, they call 99 by Arjun, 99.6 by Hands. So Hands also playing some fabulous chess. And now, for example, what does White play? Because D5 is well controlled by Black. And Black could also consider D5 at the right moment. For example, the move I would play is Knight D3, which looks logical to me, or Knight B3, developing the knights. But Indian कह रहा है DE5. What is DE5 here, Saj? I guess an attempt to simplify the position, but I would not go d5 here. My pawn is central. I mean, this is a like a classical principle, yeah. आपका central pawn है, ये pawn मतलब एकदम कोने में है, तो why should I trade my good pawn for your bad pawn? But okay, freestyle के principles maybe are completely different. But I would not go for d5. I don't even think I would even consider a move like d5 here. But I'm with you completely here. I like knight d3 and I like knight b3. Both of them feel logical to me. Yeah, yeah. I think development is of utmost priority. And meanwhile, Hans Niemann has already, you know, been thinking for so long कि उनका clock अब 9.5 मिनट पीछे है. If you had to bet Maggie's right now, it would have to be on Arjun already. Hans needs to play some aggressive moves, some attacking chess, ताकि अर्जुन को भी मजबूर सोचा पड़े. वरना जो हमने एक सवाल पूछा था साज भाई कि 10 मिनट या फिर पॉन आप, आई थिंक अर्जुन ने चॉइस कर ली है. इट इज 10 मिनट्स इंडीड. बहुत डिफरेंस है टाइम का. Yep, and it's a smart choice, I think, because ये 10 मिनट का difference अभी उतना show नहीं होगा, but 20 minutes down the line, when Arjun has 15 minutes and Hans has 5 minutes, then it's going to really start putting up the pressure for
Hans. So not a great start for Hans here today. I love this camera angle. मैंने कल भी कहा था, I saw Hans give Arjun a slight stare. Arjun fully focused on the pieces in front of him. He is one guy who will not really delve into psychology. Bobby Fischer ने कहा था, I believe in good moves. ऐसे कुछ कहा था ना? What was the quote, Sash bhai? Fischer का? I don't believe in psychology. I believe in good moves. Yeah, although I think he did believe in psychology a little bit, but if I somebody think, yeah. embodies that code the best, I think it's probably Arjun, fully focused on the pieces, maybe looking at a wall in the corner, but it's never about trying to, scare or intimidate his opponent. Yeah, fully focused on the game. Yeah, fully. But I think he can be a bit intimidating regardless. I think Arjun ka chess itna intimidating. I feel when he plays when he's that focused, I think it can be a very intimidating thing to me. But maybe Hans is not, because Hans, is also a very very confident player himself. But the position does not look very promising for Hans right now, especially the time situation. By the way, quick update for everyone. Sindarov, on the other hand, has made a move, knight d3, जो हम डिस्कस कर रहे थे. हांस अभी भी वही सोच रहा है, बट सिंडारोव और मैग्नस का टाइम लिटरली सेम पोजीशन पे है, एंड टाइम भी उनका एकदम बराबर है, बट हांस ऑन द अदर Wow. हैंड इज स्टिल थिंकिंग. Why Hans even played the best move? D takes E5, the move the Indians consider as the top move because, as you mentioned, it's simplifying the position, fixing the structure, and the thought process that he had the best result at the end. Yeah, at least वो सोचने का फायदा हुआ. And now it's time to see what is the real plan after Black just gobbles the pawn back, F takes E5. What is White's idea? He just took, and now it's Hans's turn. He's already 11 minutes down. And as far as I can see, bishop d3 is what he plays. Wait, He should what? have gone knight d3 instead. Bishop d3 feels like a very odd move to me. Point ही क्या है इस चाल का? Knight का आप करोगे क्या? Maybe knight e2 and knight g3 at some point, but it just feels wrong. Yeah, It Bishop just feels D3. wrong. यू नो द सिंपल क्वेश्चन इज कि आपका बिशप ऑलरेडी किंग साइड की तरफ देख रहा है एंड क्वीन साइड पे देखने के लिए कुछ खास है नहीं. तो व्हाई प्ले बिशप D3 सहज लाइक दिस मूव टू मी एटलीस्ट मेक्स नो सेंस. इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग या. What's also confusing is कि हांस बोर्ड पे क्यों नहीं है? हांस भाई वो बिशप d3 लोगो खेल के बाद दिखाने का चला प्रो गया है था. ना भाई. जो भी लोगो दिखाना वो अच्छे ओह, से दिखाता है, तो कुर्सी वाला लोगो अच्छे से दिखा रहा है वो. स्टाइल है भाई. d5 स्टाइल है. played by Arjun immediately. I think one of the best moves in the position, gaining the center, breaking the center, so to speak. And now it's Hans's turn, who's not even at the board. हाँ भाई, लग रहा है ब्लैक वाइट की तरह खेल रहा है यहाँ पे. सेंटर उनके पास है, डेवलपमेंट वाइज ही इज नॉट लैगिंग ईदर. सो आई थिंक फिलहाल के लिए अर्जुन इन अ ग्रेट स्पॉट. एंड जो लोग चैट में आ रहे हैं भाई लोग, एक बार सबके सब हाई लिख दो. मुझे देख रहा है भाई कौन कौन लोग हैं चैट में जो फ्री स्टाइल को स्टार्टिंग से ही देखने आए हैं. साज भाई, आई थिंक द नेक्स्ट couple of months are so jam packed. I think we started with the World Cup, right, जो नवंबर में हुआ, पूरा महीना था. फिर आया सुपर पॉक चैंप्स, फिर वो खत्म होते ही फ्री स्टाइल, फिर वो खत्म होते ही जीसीएल, वो खत्म होते ही वर्ल्ड एप्स, वो खत्म होते ही टाटा स्टील इंडिया, वो खत्म होते ही टाटा स्टील ओपन. एंड फेब्रुअरी आई थिंक बहुत सारे इवेंट्स होंगे. लाइक कितना पैक्ड द कैलेंडर भाई, मतलब इट्स इनसेन. Why, it's a nice problem to have, because chess is getting more and more, famous, and it's getting more and more coverage. And I think it's a nice problem to have. And इसी के साथ साथ मेरी cold coffee भी आ गई भाई. That is insane. वाह. साहज Good भाई news पे कोल्ड good कॉफी news नहीं भाई. छोड़ ये रहे. कहाँ से मंगा भाई रहे हो तो साहज भाई कोल्ड कॉफी? this place called Bistro. It's very nice. नाइस. साहज भाई इज अ It's कोल्ड very साहज nice भाई, cold हॉट coffee. कॉफी या कोल्ड कॉफी? If I'm in India, 100% cold coffee. But if I'm outside, then I don't get good cold coffee, so I have hot coffee there. बढ़िया. बाय द And वे, you? What would you choose? yeah, I think it's a good choice to have. जैसा आपने साहज भाई कहा Yeah. पहले. हॉट या कोल्ड, आई एम अ कॉफी गाय, तो कॉफी मस्त है. Not a big fan of tea, but okay. Meanwhile, Queen C2 played by Hans Niemann. I think ये इन्होंने clear इशारा कर दिया है. Plan है मेरा to take on D5 and then take that pawn, important pawn on H7 near Arjun's king. So कुछ तो करना पड़ेगा साहज भाई. I'm guessing इसके बारे में. Do we play H6? Do we play something else? Bishop G6? What's our plan here? Good question. Very good question. The first thing I'm looking at is this knight on c8.
and I would like to Hmm. activate it somehow. But right now, white has a immediate threat on the board, which is pawn takes pawn and bishop takes h7 check. That's what Yeah. I need to guard. Yeah. तो So भाई कंप्यूटर की बेस्ट चाल यहाँ पे नाइट सी फोर है, एंड इट मेक्स नो सेंस टू मी बिकॉज नाइट सी फोर के बाद ये पॉन मर रहा है और ये भी मर रहा है, एंड व्हाई वुड आई give this up for no reason? That's just beyond me. Maybe something like king h8 can make sense. It's a nice prophylactic move. ताकि bishop h7 checks in, and maybe you can trap it later on. What do you think? but how do you trap it though? I can't play g6, right? Because I would still take the bishop. So king h8, let's say, I take on d5, you take back with the pawn, I'm guessing. Bishop h7, how do you trap it now? It's not so clear. Oh, actually, puzzle rush tactic. We have e4 as a breaking point ताकि queen नजर ना दे पाए. Bishop f5 के बाद you just go ef3, and somehow you have enough compensation Ah, because remember हमारा bishop भी super strong है यहाँ पे. ooh, when pawn se maroge, queen g5 comes with check, and there are some ideas, yeah? Yeah, yeah. This is like borderline lost for white. So some crazy tactics here, but I think a bit unlikely. I think Yeah. from Arjun's perspective, he would think h6 खेल देते हैं, pawn देते नहीं है. Like I think that would be a more human move. And a very practical one, yeah. Sometimes, you have a 13-minute edge on the clock. I mean, unless your spidey sense tingles, it tells you कि भाई यहाँ पे कुछ critical है. I think Yeah, play the look at obvious this. move. And what He does he goes do? h5. H5. By definitely not the obvious move, Saj. By H5. Yeah, By ये क्या हो गया? क्या हुआ? Like h5 is just I think अर्जुन ने सोचा होगा h6 तो मतलब बहुत पैसिव है, और h5 मतलब usually most freestyle positions में h5 is a good move, so he said okay, अब h pawn को टच कर रहे हैं तो h5 ही खेल देते हैं, अटैक करते हैं, let's see what happens. I think a good choice. Actually Very white के interesting. पास सिर्फ एक ही चाल है यार, like knight a b3 only move to like keep the position equal, otherwise he's a bit worse. But okay, knight a b3, I think अगर आपको एक सेकंड दिया जाए, that's the move you play, yeah, because the worst place piece you wanna develop, c5 square tempting है. You can see it's a hole for for the white pieces. So knight a b3 looks very logical. The only question is ये h5 pawn का क्या ये आगे बढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, शादी करेगा, बच्चे करेगा, या फिर ये वहीं बैठा रहेगा और अपने होम टाउन में, ये देखना बहुत बहुत जरूरी मेरे लिए. बाय द ये वे, तो नाइट ए बी थ्री टेकू भाई प्लेड. आपने अपनी, ये तो आपने अपनी लाइफ स्टोरी बता दी भाई. भाई कॉलेज भाई शादी और भी लोग करते हैं भाई, साज भाई, खाली मैं नहीं हूँ. कॉलेज भी चले 40. गए, कॉलेज भी चले गए, शादी भी हो गई, होम टाउन पनवेल में भी चले गए. अब भाई और बचा ही क्या है? भाई 40 लाख शादियां हुई हैं पिछले 1.5 महीने में भाई, इंडिया में बहुत शादी है भाई. अरे भाई चैट, डू यू एग्री? लाइक ये तो मतलब किसी ने लिखा एनएम बनेगा. आकाश भाई, लव यू भाई, क्या जोक था भाई. बाय द वे, शायद नाइट ए बी थ्री भाई प्लेड. आपका साइमल कैसा गया? बढ़िया भाई. आई थिंक 15 प्लेयर्स थे, एंड एक ड्रॉ हुआ मेरा, एंड 14 विन. जो जो ड्रॉ अच्छा हुआ हाँ, वो एक्चुअली द प्लेयर वाज रियली गुड, लाइक अराउंड यू हैड अ 2000 साइमल रेटिंग. है इन दिल्ली तो. क्या रेटिंग थी उनकी प्लेयर्स की? लाइक एक दो दो 2000 के प्लेयर थे आई थिंक, और एक दो आई थिंक 1900 1800 के थे, बाकी सब वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. मेरी मेरी 1900 वाले से ड्रॉ हुई, बाकी 2000 वाले को हराया मैंने. वहां बहुत, क्योंकि मैंने सबसे ना साइमन से पहले मैंने पूछ लिया था 2000 वाला कौन है, अभी बताओ मेरे को, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा केयरफुली खेलूंगा मैं वहां पे. तो या, Do बट you एंड think if द गाय हु वाज, या, do you think if you don't know the ratings of the players, like it's difficult, or do you think it's easier? much more difficult, much more difficult, because in simul, like okay, this was the first like simul with a clock that I did, Oh, like, and so like साइमन में लाइक ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी यू जस्ट हैव टू मेक अ रैंडम मूव एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि हर जगह आपकी घड़ी चल रही है. तो यू शुड नो वेयर यू हैव टू फोकस एंड वेयर यू डोंट हैव टू फोकस, लाइक फोकस एसेंशियली. दैट्स व्हाई आई हैड टू नो कहाँ पर है जहाँ मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है. very interesting. तो 14.5 से जीते आप यार. या वन ड्रॉ, और वो भी मतलब लाइक आई थिंक द गाय हैड अ चांस टू विन. इट वाज अ क्वीन पॉन एंडिंग, एंड इट ही हैड एन एक्स्ट्रा पॉन, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाया. आई थिंक वो एंड गेम में जाके उसने कुछ मिस्टेक कर दी, बट ही वाज अ गुड प्लेयर दो. नाइस 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 भाई. तो साइमल तो I think it's always fun to watch, to be honest. Seeing the stronger player run around like crazy. It's always fun. By the भाई way, H4 played by Arjun Saj हाँ. bhai. So ये H pawn clearly बनने वाला है NM. अगला IM, अगला GM, अगला सुपर GM. इसके सपने बड़े हैं. बट रोक दिया इसके सपनों को circumstances ने भाई. अब अटके गए NM पे. ये मैं ही हूँ भाई, सच में. सीरियसली भाई, लेट मी टेल यू, कार्डियो हो गया मेरा आज का.
Like it was so much walking because you had to keep like running from one. एक बार ऐसा हुआ था, एक बोर्ड पे मेरे पास 2 मिनट पड़े और दूसरे बोर्ड पे 10 मिनट पड़े, तो वो घूमना पड़ता है आपको, बट नजर आपकी वहीं पे, ये कब चलेगा, तो मेरे को फटाक से वापस जाना पड़ेगा. इट वाज क्रेजी. बट या, I लेट्स गो also बैक टू have a द question. गेम्स. So now Yeah, that go you've ahead. commentated, while staying in India, you've also commentated while staying in Budapest. Which one do you like more? Just time difference wise. I don't think time has anything to do with it. I love both because I think what I do is something that I really enjoy. So I think it hardly matters कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ. But I have to say, like, because मैं घर बहुत कम रहता हूँ, तो घर पे रहना बहुत अच्छा लग रहा है अभी. Like हाँ. right now it's so nice. Like अभी मैं घर पे हूँ, my brother just got me this cold coffee and then some snacks and it's like stuff like that. मतलब देखभाल हो रही है, so that's a pampering हो रही Hey, है. So hey! that's very You nice. know, Saj bhai, one way to get regular dekhbal is. भाई अब नाम रिवील ही कर दो तुम. अब तो रिवील ही कर दो भाई. ऐसे ऐसे करके टीज करे जा रहे हैं तब से भाई, अब तो रिवील ही कर दो भाई. By the chat, coming back to the game, S3 से रोक दिया है. Arjun Oh. still around 8 minutes ahead, but the time difference has reduced. So, what is Arjun's best plan here, Sahaj? I think he's kind of activated most of his pieces. H pawn भी फेंक दिया, but आगे क्या? Now I think the attack on the king side has more or less stopped. He goes knight d7, by the way, the best move in the position. I guess the point is to reroute the knight to f6. And there are some holes here, like f4 and g3. In the knight f6 से h5 and f4 या g3 ऐसे कुछ बैठ सकता है. Queen भी sort of g5 से थोड़ा attack कर सकती है. I like this move actually, quite creative. And Yeah. yeah, I think that's his plan. And now what does Hans do? Because Hans के पास भाई 9 मिनट कम है. He has to really pick up the pace. Yeah. And also, maybe, usually the side which has less space would love to exchange some pieces. So that's why knight c5 here, the engine's first preference, feels very logical to me. एक तो हम exchange कर रहे हैं, दूसरा now my knight on c1 has a very good square on b3. It can also come up. So maybe knight c5, Saj bhai, from white's perspective. Actually, great idea, yeah, because you're stopping me from playing knight f6 altogether. I like Hmm. this move. I mean, I don't like it for Arjun, but I think it makes a lot of sense, like strategically speaking. एक और चाल दिख रही है मुझे, which makes no sense. It's c4. भाई ये कौन चलेगा? ये क्या? मतलब d4 खेलने के बाद ऐसा लग रहा है कि white की पोजीशन बहुत खराब है, like strategically speaking. But apparently it's a Oh. good move. Okay, you play this in a classical game after a 30-minute think maybe, but it's not gonna happen here, yeah? No chance. Oh yeah, for sure. 10 Anyway, minute Hans difference is. between the two. And by the way, switching back to Sindarov versus Magnus, this is the current position. And Sindarov in some trouble and also down on time as well. So black का दिन है आज भाई. भाई सही में एंड मैग्नस कार्लसन टाइम पे पोजीशन पे आ गया आई मीन देयर इज नो सरप्राइज देयर एंड जिस तरह वो अपनी पीछे से खेल रहे हैं लग रहा है वो लूडो खेल रहे हैं और 6 आने का वेट कर रहे हैं भाई ही इज लाइक वेटिंग फॉर हिज ओपोनेंट टू प्ले राइट नाउ जस्ट चिलिंग कैजुअली सिंदारोव बाय द वे इज इन ग्रेट फॉर्म एंड साज भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग he did defeat Magnus in the rapid section of the event so उनको belief होगा कि I can knock out Magnus Carlsen. So it wasn't in the rapid. It was that 10 plus. Okay, उसको rapid ही हाँ. कहेंगे I guess 10 plus 5. It was the first round. Like day one में first round में Sindarov defeated Magnus and then I think he tweeted something like that with the picture of like Sindarov wins against Magnus and he was very happy about it. So yeah, I think he's in great shape. Sahaj bhai, let's Yeah. jump to Hans Niemann versus Arjun. Look at the move he played. Oh, Wow, that's bhai, some like 2 billion IQ. What is going on? bhai Hans मतलब ये Niemann. चाल ही मतलब बहुत ही डेंजरस है भाई. भाई क्या वो वहां पे वैसे वो उससे वो होता है ना वो वो पी रहा था उसमें से स्ट्रॉ से वो मस्त पी रहा था भाई वो मूव खेलने के बाद एंड बाय द वे d4 खेलते ही प्ले c5 ओनली मूव preventing black from playing c5 and getting that strong pawn chain in the center and now look at Arjun's best move chat any guesses what is Arjun's first preference of the engine साज भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस मूव के बारे में I can see, but I don't think it's crazy. Maybe आपका different दिखा रहा होगा. For me, it's Queen G5. I think that makes a lot of अच्छा sense. Is it something else for you? yes Oh wow, oh wow. Let me actually think.
G5 तो नहीं हो सकता, नो चांस। इज इट G5? क्या बात कर रहे हो? ओह वाओ, भाई इट्स नॉट इवन इन टॉप 5 फॉर मी, या G5, दैट इज क्रेजी। Wow. Okay, once you play it, the valuation goes down a bit for Arjun, but G5 definitely a move. He could just play and lock the structure, yeah, पूरा center king या side पे. या लाइक दोनों का किंग मोर और लेस सेफ ही है इधर, बट या G5 वेरी वेरी crazy move, I would say. But yeah, Queen G5 is what makes more sense to me. Like, just like I don't know, to get the queen in, हाँ, knight in, and thoda attack karo idhar. But yeah, what a move yeah, C5. Yeah, also restricting this knight on C8. क्योंकि नाइट D6 पे आ true. सकता था, नाइट B6 पे आ सकता था, पूरा एकदम बंद करके बैठा हुआ है। अब इस नाइट का कोई फ्यूचर ही नहीं है। बिल्कुल. And also now you can play bishop c4, exchange those bishops, remove the defender of the king, and the knight now hops into d3. Blockade of the pass pawn. So बहुत बढ़िया एक regrouping हो सकती है हैंस सीमन के लिए. एंड चैट बाय द वे वुड लव टू नो कि जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं बता दो भाई. वुड लव टू नो कि कहाँ कहाँ से आप लोग साज भाई आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं भाई. मैं चार्ट वाले आंसर्स दूंगा तो मैं बोलूंगा प्लूटो। बट भाई आई एम होम, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन माय होम टाउन, अपने तो घर साज भाई पे। जो आपके इट्स वेरी पीछे वेरी जो नाइस। ब्लरीनेस है ये आपने इफेक्ट डाला है कि ये बस दिल्ली की हवा है. Good point. I mean, मैं blur हटा सकता हूँ, but there are like some pictures in the back if you guys would like to see. These are all of my pictures. You see that picture over there? That's the हाँ. first time I met Vishy sir. Oh wow, On nice. the top. He did a simul with us like many years back, and I actually drew against him in that match. अगर आपको दिख रहा Oh, होगा तो आई एम nice. नॉट श्योर, अगर नॉट श्योर चैट को दिख रहा है वो कि नहीं, बट या लाइक मैं थोड़ा साइड होता हूँ, इसके एक्चुअली दिख नहीं रहा है, बट या दैट्स माय But फर्स्ट पिक्चर। ओह देयर इट इज। oh, now we दैट, see it. Now we see it. Now you we see, see it. that is the first time I met Vishi sir. Oh wow. So that picture is like very personal to me, I would say, in that sense. Oh, So yeah, nice, this is nice. my hometown. Yeah, I mean, it's still on your wall. Glad to see that, bhai, ki how much it means to you. It's amazing as a chess player. Vichy sir has been an inspiration for, I think, almost everyone. It's hard to find a chess player who will not agree to that. And chat, by the way, saying Layari se kai log join kar rahe hain. I'm sure everybody in the chat got that reference, bhai. Saj bhai, wo Layari is the place where the movie is shot. मतलब जो जो मूवी कौन सी बता रहा था मूवी? मैं आपको. अच्छा जो मूवी वो, बता रहा था धुरंधर. अच्छा क्या क्या वो कुछ कंट्रोवर्शियल मूवी है क्या? आई मीन वो आपको देख के पता लगेगा भाई अब. थोड़ा अच्छी मूवी, अच्छी कंट्रोवर्शियल मूवी. है भाई, हाँ या नहीं ना नहीं तो अच्छी. बोलो कंट्रो। नहीं 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 कंट्रोवर्सी अच्छी में मूवी. तो क्या है? अच्छी अच्छी मूवी मूवी, है, अच्छी इट्स मूवी. गुड। हाँ हाँ. सच में बोल रहे हो या फिर आप मजाक कर रहे हो? नहीं अच्छी मूवी है भाई. लव्ड इट. By the way, Queen G5 played Sahaj. Your move on the board and Hans Seaman instantly खेलते हैं Bishop C4 and the knight is now coming to D3. By White is slightly better. Arjun under some pressure maybe. या स्ट्रेटेजिकली फॉर श्योर इज बेटर, बिकॉज द ब्लैक के जो पॉन्स है वो डार्क स्क्वायर्स पे फिक्स्ड है, इफ यू कैन सी E5 D4 एंड H4, एंड इफ वी ट्रेड ऑफ द लाइट बिशप्स देन ही इज लेफ्ट विद द डार्क वन, and this dark bishop is going to be bad for a long time because of these fixed pawns. So strategically I think Arjun in some trouble, but मेरा बार तो भाई 0-0-0 दिखा रहा है। लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाट इज शोइंग फॉर यू। एक क्यूट सी टैक्टिक दिखाना चाहूंगा। लेट्स से ब्लैक प्लेस किंग H8, ठीक है? अब नाउ कैन व्हाइट प्ले अ मूव लाइक नाइट D3 जस्ट टू डेवलप हिज नाइट? क्वेश्चन फॉर द चैट। नाइट D3 मैं चल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, एक टैक्टिक है बड़ी क्यूट सी। आप सोचो नाइट D3 या व्हाइट खेलेगा, विजुअलाइजेशन टैक्टिक आपके लिए चैट। व्हाट शुड ब्लैक प्ले? क्या हाय खेलना अंशुल चाहिए भाई, चैट सोचो. व्हाट्सअप? सोचो सोचो सोचो, सो मेनी ऑफ यू। या देयर इज अ टैक्टिक भाई। अच्छा नो इट्स नॉट, अच्छा वो कह रहे हो जो कंट्रोवर्शियल नहीं है इसलिए। भाई हाँ. मैंने तो देखी भी नहीं है भाई तो। मतलब डिले सो व्हाट इज कितना इट है चैट? भाई. डिले थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? है ना थोड़ा ज्यादा लग रहा है डिले एक्चुअली. आई जस्ट रियलाइज्ड. बिशप बिशप कैप्चर कैप्चर बिशप। बिशप. हाँ चैट थोड़ा ज्यादा डिलेड लग रही है अभी, आई डोंट नो, हाँ. बट कुड बी अस। रुक टेक्स F3। एग्जैक्टली भाई, नाइट D3 के बाद बिशप C4, क्वीन C4 एंड रुक टेक्स F3 जस्ट विंस अ फ्री पॉन, एंड दैट्स व्हाई हियर आप बिशप C4 अभी नहीं मार सकते बिकॉज़ क्वीन C4 इज अ चेक। So king H8 could be a या cute little like prophylactic move. He goes 97 by the way, and knight D3 हुआ।
Yeah, and knights game में आ रहे हैं, and somehow Sahaj by that knight on d3 is such a beautiful piece, right? Attacks e5, defense e5, controls f4, and somehow also most importantly blockades that passed pawn on d4, which is supposed to be black's asset. So मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे टाइम डिफरेंस भी, अब ओनली 6 मिनट्स, उधर स्टार्ट हुआ, अर्जुन ड्राइवर सीट में थे, बट धीरे धीरे करके ना वो सीट उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं हैंस नीमन. Hmm. Yeah, this C4 C5 sequence was very very impressive by Hans, I have to say. But I think it came at a cost of like his time. जो बाद में जाके it might hurt him in the long run. ट्रू. Arjun goes knight g6, going for this knight f4 plans sometime in the future. Maybe this other knight on d7 can also go to f6, h5 and f4 as well. And by queen और knight का combination chat सबसे ज्यादा dangerous होता है. टिक्को भाई की शादी में भी पता लग गया था ये. But yes, अच्छा, मेरी शादी में नाइट कौन था भाई लेकिन? भाई आप थे ना. कम अच्छा, ऑन, ओ ये तो नाइट यार इन शाइनिंग भाई, आर्मर, ये ओ तो डैम. भाई इज्जत दे रहा हूँ भाई. अब साहिल मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, इज्जत दे रहा भाई मैं है. किंग हूंगा ना मैं यार, नाइट नहीं होऊंगा, नाइट तो कोई और होगा. But knight and shining armor, no, it's like a like the हाँ. knights are the protectors and stuff like that. But ट्रू yeah, ट्रू 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 ट्रू. जोक जोक बढ़िया बन रहा था तो बोल दिया तो. बाय द वे हैंस नीमन जी अभी भी, ओके ओके ओके, इतना Okay, सन्नाटा क्यों so है भाई? knight g6 ही plays and हांस भी यही सोच रहा है भाई, इतना सन्नाटा क्यों, कि मेरे 12 मिनट पड़े हैं एंड 7 मिनट कम है उसके. अभी कूदेगा ये, अभी ये जो जितना उठ उठ के जा रहा है ना, आई एम टेलिंग यू, लाइक इट्स गोइंग टू कॉस्ट हिम एट सम पॉइंट. ये 2 बार उठा है. I've seen him like get up from the board twice and रैपिड गेम में 2 बार उठना. लाइक एक तो आप पिज्जा खा लेते हो, वो तो खैर समझ में भी आता है, राइट. या ट्रू 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 ट्रू. पिज्जा खाना एंड तो समझ में भी आता है, बट दूसरी बार क्यों उठे आप. भाई मुझे पिज्जा इतना खाने का मन कर रहा है ना आपके डायलॉग के बाद, लाइक सडनली आई हैव दिस ह्यूज क्रेविंग फॉर पिज्जा. ये क्या हो गया साज भाई? खाओ भाई, खाओ, खाओ खाओ. भाई जहां आई मैं रहता मीन हूँ वहां पिज्जा इटली होगा नहीं. भाई भाई, बट शादी हुई है ना भाई, तो बोलो, बोलो उनको थोड़ा अरेंज करेंगी कुछ ना कुछ. यही तो होता है, देखभाल करो भाई, देखभाल. ओके, मैसेज हैज बीन फॉरवर्डेड. मीनवाइल नाइट जी6, ये नाइट कहाँ जा रहा है सुन रहे साज हो भाई, ना, क्या ये? हाँ. भाभी भाभी सुन रहे हो ना. आई डाउट इट. Oh, by the way, look at this move. Queen c1. I somehow feel that's like, whatever piece, if black just takes, I think black probably benefits a bit, yeah, from this, because bright को तो capture करना पड़ेगा, and you have to take with the rook now because bishop c4 is also hanging maybe, हम्म. and कहीं ना कहीं black gets a couple of moves in because rook is kind of undeveloping a little bit, right? भाई बट लेकिन अगर क्वीन से क्वीन मार दिया तो ब्लैक जीतेगा कैसे ये गेम, लाइक. क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिकली तो हमारी पोजीशन खराब ही है ना ये, क्योंकि व्हाइट का ये नाइट Hmm. बढ़िया बैठा है, बिशप घटिया है. कुछ अगर काउंटर प्ले चाहिए तो कुछ क्वीन तो रखनी पड़ेगी ना, आई थिंक, कुछ अटैक वगैरह के लिए. लाइक तो द कहाँ ओनली रखोगे? मूव हियर, भाई द ओनली मूव हियर इज क्वीन d8. कौन चलेगा ये चाल, कौन चलेगा. एंड पता है क्या है, लुक एट दिस चैट. वाइट का थ्रेट पता है क्या है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ब्लैक प्लेस, इज नाइट टू ए5, एंड गेस व्हाट, देयर इज नो वे टू डिफेंड दैट पॉन ऑन b7. दैट्स व्हाई अर्जुन जस्ट टेक्स. Oh, oh, clever, clever, clever. He takes on c1 and Arjun, I don't think he would be happy with this move because अब जीतने के chances थोड़े कम लग रहे हैं मुझे अर्जुन के. Like there is no way to break through. You cannot bring your knight to हाँ. f4. Bishop भी अच्छा वाला bishop trade हो रहा है. ये bishop गंदा, गंदी बात. And now like there is only b6. That's the only breakthrough available. But the sad thing is white can just ignore it. Like b6 खेल के भी आप क्या कर लोगे. Like if you go b takes c5, I'll just go knight takes c5. Then what? अभी white rook c1 मार के just बोलेगा मैं chill कर रहा हूँ. What do you do? हाँ. True, true. But do you take on f7? Do you just take on c1? Do you kind of give that check I first? think hardly matters. Hardly matters. Hmm. अभी ऑल्सो हांस का जो टाइम जो 11 मिनट है ना, अब उसको उतना नहीं फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि अब वो हैंड मूव चल सकता है, क्योंकि उसी को चल करना है. अभी अर्जुन के पास कोई इंप्रूवमेंट करने का तरीका नहीं, नॉट एज फार एज आई कैन सी. Hmm.
True. I think endgame में, by the way, bishop c7, nice move, stopping knight a5, वो आइडिया समझ गए. By the way, हिरान जी कह रहे हैं कि भाई पिज्जा तो भाई, पिज्जा तो मुझे भी खाना है. सही बात है. साज भाई, I was just thinking कि कहीं ना कहीं it can't be a coincidence कि इस टूर्नामेंट का टाइम कंट्रोल is 30 minutes. And guess what else comes in 30 minutes, साज भाई? आप नाम रिवील कर रहे हो टीवी का भाई 30 मिनट्स पिज्जा में? भाई. डोमिनोज. डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट में आता है भाई. सो दैट इज लाइक, ओहो, सो 30 मिनट्स और फ्री. तो इसका मतलब कि भाई आज तो पिज्जा मंगाना पड़ेगा. मंगाओ भाई मंगाओ. डू इट डू इट डू इट. By the way, still no moves from hands. Now he's again having a slight thing कि भाई queen straight हो चुकी है. अब क्या करना है मुझे? Do I kind of activate my rook on f1? Am I on a good day playing a4 b4, trying to push my queen side pawns? King side तो काफी blocked लग रही है. Doesn't feel like there's much to do. Also, pawn on h4 kind of ties down the knight on g6, so I can't really move that knight away. So that might give some white some possibilities. भाई पता है, like the sad thing is I would even give up like two moves just to get my pawn to h5. लाइक मैं बोल दूंगा आप दो चाले फ्री में ले लो, बट मुझे पॉन h5 पे दे दो, बिकॉज दिस पॉन इज सच लाइक बिग प्रॉब्लम, क्योंकि नाइट हमेशा इसको बचाता रहेगा. ये पॉन इधर होता तो मे बी यू कुड हैव गॉन फॉर सम g5 g4 आइडियाज. Yeah, true. Absolutely agree with that one. And I think it target हमेशा बना रहेगा. Knight d2, knight f6, both players playing quickly now. And guess what? Arjun की time edge has now jumped to 8.5 minutes. It was down to 6 minutes now. So suddenly, क्रेजी, momentum is shifting just a little bit again in Arjun's favor. क्रेजी भाई क्रेजी. या यू आर राइट. चैट में लिख रहे हैं हांस को हारते हुए देखना है. भाई वो तो हमें भी देखना है. आई थिंक अर्जुन को जीतते हुए देखना है. आई थिंक दैट्स द मेन थिंग. I think Anisha is a big Magnus fan, so we can relate to that. Anisha, no issues. B4 is incoming. बिल्कुल नहीं नहीं, सही बट बोला. वो That's why. हाँ. वो तो उनका लव हेट रिलेशनशिप था ना. अभी वो अभी कुछ टाइम पहले लाइक आई थिंक मैग्नस को सपोर्ट नहीं कर रही थी अनीशा जी. एम आई राइट? आई मीन आई डू That was रिमेम्बर temporary, दिस. yeah, when he got married, I think तभी इसलिए. But वो, I अच्छा. think, हाँ. By the way, pawn b4 incoming. I think that's gonna come soon. तभी उन्होंने नाइट हिलाया वहां से. क्वीन साइड पे डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. देश आगे बढ़ रहा है, हैंड्स भी आगे बढ़ रहा है. सो लेट्स सी कैसे करते हैं वो. b4 a4 b5, देश को बढ़ाओ. By the way, only Fabi having a good position so far as white. Baki Hans is more or less equal. Vincent is worse against Levon, and Sindarov is like massively worse against Magnus. भाई ये परम मकसूदलू को क्या हो गया है भाई? द ओनली गाय who's lose like worse right now, and he's potentially going to lose 10 games in a row. भाई परम भाई मकसूदलू, I mean he's such a strong player. What just happened? भाई आपको तोड़ देता है साइकोलॉजिकली. लाइक ऐसी चीजें लाइक इट जस्ट ब्रेक्स यू. यू टेक समटाइम्स इट कैन टेक्स लाइक मंथ्स टू रिकवर. समटाइम्स इट कैन टेक इवन लॉन्गर देन दैट. लाइक रिमेंबर डिंग के साथ आई थिंक हुआ था किसी फ्री स्टाइल इवेंट में. आई रिमेंबर ही लॉस्ट अ बंच ऑफ गेम्स. वाज Yeah. लास्ट ईयर. सॉरी आई थिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप से कुछ पहले की बात है. when he हाँ. was going through that phase and he couldn't make any draws, I remember. And like it took him such a long time to recover from that, and we're not even sure if he has fully recovered yet. ये बहुत Hmm. मतलब it breaks you psychologically. I hope like he can at least make a draw or get a win to feel a bit more confident and get back into the groove. True. Check Magnus accuracy. We can check that quickly just to understand कि क्या situation है. Oh 99 bhai, accuracy. Wow. Bhai, the bhai, goat is back. yeah, good things, just good things. He knows semifinals aa gaye ab. Now we have to show who's the boss. He wins today, goes into the finals, wins that. पता है आपको, by the way, chat, just to announce this, Magnus has already won the freestyle Grand Yeah. Slam because he won the last two events. Sorry, the not the last one, वो वाला अरुण ने जीता था. चार में से दो events Magnus already जीत चुका है, and because he qualified to the semi-finals, technically he has already won the Grand Slam. उसके बावजूद he is playing at a 99% accuracy. That's what makes him the GOAT. Man, it's crazy. Rohit Sharma is topping the cricket ratings and Magnus Carlsen just not stopping. Yeah, मतलब लगा हुआ है बंदा यार हर टूर्नामेंट जीतने में.
वो भी लिटरली टूर्नामेंट खत्म भी नहीं हुआ, बंदा पहले ही जीत गया। बाकी लोगों के लिए कितना डिमोरलाइजिंग है भाई, कि कुछ भी नहीं छोड़ता मैग्नस। अगर पिछले 15 साल के हम टूर्नामेंट्स देखें, साथ में आई जेन्युइनली हैव अ क्वेश्चन, ठीक है? वी लुक एट द टूर्नामेंट्स ऑफ द लास्ट 15 years, ओनली द इवेंट्स व्हेन मैग्नस इज प्लेइंग, ठीक है, एड ऑल द टूर्नामेंट विंस, एक तरफ जहां मैग्नस जीते और एक तरफ जहां बाकी सब लोग जीते, आई थिंक दैट नंबर वुड बी कंपेरेबल। मैग्नस आगे ना हो, आगे ही होगा आई Comparable थिंक or इनफैक्ट। comparable or incomparable? Because Magnus is like Magnus would have won more, yeah. एग्जैक्टली वही, Like लाइक there, इट्स इनसेन लाइक हाउ मच ही मैनेजेस टू विन, या बाकी सब लोग कंबाइन नहीं मैचअप कर पाते। yeah, that's just good things right then and there, winning everything. And also look at the time difference between Magnus and Sindarov. That's 12 minutes. Sindarov having just 5 minutes and 48 seconds on the clock, and Magnus having 17 minutes and almost a -1 advantage. Although looking at the position optically, I wouldn't guess this as a -1 advantage. I would guess like, okay, maybe slight edge hoga here and there, but apparently the position goes deeper. Like if you look at just the spin alone, like ऐसा नहीं लग रहा कि white भी ठीक है यहाँ पे. Like it feels a bit weird that black is so much Yeah. better here. And look at this move b5. Who plays b5 in this position? That's crazy, yeah. And I think one of the reasons is the knight on a3. That knight on a3 is just stupid. Yeah, I mean it has no purpose right now. The bishop on b1 also right now is tasked with defending that important a2 pawn. So though a couple of pieces kind of make white's life miserable, but I agree with you. I think white ke queen, dono rooks, bishops, knight on c5 look very active, and it's just great understanding by the goat of chess ki bhai ye position bhi black ke liye better hai. So as we look at this, Right, let's jump to the Arjun game. nicely summarized. Just want to add one more thing here. I think b5 का point ये भी है that he wants to take on c5, pawn takes and then bring the knight to c4. आप अगर एक चाल हाँ, पहले जाते, ये बिशप मारता, पॉन से बिशप मारते, तो ये पॉन b7 पे थोड़ा बैकवर्ड रहता, इसको वो मैनेज चाहता है पॉन b5 पे रहे. That's the prophylactic sort of idea behind b5. But yeah, I think a great yeah, move by Magnus. Let's switch to Arjun's board and see क्या हो रहा है वहां पे. We were in this end game, and yet again, bhai. by the way, 11-minute difference. Yeah, and look at the knights jumping in. One knight hops to f4. If you take the other one hops in, then g5 is now totally possible. Rook f6, rook g6 as well. So Arjun खेल रहे किंग साइड पे, white खेल रहे क्वीन साइड पे. कौन पहले ब्रेक करेगा is the question. I think equally लग रहा है मेरे को overall. By the way, chat bishop h4 was a blunder here. Pawn मर रहा था, but there's knight e2 check, and इससे c1 का rook मर जाएगा. So he goes rook c2, and now the h4 pawn is attacked. So आपको rook f6, rook g6 का time ही नहीं मिल रहा है. I think you हाँ, have to push g5, and then वो rook f6, rook g6 वाला idea गया कि आप अटैक ही क्या करोगे यहाँ पे. And then true. Hans has time to sort of break with b5. Um, yeah, I mean practically I think he's good, but more or less draw ही होगा मुझे लग रहा है. Yeah, true. I think time-wise, maybe Arjun is 10 minutes ahead. Hopefully that gives him some edge. कहीं ना कहीं गलती करे Hans Niemann. Look at it, Salva doesn't want to reveal. ऐसा कुछ नहीं है भाई. I think she's just not here right now अभी to reveal. But नाम reveal करना तो नाम reveal कर सकते हैं भाई. But I think अभी पर आपने कहा 200 था की ना अर्जुन जीतेगा तब. हाँ वही, आई वांट टू रिवील अर्जुन जीते भाई. दैट्स द ओनली थिंग. वो हाँ पॉजिटिव हाँ, मेमोरी रहती है ना? एग्जैक्टली, अर्जुन को जीतने दो भाई चैट. फिर उसके बाद आप बाय द वे, यू कैन g5 पुश. played, so defends the pawn on h4. And now the question is कि हैंस नीमन क्वीन साइड पे ब्रेक कैसे करेंगे? एक ट्रम्प कार्ड है अर्जुन के पास, ऑफ कोर्स नाइट ऑन f4 लुक्स ग्रेट, बट दैट्स द पॉन ऑन d4. अब नाइट एग्जिस्ट नहीं करता d3 के ऊपर, मतलब वो पॉन टेक्निकली मूव कर सकता है. सो व्हाइट हैज टू बी केयरफुल, या एनी सॉर्ट ऑफ पॉन एंड गेम कुछ भी, लाइक ब्लैक कुड बी विनिंग इन सर्टेन केसेस. आई थिंक व्हाइट कैनॉट अफोर्ड टू गिव अप द नाइट एट ऑल इन दिस पोजीशन. द आइडियल सेटअप फॉर व्हाइट इज कि बिशप से नाइट ट्रेड हो जाए, लाइक बाय बिशप e1, बिशप d2, बिशप f4, बट ऑफ कोर्स अर्जुन अलाउ नहीं करेगा ये. बट द आइडियल सिचुएशन इज बिशप से नाइट ट्रेड हो जाए, एंड ये नाइट को d3 पे रख दिया, एंड ब्लैक कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे. Like only white can play. I'm not sure if Hans can still win that, because I'm not sure how he's going to break. Maybe with b5, but I'm sure there will be a defense there. But yeah, that's the ideal scenario for him. I think draw की तरफ बढ़ना is the most likely scenario for me. True. And फिलहाल के लिए, as these guys think, just an evaluation update. Caruana still better, Sindarov still worse.
Vincent has equalized against Aronian. So ये गेम पे ही रहते हैं अभी के लिए, देखते हैं how this turns out. And साथ में 5 मिनट अब, is this that stage जहां पे you start worrying for Hans, or do you think position इतनी simple है कि Hans is not going to struggle on the clock? Good question, I think, Sahil bhai. I would say you shouldn't really worry because like you can play any move, ki catch 2, ruke 1, and Arjun really cannot improve his position. So, Hmm. but still, like when you hit that below 1 minute mark, below 30-second mark, then pressure to aata hi hai because you know, I mean, just looking at the time, it will create some pressure there. But for now, I think he's fine. Um, And but yeah, I really wish we had queens on the board. Then I think Arjun would have been quite good. भाई, आपने बोला I wish we had queens on the board, and Hans just picked up Arjun's queen. So and he's playing with Correct. it. So कहीं ना कहीं पे वो fiddle game चल रही है. Rook D1, putting the rook opposite the pass pawn, very logical. And Sahaj, maybe your plan again of bishop E1, bishop D2 at some point could be in the air. Hmm. And then you can take on f4 and go into that ideal endgame. King को भी maybe आप f1 के through. I mean, you cannot really play king e1 because g2 मर रहा है. Yeah. So yeah, I think it's hard to kind of make progress with either side. Only Hans can kind of push the game with a move like b5. But that I think it first of all it requires a lot of ambition, and secondly it requires a lot of courage because आपका टाइम 5 मिनट ही है. जब तक आप b5 Hmm. खेलोगे तब तक आपके पास 2-3 मिनट मैक्स, आपके पास 2-3 मिनट हो गए. So it will require a lot of courage from Hans, and you're not even sure if you're going to see the results, and it can backfire. True, true. I think Hans even recently did not have the best of results. World Cup he got knocked out in round two, if I'm not mistaken. And also like he must have had better dreams, yeah, of qualifying to the candidates, maybe qualifying to the EWC, but he missed out on so many events, getting knocked out in the last qualifying stage or in the early stages. So वो भी सोच रहे हैं कि यार I've made it to the top, वो एक final level मैं cross नहीं कर पा रहा हूँ. Similar to somebody like Nihal, by the way, Nihal who lost yesterday, Sahaj bhai. हम इतना खुश हो गए थे. Nihal is 2711, but he's now 2704 again. Oof, that is sad news indeed. And Nihal किससे हारा कल? Do we know? I'm not sure exactly who he lost Taking to, a but look. he, yeah. Taking a look, I can see 2704 is the rating. He lost against. Oh, he lost against Sindarov second. Madamino Mukinin. Oh, Bhai wow. Sahab. Bhai, Uzbek chess on the rise. And Madamino Mukinin, he was in Goa, I remember. He was the second of Sindarov. wow. So clearly, working with Sindarov has had a mutual benefit for his second as well, who's certainly playing stunning chess over the board. And उनसे पूछा क्या था याद है इंटरव्यू में कि वुड यू वर्क फॉर सम अदर प्लेयर, तो वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स भाई, अगर दाम अच्छा प्राइस अच्छा हो तो. So very practical, but jokes aside, I think he was a very, very strong player. And the main thing is, he was so happy for Sindarov. You could see it on his face and his body language. कितना खुश थे वो सिंदारोव की विन के साथ. I think, of course, it was fully deserved, I think, for Sindarov. The, I mean, to continue winning in an event like World Cup, जहाँ पे 26 दिन है, and so many tie breaks and one small error, and you are just eliminated. I mean, it must be so difficult for the player. It must be so difficult for the second as well. आपको एक confidence भी आता है, right? Because you think that okay, I'm doing something right, and the more time you spend kind of preparing for top players, the more you improve yourself as well. So I think it's a win-win situation. Oh, by the way, update. I think Fabiano Caruana is completely winning. Blunder by Param Maksudlu yet again. उन्होंने यहाँ पे knight h7 खेला. अगर हम पिछली चाल पे जाएं, that was a blunder. And bishop f5, best move by Fabiano Caruana. And unfortunately, there are some tactics that are not going his way because rook up जहां पे भी चलो Sahaj, I will take on h7, play knight f5 next, and you will be threatened with the mate in one as well as there will be an attack on the rook. Basically, there are three squares: e7, d6, and e3. यहाँ पर रुक जा सकता है. Like this, and like this. All the other squares are covered by our pieces, and we have to just think about it as this: कि knight जब f5 पे जाएगा, तो it controls all three of these squares. So let's say rook e7 takes, and knight f5 would just be completely winning for Fabi here. And I think big blunder by Parham.
Fabi might be the first one to finish. भाई परम को क्या हो गया भाई, नजर लग गई है मेरे भाई को किसी की यार, भाई कम ऑन यार, आई मीन आई थिंक अब परम कम से कम 70 गेम लगातार जीतना चाहिए भाई, मतलब कॉम्पनसेट फॉर दिस। आई एम जेन्युइनली शॉक्ड एंड ही इज एज वेल, यू कैन सी इट ऑन हिज फेस, ही कांट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग। ही वुड नेवर मिस सच अ इंट्रिकेट डिटेल इन दिस पोजीशन कि भाई रुक मेरा कहीं पे भी जाए, इट्स काइंड ऑफ trapped, and not that this was a blunder, yeah, he was already worse. So the game again not going Param Maksudlu's way, and as you mentioned, Fabiano Caruana about to get the first win. By sad news for Parham Maksudlu. I think we can quickly switch back as Parham thinks. Uh, let's go to Magnus's board maybe, Sahil Bhai, for Yeah, a little bit to see yeah, what's yeah. going on. Magnus, by the way, at 98.6% accuracy in Sindarov over 95. Clearly, both players having a decent day, but Magnus is having a much better one because he has 13 minutes and his opponent has just under 2 minutes, and Magnus is slightly better as well. So Magnus, I think, not even going to go into tie breaks today. Wow. And now भाई I think क्वेश्चन, हाँ, हाँ, कितने टाई ब्रेक होंगे आज? I think एक होगा is my guess. किसका? I think किसका? that's the tough one. I think Fabiano Caruana wins. I think Magnus Carlsen wins. So it's either going to be Hans versus Arjun or Vincent versus Levon. I'm going to say Vincent versus Levon. It will be the one tie break. What's your guess? आई थिंक जीरो भाई. Oh, wow. मुझे लग रहा है दो मतलब आपको सारे गेम्स आज टाई ब्रेक में खत्म. आई थिंक टाई ब्रेक में जाएंगे नहीं बिकॉज आई थिंक लेवॉन विल विन. एंड आई थिंक अर्जुन का ये वाला ड्रॉ होगा, नेक्स्ट वन ही विल विन. भाई रोहान जी कह रहे हैं प्रिडिक्शन पर ओपी भाई, मैनिफेस्ट करो भाई. रोहान कह रहा है पर हमें सेम पॉइंट एज मी इन दिस टूर्नामेंट। अरे यार भाई, Hmm. वेट करो, बढ़ाएंगे वो पॉइंट होपफुली। बट मीनवाइल जंपिंग बैक टू द अर्जुन गेम, जहां पे अर्जुन हैज बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वो किंग को उठा के अपना सेंटर में ले आए हैं। एंड व्हाट इज बेसिकली डन इज उन्होंने अपने बिशप को आजाद कर दिया, अब किंग डिफेंड कर रहा है E5 पॉन। बट द क्वेश्चन इज वेयर डज द बिशप गो सहज, आई एम नॉट श्योर इट हैज अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट टू हैंग आउट एट। भाई मतलब ये सब कुछ तो बंद है यहाँ पे. लाइक देयर इज नो वे. इफ आई कुड जस्ट पिक अप दिस बिशप एंड पुट इट समवेयर, मे बी E3 इज द ओनली स्क्वायर दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस. वहां पे भी D6 का स्क्वायर चला जाएगा भाई. तो आई एम नॉट या इवन श्योर इफ दिस बिशप हैज एनी फ्यूचर इन दिस गेम. एंड या दैट्स द प्रॉब्लम. Like if we could just magically remove this bishop and this knight, then I think black is doing fantastic. Like clearly better, and only black would be pushing there. But right now, because of this bishop, Arjun is definitely on the defense. By the way, hands ये पीछे देखते रहते हैं. I guess there's some screen, yeah, with the other games there constantly. I think freestyle में we have seen कि starting moves काफी similar रही हैं. In fact, I remember कि Magnus ने भी एक बार कहा था कि I saw somebody play something in the previous event. है उन्होंने देखा कि अरोनिया ने कोई और प्लेयर कुछ खेल रहा है, मैं भी वही खेलता हूँ. So यहाँ पे वो चीजें काफी common है. And by the way, Bishop E1 played. Saj bhai, maybe your plan, yeah, finally coming into action. Oh yes, Bishop D2 and Bishop takes F4 makes a lot of sense. And it's Arjun also has to think कि भाई allow करना है कि नहीं. But also Bishop F4 मारने के बाद मैं G pawn से मार सकता हूँ, and then maybe the G file gets opened up, which gives me some activity. ट्रू। एंड उसके बाद आई थिंक व्हाइट को एक पीस तो रखना पड़ेगा, मे बी किंग ऑन F1, रुक ऑन C2 टू डिफेंड G2, एंड दैट जस्ट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सपैंड ऑन द क्वीन साइड एज वेल। हैंड्स बाय द वे अपने बाल पकड़ के बैठे हैं वहां पे, सोच रहे हैं कि हाउ कैन आई पुट प्रेशर, इट्स नॉट दैट इजी। बट द क्वेश्चन बाय डीवी, हाउ इज द विनिंग सिनेरियो ऑफ दिस इवेंट? बेसिकली यार जो हमारे अर्जुन है वो बॉटम हाफ में है बिकॉज ही लॉस्ट टू केमर येस्टरडे, सो मैग्नस इन द टॉप हाफ। सो अर्जुन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आज जीते कल जीते ताकि वो 5th रैंक में आ सके। एंड ऑफ कोर्स अगले साल फ्रीस्टाइल अगर होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथ हो सकता है टू डू वेल इन दीज इवेंट्स। सो यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट इवेंट्स एज वेल, सो लेट्स होप सो ही विंस। Yep, let's hope so. 5th is the goal here. कल थोड़ा sad हो गया था अर्जुन का, but hopefully he can sort of make a comeback today. This match, I think, most likely gonna end in a draw, but next match, I think, is where Arjun can take over. But let's see ट्रू, क्या होता है. ट्रू। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई. कुछ और गेम में चलना है क्या? लाइक ये तो हाँ सोच रहा है बिल्कुल, सोच किसी भी रहा है गेम में चल कुछ. सकते हैं भाई, लूडो, कबड्डी, कहाँ चल, अच्छा यू मीन, ओह अदर गेम्स, ओके माय बैड। आई मीन खेल सकते हैं लूडो. आई डोंट माइंड. नहीं, कबड्डी, लूडो भाई लुक एट लूडो दिस। 24 इंडिया. let's let's go to the Magnus game.
लुक एट दिस क्वीन H4 उन्होंने खेला था. कैन वी गो बैक टू मूव नंबर 21 जहां पे या क्वीन H4 was a big mistake. Queen D2, knight C4, bishop C4, rook D1, and now Magnus has to find the only move, queen to G5. I mean, an obvious move to be honest, but suddenly the endgame is just too bad for Sindarov. Yeah, this is looking quite horrible actually after queen g5 because it's the same situation जो अर्जुन के बोर्ड पे है. This bishop is bad क्योंकि e4 की Yeah, पॉन की वजह से बंधा हुआ है. a2 के पॉन को भी बचा रहा है. आप a3 खेल सकते हो बट e4 की पॉन की वजह से ये बिशप एकदम बंधा हुआ है. ये e4 उठा के मैं साइड कर दूं then already that's a checkmate in one. knight in one. Magnus finds queen g5. Magnus is making no mistakes whatsoever by good things. Dead Right, this is winning just already. this is just over. Yeah, this is just over. At that level, at Magnus's level, this is over. The greatest endgame player of all time माने जाते हैं मैग्नस कार्लसन. by the way कह रहे हैं क्यूट स्माइल जी और टिकू भाई कैसे हो? अरे मजा मा क्यूट स्माइल जी, हमारे चेहरे पे भी आज क्यूट स्माइल है. दिव्यांश जी अपना आधा फोन नंबर डाल रहे हैं चैट में, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बंदी दूसरा गेस कर लेगी. ऐसा नहीं होगा दिव्यांश भाई, यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट राइट राइट नहीं चलता है. टिकू भाई मौज में, क्यूट स्माइल आप मुझसे बात करो. ये देखो भाई अलग ही चैट चल रही है. साज भाई चैट तो एंजॉय कर रही है, क्या हम भी एंजॉय कर सकते हैं एक बार अर्जुन की गेम पे नजर मार के? क्या चल रहा है वहां पे? अपेरेंटली वहां अर्जुन ने ब्रिलियंसी खेली है, कुछ इनसेन चेस चल रहा है भाई. बट नाउ हैंड्स इज अगेन बेटर. कैन वी गो बैक? व्हाट जस्ट हैपेंड? Ooh, he went knight takes h3. Oh, baap re. वाओ. He just like he's like screw it. Let's just go sacrifice the knight, and I'm gonna take one pawn, and at least my rooks are active. But rook f8 was a slight mistake. He had to play rook g3 check first apparently, इससे पहले कि white वो control कर ले square, and it was still only equal, but he plays rook e f8 which optically is more dangerous, right? Because now rook f2 is also a huge threat. But bishop e1 only move for Hans Niemann. क्या वो निकालेंगे सहज? I think it's an obvious one, to be honest. Obvious, you said it right because rook g3 check के साथ साथ rook f2 check भी एक threat है. So both of these squares can be guarded by this bishop, and I think you can neutralize sort of black's activity here with this move. And उसके बाद Arjun might be in some pressure, but let's not forget कि e4 का pawn भी is hanging मेरे भाई. This pawn could be loose, like rook f4, दूसरा rook f4, something like that can be dangerous. Bishop e1 played. Hans Niemann will not give an easy battle for Arjun here. And now the question is, Saj bhai, you aced the evaluation. You have to grab that e4 pawn because आपका जो g pawn है वो आगे नहीं बढ़ सकता because h4 is also hanging. Maybe you can do it, but it's not really a huge step, let's say, in creating chances. So अगर e pawn मिल जाए, suddenly my past pawns can be pushed further. ये e4, e3, d3 आगे बढ़ सकते हैं at some point. My bishop can open up. Very important. Once I play e4, my bishop on c7 becomes a beast. So maybe one of the rooks to f4 somehow. Trying to grab that e4 pawn is the move. But जो भी अर्जुन करे, he needs to do something right now. कुछ नहीं किया तो white consolidates. He's just a piece up. रुक को push करवा देंगे and then Arjun just loses. Yeah, you're absolutely right. He goes rook 8 f4. He takes your advice, and now he's putting pressure on the e4 sort of pawn. And chat might be wondering कि rook e4 का मर तो नहीं रहा ना इस पोजीशन में because king f3 है. But chat उसका threat rook e4 नहीं है यहाँ पे. Arjun wants to play. मैं थोड़ा दिखा देता हूँ. Let's say white goes a5 for example. Arjun का threat है he wants to go g4. Pawn takes pawn. h3 check ताकि ये king deflect हो जाए इस रुक से. You move the king and then I take on e4. That is what Arjun is planning in this position. That's why he has gone rook 8 f4. So आंखों से लग नहीं रहा कि rook e4 मर रहा है, but actually मर रहा है. भाई आंखों पे भरोसा ना करें, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने समझाया है भाई. चेस में कुछ भी हो सकता है कभी भी. चैट डू लाइक दिस स्ट्रीम. लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर 500 लाइक हो गए तो एक बंदे को मिलेगी डायमंड मैच. आप घर लेके जाओगे, चिल करोगे भाई, फिर इंजॉय करोगे, चेस में इंप्रूव करोगे. लेट्स गेट 200 लाइक्स. हैंड्स इवन फिर पीछे देखते हुए, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग. या ही लुक्स लाइक अ बिट एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर समथिंग. Yeah, knight h3 allow करने के बाद I think you might not be super happy because I think Hans was sort of Hans accepted the fact कि वो हार नहीं सकता इस पोजीशन में. वो जितना चाहे पुश कर दे. And let's not forget कि Hans का टाइम बहुत कम है. Like he has 1 minute and 44 seconds, and Arjun at the right moment chose to sacrifice a knight for 2 pawns and some activity, and now it's anyone's game. I think he's या just एंड not happy with the outcome.
Yeah, Rookie 2 played good move by hands, and now apparently you need to find Bishop D8, which, okay, it's very hard. Let's see Arjun plays, and a great point, Sahaj. The point is, Arjun could have just held on. He did not need to sacrifice this piece for the couple of pawns. He knew कि hands के पास 1 minute है. He knew कि hands थोड़ा pressure feel करेंगे. He felt कि भाई, maybe, I'm not lost. I have some chances. I put some pressure, and maybe hands collapses under time pressure. But so far, Hans has been holding on. Can he continue to do so? Also, एक आइडिया मुझे लग रहा है कि नाइट एक बार गेम में आ गया ना साज भाई, चाहे वो नाइट B2 नाइट D3 हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, once the black rooks are pushed back, it will be hunky dory for hands. So I think Arjun still needs to be active. I'm not sure what the clear plan is. Maybe like G4, H G4, which H3 check and rook G4, something like this. Looks kind of Hmm. interesting to me. That's what I'm thinking anyways. Like knight b2 knight d3, you're right. If this is allowed, then if the rook kind of pushes back, then आप g4 कभी नहीं खेल पाओगे. So I think do it now. Don't wait for it. Yeah. Just want to say love your duo. Thank you duo भाई. Glad to have you on the channel. And फिलहाल के लिए हैंस इवन को ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे वो सिकुड़ के बैठे हैं बिल्कुल. अर्जुन जी कॉन्फिडेंटली कैलकुलेट करते हुए दैट एक्स्ट्रा टाइम ही हैज इज रियली बेनिफिशियल. साथ में अगर अर्जुन के 30 सेकंड होते हैं ना, आई वुड से ही वुड बी लॉस्ट इन दिस पोजीशन. वेरी हार्ड टू फाइंड क्रिटिकल मूव्स. भाई अगर 30 सेकंड होते तो why would he sacrifice the knight, right? I think एग्जैक्टली it was a एग्जैक्टली. calculated decision because opponent का time कम है, उसका time ज्यादा है. He can out calculate his opponent. मैं हांस को ठंड लग रही है तो कोट पहन लो ना भाई. Like it's there, it's right there hanging. हांस थोड़ा distracted लग रहा है नहीं? Yeah, I think Hans is in general emotional. Like, I think he shows his emotions on his face. Be it बहुत boredom, distracted be लग it रहा है. Like he's also gotten हाँ. up a bunch of times. He's not even looking at the screen. Like कौन अपने बोर्ड के आपके पास 2 मिनट पड़े हैं. आप बोर्ड की बजाय आप स्क्रीन पे कौन देखता है? Like to check out other games. Like come on. I think he's Like looking. he, There's something there. There's something. Maybe it's the menu. Yeah, मतलब for the dinner. Yeah, मतलब that I would be totally distracted अगर वहाँ menu होता कि भाई आज मुझे रामा चावल खाने हैं कि बिरयानी खानी है, pizza maybe. I would understand that. I'm not sure what he's cheese looking at burst, right now. है ना? Menu हो सकता है साज भाई. cheese burst pizza भाई. That's what it is. Rookie 2 he plays. Arjun thinking just under 6 minutes. And now again the moves are G4. I think this is most logical for me. Sahil bhai also says bishop d8, but I think हमारा sort of idea same ही है because bishop d8 के बाद भी हमको g4 ही फेंकना है. तो भावनाओं दोनों में like are the same Yeah, to yeah, go for g4 as soon as possible. By the way, switching to Sindarov's board because he has 14 seconds on the clock and he is also in a dead loss position. We might have a result here very quickly. Wow, Sindarov panicking a bit, shaking a bit, attacks Magnus's rook, but rook भाई कहीं भी जाए भाई, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, आराम से घुमा फिरा के. And look at those pawns on the queen side. A3, C3, C5, ये pawn में कोई unity ही नहीं है भाई. These can't do anything in this position. And also rook F1, you can't even move the rook. You can't do absolutely anything in this position as It's white. like जितना आप एंडिंग की तरफ जाते हो उतना मैग्नस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. लाइक दिस पोजीशन शोज एवरी पीस ऑफ हिज इज जस्ट सो मच स्ट्रॉन्गर देन इट्स काउंटर पार्ट. एवरी Yeah. सिंगल वन ऑफ देम. लाइक द बिशप इज पावरफुल, द पॉन्स आर पावरफुल, द रुक इज ऑन एन ओपन फाइल. व्हाइट का रुक क्या ही कर रहा है. दो घर है इसके पास, E1 और E3, दैट्स इट. और कोई घर ही नहीं है इस रुक के पास. Like E3 अभी rook F1 check and you lose the bishop. So एक ही है हाँ technically. हाँ, एक्चुअली मूव ही नहीं कर सकते आप. लाइक Sindarov is not down in material, yet the position is -4. That just goes to show how You great know, Magnus is. I have played an over the board cheater once in my life, Sahaj bhai, and this is like, he was so strong. Like, I've equal material, mein I resigned. Like when you're playing somebody who's that strong, like that's what you feel. And Hmm. Magnus, being the greatest player of all time, has that skill sometimes. He can Hmm. suffocate you in a chess position. That's exactly what he's doing. As you mentioned, material barabar hai, and right now there's nothing Magnus, his opponent can do. King is stuck. I mean, Rook cannot move. Bishop has no good squares. H3 खेल रहे हैं. He's trying to exchange as many pawns as possible कि भाई draw की तरफ बढ़ सके. And what's the best way for Black to move forward here, Saj bhai? Because कोई decision तो लेना पड़ेगा इसके regarding. You can just chop this pawn on H3, bishop H5 आ सकता है उसके बाद, but then you can get king H6, king G5. That's Hmm. logical, I feel.
But maybe Magnus is hesitant because bishop h5 पे थोड़ा active लग रहा है, but still the bishop doesn't do much here. So gh3 Hmm. is the best move here, and Magnus is basically just winning after this. And by the way, Fabi also completely winning. I think we saw that. Wow. He goes rook d8. First, like slight inaccuracy. -4 की वजह -3 हो गई. Magnus यार, Oh no, Magnus only fell off. -3. मैग्नस का डाउनफॉल चालू हो गया भाई, -4 से -3 हो हाँ, गई वैल्यूएशन उसकी. ओह शिट. unbelievable. बाय द वे, कैन वी जंप Hg4 टू द मारा. अर्जुन? हाँ, ओके, Yeah, वंस वी डन, लेट्स गो टू द अर्जुन गेम एज वेल, क्योंकि वहां पे क्रिटिकल मोमेंट फॉर अर्जुन. ही इज बेटर. ही इज अपैरेंटली बेटर. लुक एट दिस. रुक E2, बिशप D8 एंड नाइट B2. जो हम प्लान सोच रहे थे सहज भाई कि हम खेलेंगे, दैट इज अ मिस्टेक. एंड नाउ G4 एंड अर्जुन इज समहाउ बेटर. गॉड नोज व्हाई, बट ही and प्लेज इट. played. लेट्स गो. Let's go, legendary Gaisi strikes again on the king side. If white goes pawn takes pawn, then black has this h3, a nice intermezzo, kicking the king away from this square on f3. King moves to h2, and now rook takes pawn. And now somehow this bishop, जो मतलब जिसको कोई future ही नहीं था in the past, it can jump to g5 and f4 check, and suddenly it's the strongest piece. That's chess for you. वाओ भाई, अक्षय खन्ना ऑन D8. लेट्स गो. कम बैक होगा भाई का. भाई क्या फील आ रही है भाई, Bye, अर्जुन. bye, bye, bye. No हाँ spoilers, please. No spoilies. भाई, भाई आई एम टेलिंग यू, Spoilers. आई एम टेलिंग यू. मतलब कहीं ना कहीं पे देख के इतना अच्छा लग रहा है ना. मतलब ऐसा कमबैक किया गेम में अर्जुन ने, टू सैक दैट पीस फॉर 2 पॉन्स. सच अ रिस्की डिसीजन, पेइंग ऑफ. प्रैक्टिकल चेस मैटर्स. क्लॉक पे अभी भी आगे है बहुत. हैंड्स इवन स्ट्रगलिंग. क्या करूं, पॉन मारना नेसेसरी है. यू कैन नॉट अलाउ ब्लैक टू टेक ऑन एस और इवन प्ले G3. सो हैंड्स इवन स्ट्रगलिंग टू कम विद आंसर. एंड नाइट B2, मैंने कहा था अगर नाइट गेम में आ गया देन अर्जुन स्ट्रगल्स, बट नाइट इस चाल के लिए, इस ब्रीफ मोमेंट के लिए गेम से बाहर Yeah, and he takes the pawn on g4, and I है. think we will expect h3 check from Arjun very, very soon. I think he's just rechecking the lines. If he doesn't go h3, I would be shocked. Yep, there it is. Played. h3 played. White has to move the king to h1 or h2, but of course h2 makes the most sense and played as well. And let's chop this pawn on g4. Oh, he doesn't. Oh, bishop. Wait, He what? waits. Oh, interesting. Actually, Very interesting, yeah. uh, rook G4 directly was the move we were thinking. And I think uska idea ये थे कि after white plays rook D3, you had rook F4. Simply attacking the E4 pawn. You give up H3, you win E4. And the game is roughly balanced. Maybe black is tiny bit better. But after bishop G5, rook D3 pe, you don't have rook F4. So एक rook trades a rook and played, by the way. Rook d3, knight d3, and rook f3 played by Arjun. If he moves the knight, then it is GG for And Hans look at because this. bishop f4 check आ जाएगा. Bishop D2, only move, or it's -6 for Arjun bhai. Only, I mean, obvious one, but only move. I don't know how obvious though. Played. Okay, okay. Bishop d2 he goes, bishop h4, and I think we might see a repetition here. Bishop e1, bishop g5, bishop d2, bishop h4, and that's it. Could go into a draw very, very quickly. By the way, Magnus completely winning, Fabi Wow. completely winning, and Vincent Keimer slightly better against Levon Aronian. So maybe 2 draws and 2 wins in round 1 of today. This is the semi-finals chat. Tomorrow we'll have the finals. Bishop E1 played, by the way, offering a repetition to Arjun Erigaisi, who I think should take it. After all, he's still technically a piece down. Yeah, for sure. I think this would make the most sense to me. Take the draw, play bishop g5, and khatam karo bhai. Wow, what a Still game, yeah? thinking. Yeah, very, Plays very it. crazy. And good try by, I think, Arjun as well to sack the knight on h3. But okay, he tried his best, but okay. I think Hans also played wonderfully. But just so everyone knows, Hans has an accuracy of 97.3, Arjun having an accuracy of 97.5, which is insane. And Bishop D2, Bishop H4 played again. I think they are going for the repetition indeed. And just to kind of go back for a second, so after the game maybe ends, we can look at that. What happens if white just moves the knight instead of doing this in the previous position? Not here, I think. Let's say in the bishop is on G5. Yeah, we're going to end the game Bishop soon. here, knight b2. Yeah, there's bishop f4 check. And if you move the king h1 pe आओगे तो rook f1 is just checkmate. And if you go king g1, then I have h2, which is a really nice tactic because you're forced to sort of capture
honestly. Like if you go Yeah. king g2, then I have this beautiful move rook f1, and I just Oh, queen beauty, in the next move. beauty. But yeah, I think the players are just repeating bishop d4, bishop h4, Yeah. bishop e1, bishop g5, and that there it is. Arjun Erigasi draws against Hans Niemann, going into round two with the white pieces. I think he has good chances. Yeah, and I think he put up a fighting battle there, right? Matlab, he could have taken the passive draw, but he went for activity, and it he got rewarded with a comfortable draw at the end. And I would say if anybody was pushing, it was him at the end. And time pe bhi aage the, position pe bhi aage the. So good game overall. Now the thing is, can he finish off in game number two? That's where he struggled a bit. We saw it in the World Cup. We saw it in round one yesterday. So let's hope so he can strike in game two when he will have the white pieces. So meanwhile, as Arjun takes his deserved rest, he will be back soon. Let's go to the game of Magnus Carlsen, who's about to crush the World Cup winner, Sindarov. Gives a check on c2, white goes king e1. A pawn takes pawn mara. I think bishop takes pawn basically forced hai. And white has this pawn on g3, which it's a bit passive right now. ये pawn g5 वगैरह पे होता कुछ, so maybe white could have found some activity. But there is simply not enough time. On the clock also there is not enough time. On the position also there is not enough time. Sindarov, I think it feels like Sindarov is about to have his first loss in this entire event against the goat of chess, Magnus Carlsen. Yeah, and also it's very interesting to me ki, Magnus wins with black again. So there's always this debate, right? Who's the next GOAT, right? There's so many youngsters nowadays. Gukesh Prakashun to hai hi, Turkey ke players हैं, and so on. Uzbek ke players हैं, Russia ke players and so on. But कोई भी ऐसा player नहीं है who's at that level जहाँ पे if Magnus is tuned in, he ends up beating Magnus. Magnus still the GOAT by far, yeah. I mean, of course, GOAT means that you are greatest of all time. Yeah. So, I mean, you are timeless in that sense. And I think Magnus has proven it again and again. But yeah, I think the next GOAT aega, I think, I'm not sure if it's going to be from this generation. Like, I'm looking at Faustino Oro, for example, who's looking really promising. I'm looking at Erdogmas, for example. And that, I think these two players have a really good shot. But is generation mein, do you think anyone has a chance of reaching the GOAT status, Sahil bhai? I mean, somebody has Hard to to. say, no? Hard to say. I hope somebody does because कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई हमेशा आता ही है. I mean, we saw Fischer, then we saw Karpov, Kasparov, Magnus. Maybe not. We might not even know the player yet. Maybe we might Yeah, know but the like player. Kasparov के retire होने के बाद, like there was no GOAT for a long time, हाँ, right? true. Until Magnus. So Kasparov retired in what, 2003 में था, 2005 में था, 2005 में था maybe. 3 2005 or में, 6? नहीं 6 तो नहीं था, 6 तो बहुत लेट है, Really? 3 में था शायद, 2000 या 2003 में था. आई थिंक टोपोलोव के साथ लास्ट मैच था उसका लिनारेस में कुछ Five, तो. five, five, five. March 5 2005. में था, मार्च में टोपोलोव के साथ मैच था. लाइक आई रिमेंबर वाचिंग इट. And then उसके बाद like until 2010 there was no GOAT. Yeah, I mean still Magnus was not considered to be a GOAT in 2010 until he won the world championship in 2013. He wasn't considered a GOAT in that sense. तो 5 साल का वेटिंग पीरियड था. सेम गोस फॉर फिशर एज वेल. लाइक फिशर के बाद कार्पोव था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई डोंट थिंक पीपल रियली कॉल कार्पोव अ गोट इन दैट सेंस. जब तक कस्परोव Hmm. नहीं आया था, वहां पे भी 10 साल हमको रुकना पड़ा था when Fischer sort of retired from chess. So maybe the same thing can happen with Magnus as well. Magnus ने रिटायर किया तो, well रिटायर तो नहीं किया, बट क्लासिकल चेस से थोड़ा दूर तो हो गए हैं. तो maybe it can be 5 to 10 years before we see the next sort of goat emerging. Who it True. is, that remains to be seen. ट्रू. उम्मीद तो ये है कि कोई इंडियंस में से होगा एंड वी गेट टू सी हिम इन एक्शन. मे बी वी आर सीइंग हिम इन एक्शन ऑलरेडी. That will be an interesting detail. By the way, one more game I think has finished, and that is Kamer versus Aronian has ended in a draw. So interesting. Ab- both Arjun and Aronian will be playing in a knockout game in game number two. That starts at 7:30 p.m. Sahaj bhai. So again, we'll have that long break, yeah, which is I think a bit paradoxical. 7 I would love to see action instantly. 7 p.m. I think, Sahil bhai, Ha, 7, 7 7. p.m. Sorry, yes, 7 p.m. Still 1 hour break I think will be there. डेजा vu हो रहा है भाई थोड़ा सा. Yeah. उस लास्ट टाइम भी यही हुआ था. Sorry chat, this is the format. I mean we can't really change that, and I think players also need more time to prepare in Yeah. between their matches, especially during quarterfinals, semifinals and so on. So जायज है उनके लिए. But yeah, Sindarov still thinking. Sorry, Magnus still thinking after bishop d7. His pawn on c6 is under attack.
there are many ways to win. Rook a3 is winning, for example. B4 is winning, example. And Magnus just needs to calculate really well to put the finishing touches as he goes under a minute. Actually, I would even just consider b4 directly, just to kind of play b4, move the rook out of the way, push the a pawn, because I already have the white king on the back rank. So I'm really Hmm. curious if b4 directly works. Just b4 takes rook b2, a3, a2, a1, finish. He goes rook a1 check. I think what Check. you said was accurate. I think I would have also gone for something like that. But I think Magnus is maybe trying to gain some time because he was Hmm. under a minute and it's a smarter choice. Let's think in our opponent's time. Sindarov at 20 seconds down. Hmm. King King f2. f2 Okay, now he takes. 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 Let's give a check. Oh, King f3 पे bishop d1. Look at this. What a move. And the rook is Nice. trapped. You have to go rook e2. King के पास Nice. कोई घर ही नहीं है. Nice. A little try by Magnus, knowing कि किंग को बैक रैंक पे जाना ही पड़ेगा. Or you trade rooks. That's not going to work out either. Yeah, for sure. King e1 आता है and then black plays b4, I guess. And guys, want to know both of your favorite players from India and only one because of creativity. Saj, who do you think is India's most creative player? I think question पहले भी था किसी का कि इंडिया में Yeah. रैपोर्ट जैसे players, कम है, like who are very creative. That's what they thought. How So, is this? How is this even a question? I'm sorry, but how हाँ, is so this who even do a you think is question? India's most creative player? This is like asking के who is the world champion. Like इतना simple answer है ये तो. तो क्या है But आंसर साज भाई? of course it's Arjun. Like hands down. Like you saw knight takes h3 just now, chat. I mean Yeah, yeah, that is a very creative move. I think yeah. he's called the madman for a reason because he's extremely creative. Um, so yeah, I think for me it's Arjun. And Sahil bhai, do I need to ask या फिर do you completely No, no, I agree? think I agree. Fair answer. I think Prag also has that. I mean, I've seen him play some extremely creative chess, but Arjun, I think, would take that risk, right? Constantly Yeah, playing the second best move just to kind of make the game more interesting. So definitely, I think Arjun will be my answer as well. I think Prag is sort of more complete as a player. Like Prag can be creative if he wants, but Prag is more solid in that sense. Hmm. But Arjun हमेशा कुछ ना कुछ chaotic करता है. So that's why I would give him more points for Hmm. creativity. But yeah, you're right Fair. in that sense. By the way, 18 seconds for Sindarov, who needs to come up with a brilliant move here that doesn't exist. Bishop e2, he comes up with, trying to move the king forward. I don't see why you can't just give a check. Uh, Slowly, but move the bishop somewhere and push the a pawn. I don't know. Bishop e2 he goes. Rook c1 check possible. Rook c2 possible. कोई chat में पूछ रहा है, can you guys give a reason why Indian players do not know for creativity like Rapport except Arjun? I think there are many creative players. For example, Arvind Chittambaram is a very creative player. I think very original, very unique. He was actually known for not playing proper openings. Like I remember this one game by him जहाँ पे वो शुरुआत में knight f3 खेल के rook g1 खेला था against like a 2500 player and he actually won. And so yeah, I mean players are known for their creativity in India as well. And Prag I think is a very big name there as well. Mukesh I think is right up there as well. So they are known. Sahil, by Hmm. your thoughts? Yeah, of course. I think ये भी है ना कि Rapport is not in that world top 10 right now. And sometimes what will happen is, they will take more risks. They will come up with creative ideas which sometimes don't even work. But we don't notice the times they don't work. We only notice the times when they do work. So when Rapport crushes Prague with that knight d5 idea, we think, oh Hmm. my God, creativity. And it was creativity. But maybe that idea did not work in two other games, right? Something similar. And we don't notice those crushing losses. So I think Hmm. the cost of reaching the world top five, potentially become the GOAT, is maybe a loss of bit of creativity. Maybe. Hmm. You have to be objective as well. Like for example, when Arjun became 2810 in live ratings, everyone started saying, "Oh, madman, madman for a reason" and stuff like that. But when he dropped below 2800, then people started saying, "Oh, top players के against वो ऐसे नहीं खेल सकता," because he's Hmm. not as consistent against that. So I think you're 100% right in that. And by the way, Sindarov has resigned. Magnus Carlsen defeats the World Cup winner with the black pieces.
and one step away from going into the finals. Yep, and with this, we have three results. One final game still remaining. That is Fabiano Caruana versus Param Maksudlu. Param, who's having a nightmarish event so far, losing every game he's played, still on 0 points, waiting for his first win. Unfortunately, it's unlikely to come in this game because Caruana is winning and Maksudlu has 2 seconds on his clock. Queen a6 he plays, denying the queen trade, and now queen c2 check and back rank. My bro, who is defending the back rank? Nobody, Queen c2 brother. check, Nobody. rook b8. It's gone, no? Yeah. I would, yeah, even like Queen C2 check. I mean, what do you do? Isn't this over? हाँ queen c2 check और d5 खेल दिया उसने. मतलब I think he has multiple ways to win, but I think he just believes that he can just push the pawn all the way, and Parham cannot Yeah. save this. Yeah. If Parham, bishop goes to f7, then d6 with queen f5 checking coming, d7 incoming. It is just all over, I think. Um, but I'm fighting on because it's a reflex action at this point. Yeah. He's just tired of losing. I can relate to that. But bhai, 10 losses in a row is brutal. Bhai, double. That's like 2 digits, yeah. That's insane to lose 10 games in a row. I mean, you have to feel chat, for Parham here. have you ever lost 10 games in a row? Saj bhai, have you ever lost 10 games in a row? Like online even? Like adoption ho gaya na ek tarah ka, like, I was almost adopted by someone, but I won the 10th game. ah. The Almost adopted worst हो गया था. for me was 9.5 against some GM bullet chess में. But that was I stole half a point somehow. So and that was so 10 game में हारना is, yeah, heartbreaking. Actually, 10th नहीं था, 9th game जीता. So I was losing 8-0 and then I won the 9th game, something like that. Oh, by the way, Queen A3, Hmm. 97 check is just mate. क्या हो रहा है Wow. भाई? By the way, Prakhar in the chat who recently got married as well. Do you know Saj bhai? Oh, really? Hello, Prakhar bhai. Ah. Congratulations on your wedding. And he's saying, wait, podcasting with Arjun on. Oh, he's doing a podcast with Arjun. Really? Wow. Oi. Oh, that would be an epic one to watch out for. I would love to see Arjun open up. I think he's been reserved to himself. He doesn't share his emotions quite a bit on and off the board. तो बड़ा मजा आएगा वो देखने के लिए. So we'll be looking out for that. Congrats प्रखर भाई. वापस congrats भी message कर देना भाई. Waiting for it. And there he is. साज भाई गायब हो गए भाई आई थिंक सो साज भाई पॉडकास्ट देखने चले गए हैं मीनवाइल both the players kind of discussing where they could have improved but Param Maksudlu definitely needs that first win under his belt. That's going to really give him some confidence and improve his event overall. So iska matlab chat ki Arjun has drawn his first game and the next game against Hans Niemann, who, as we know, is a very, very aggressive player, will be a knockout. He has to win this one, and then he has a chance of finishing fifth. If he somehow loses this, then he'll be fighting for the second last place, and that's where no chess player wants to be because last player to Param lag raha hai and he's not in great form at all. So yeah, very interesting. And Vidit is in South Africa for commentary, but I don't see him commentating anywhere. Even I'm not sure what's happening there. Would love to know why Vidit is there. Saj वापस आए क्या? Not yet, yeah. ठीक है. So Saj bhai will be back, and he's back, I think. Welcome, bhai. Welcome, brother. Saj bhai हमारे दिलों में है समय भाई. Even if we can't hear him, we can feel him. We can feel his presence. He's typing something right now. Maybe looking into the camera now. I don't know. Like I'm just getting this feeling he's typing. He pressed enter, even though I don't see him. But yeah, bhai. So chat, I think the next round, as far as I'm aware, starts at 7 p.m. So there's exactly an hour. So what we're going to do is we're going to take a short, not so short break, and we'll be back around 6:45, 6:50. And let's hope we can see Arjun cruise into the next round. Take care. See you in a short bit.
एंड बुडुमथिस वी आर लाइव भाई वापस एक बिल्कुल छोटी सी ब्रेक हमने ली थी भाई लिटरली इट वैनिश्ड फास्टर देन माय एक्स एंड साज वेलकम बैक टू द स्ट्रीम क्या हालचाल वी सॉ अर्जुन ड्रॉ हिज फर्स्ट गेम अभी अगला मैच नॉकआउट मैच चालू होने वाला है अगेंस्ट हैंड्स ही हैज द वाइट पीसेस क्या लग रहा है क्या होगा मुझे लग रहा है कि इवन शादी के बाद साहिल भाई के एक्स यार वाले जोक्स नहीं बंद होंगे. नहीं नहीं होंगे दैट्स होंगे आई थिंक दैट्स they'll be phased out phased out with time they'll be replaced but just like she replaced me या क्या करें यार भाई इतने इतने नेचुरली आते हैं ना वो बट एनीवेज विल रिप्लेस देम फॉर श्योर बट मीनवाइल ये पौधे के पीछे का जादू चालू है अभी भी ये नहीं गायब होता व्हाई आर वी ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम बिहाइंड द प्लांट्स साहज भाई इफ यू हैव एनी क्लू भाई नो आइडिया, नो आइडिया. आई थिंक बड़ा छुपा रुस्तम टाइप ऑफ कैम्प राइट देयर. एंड द देख प्लेयर्स आर एनालाइजिंग फोर ऑफ देम. भाई हांस भी बैठ गया अब तो. हांस तो भी बैठ गया भाई अब तो. यूजुअली ही इज डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन, बट टुडे ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अर्जुन एंड ही इज लाइक भाई लेट मी जॉइन इन. नो जस्ट इमेजिन द पीओवी ऑफ द प्लेयर्स ठीक है दे आर लुकिंग एट द बोर्ड एंड दूर से उनको दूर दृष्टि में दिख रहा है एक कैमरा पौधों के बीच में और उसमें कैमरामैन की दो आंखें ऐसे और एक हाथ I, I really don't want to be the cameraman here, unfortunately. काफी ही weird angle है. I would rather just do it from some other place, but okay, if it has to be done, has to be done. And where is Arjun, by the way? Because Arjun will have the white pieces. I wonder if he can have a glimpse of the white players. Uh, would be very. And there he is, analyzing with Levon Aronian and Magnus Carlsen himself. Yep. Only three players, which is the odd one out. Must be Parham, yeah? Parham is not seen right now. Yeah, Param ke liye, I think what he needs is actually this might be helpful even just to kind of uh like isolate himself. That's what I would do when I'm stressed. हाँ But भाई, stress 0 out of 10 is definitely not ideal for anyone. Must be like heartbreaking for him. And there he is, just sort of looking at the position, trying to analyze by himself. भाई 0 out of 11 नहीं होना चाहिए. Fabi से match है, white pieces, you and we'll know, have lift off very very soon. yeah, I imagine if he loses this one, it'll be like 3 out of 4 days of the event finished and he's not scored a single draw. And that would be like, 25% tournament pending and you've not even opened your account. And that would be really hard to handle. So hoping he at least, gets off the like off the mark. Yeah. मतलब वो पहला single तो मिले कम से कम. क्यों साज भाई? वाओ, यू सेड पहला सिंगल एंड आई मेरा दिमाग एग्जैक्टली आपके जोक्स पे गया यहाँ पे. अरे यार पहले सिंगल तो आप थे. नहीं नहीं भाई cricket reference भाई for once Oh, at least. But I love these lights. I don't know why they don't have them often. I love these blue lights. I would rather keep that. Yeah, looks very cool actually. oh yeah, very nice. I think it keeps switching, but yeah, the blue lights are very nice. And Parham, deep thoughts में. Blue lights hypnotize. Oh, sorry, I got carried away. Meanwhile, साज भाई मुझे लग रहा है कि अर्जुन के बोर्ड पे भी ब्लू लाइट्स हमें दिख रहे हैं पीसेस एडजस्ट कर रहे हैं हैंड्स इवन बोर्ड से बाल हटा रहे हैं एज वी ऑल यूजुअली डू अर्जुन लुक्स फोकस हैंड शेक्स क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है लेट्स गो एंड स्टार्टिंग पोजीशन साज भाई एनी थॉट्स अबाउट दैट I feel let's actually go to the Arjun board because so we can check it out. Wait a second. Oh, by the way, Parham has already started his match. Arjun, however, there it is. Arjun is still thinking, yeah? Arjun is still thinking. The on first thoughts, I think queen on b1 is a bit misplaced. Rooks on the same place as usual. या जो classical में होते हैं, that's a good sign because we can castle. The only odd one out piece for me is the queen on b1. By the way, the या best move for white in this position is actually h4. Okay, that's not going to happen, I feel. That's not going to happen. And also, I think the knight on f3 is also very logical. So, kafi pieces, I would say knight on f3, rook on a1, rook on h1, looking pretty normal, as compared to what we see. The only odd pieces, I would say the queen on b1, as you mentioned, maybe even the bishop on d1, but it might be Hmm. rerouted to c2 later. By the way, e4 khela hai Arjun ne. What do you make of that move, Saj? Um, Two things. First of all, I think मेरी स्क्रीन पे मुझे हांस के 9 मिनट दिख रहे हैं एंड निंजा लिंक पे मुझे हांस के 20 मिनट दिख रहे हैं. तो इज ही लेट और
व्हाट्स हैपनिंग? नहीं 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 तो नहीं, 30 मिनट ही होंगे। आई एम प्रीटी श्योर इट्स 30 मिनट्स। आई थिंक वो कुछ जैसी वो पहली चाल चलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि सब कुछ फिक्स हो जाएगा। उसके लिए द बोर्ड ओनली पे भी क्वेश्चन इज बैठना लेट्स सी हिम जरूरी दो। है भाई उनको। क्या क्या? बोर्ड पे भी बैठना जरूरी है उसके लिए हांस को। हांस इज नॉट ऑन द बोर्ड। बट वो आया, पीस हांस, एडजस्ट किया भाई, फिर चला गया उठ के। हाँ, I'm not sure what's going on because he's been doing it consistently. Even in the first round, he did this quite a few times, and now again, bit strange. Yeah, bit strange. By the way, he's there. I think कुछ कॉफी वॉफी लेने गए थे भाई. I can relate to that. Fair enough. Now he'll take a seat. E4 खेला है अर्जुन ने यहाँ पे. उन्होंने हाथ अपने चेहरे पे रखे हुए हैं. He's fully zoned in. And Hans Niemann takes a seat. क्या खेलेंगे यहाँ पे? I think even E5 looks very logical to me. But he might also play moves like, I don't know, F6, opening up the bishop, for example. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. Yeah, and there's also C6. Yeah, Khan has been in fashion, so could Yeah, be either of those moves yeah. possible. Oh, Oh, he goes E5 E for played. E5. Yeah, by the way, now the best move for white is to play H3. Now try भाई explaining that. आप कौन सा इंजन देख रहे हो भाई? मेरे को तो C3 और H4 दिखा रहा है। भाई H3 भी है, H3 रियली? भी है, दिख रहा है भाई। हाँ, H3 भी है भाई। वाओ। एंड साज भाई नंबर यूजिंग थ्री सच पे एच। नंबर थ्री पे H3 है। अच्छा, मेरे तो आपको टॉप दो 3 में लाइन नहीं दिख है। रही होंगे। टॉप थ्री में नहीं आपके H3? नहीं, मैं मैं लाइक वैसे C3। क्या 19-20 का ही फर्क होगा, बट H3 इज वन ऑफ द मूव्स हाँ। आई कैन सी इट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, बट हु इज वाओ। गोना प्ले H3 here? C3 makes sense, yeah, because you want to play या D4 and gain the center. That makes a lot of sense. also, bishop comes to b3 then. I think very, very logical as well, c3. One move here being recommended is f3, just to open that bishop, very similar to what we saw in the last game. But then f3 के बाद आपका bishop थोड़ा block हो गया, आपका knight का square चला गया, so maybe there'll be a bit more resistance to playing that pawn to f3. So फिलहाल के लिए Arjun contemplating his choices and Hans again getting up from his chair. Wow. And he sits back, probably, I'm not even sure, maybe he's a bit distracted. I'm not sure what he's doing, or he's looking at the screen or looking at other boards as well. Could be a strategy, but yeah, bit strange. आई थिंक ठंड लग रही होगी भाई. दैट्स आल्सो पॉसिबल कि ठंड लग रही है, सूट पहन लिया. एंड C3 प्लेड नाउ. वेरी लॉजिकल मूव, सेंटर लेने की फिराक में है. पॉन D4 आएगा, opens of the bishop coming to B3 or C2, and गेम में रानी भी आ सकती है on a good day. Saj bhai, how does black tackle this now? Is like the repeat philosophy gonna work like C6 and I'm gonna aim for D5? Yeah, oh, he goes F6. I think C6 would have made sense as well, like copycat system. And now D4 is, भाई ये exactly पहले वाले गेम के जैसा नहीं है? If white plays D4, black plays C6, isn't that like very similar to the previous game? Yeah, totally possible actually. Totally possible. And I think the only thing is the bishop was on, I think, B8 then, right? It was not on D8 and the queen was somewhere else. So maybe at least F6 makes sense. And also queen B8 plus C6 also not a totally bad move. But I'm not sure, like, will they repeat exact? Oh, okay, D4. Maybe they will repeat. Yeah, now C6 maybe. Okay, C6 possible. चैट बाय द वे, Yeah, आई C6. थिंक आई थिंक हम वापस आ चुके हैं. सो जल्दी से स्ट्रीम लाइक कर दो भाई. जो लोग चैट में हैं एक बार हाजिर दे दो भाई, हाय लिख के. पता चले भाई कौन से लोग हैं जो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे भाई, इतने एक्साइटेड और फ्री स्टाइल. सच में इतने तो मैं भी नहीं हूँ भाई एक्साइटेड अबाउट फ्री स्टाइल, बट चैट इज क्रेजी. जो भी 100 लोग हैं. Chat is always crazy. I think Tiku is good for popularizing. Of course, bhai. Tiku bhai is a genius. वो Newlywed. पॉन की बात कर रहे हैं, So, ओके. बाकी किंग नाइट रुक और किंग तो आप हो ना? बिशप. आई थॉट आई वाज द नाइट किंग तो साज आप, भाई. अब तो you are a वेरी king, bhai. इंटरेस्टिंग. Let's go. Knight and shining armor. By the way, दिस. exactly the same position. Like I believe the difference is that हम यहाँ पे knight b3 कुछ तो डिस्कस कर रहे थे, and हाँ white का knight a1 पे था, bishop c4 check आ रहा था. You remember? It's kind of like the हाँ. same setup, but now Hans is just playing with the black pieces. या बिशप C4 चेक इज डेडली बाय द वे. बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट. ये कब चुपके से चेक आ जाएगी पता भी नहीं लगेगा. द वाइल्ड किंग ऑन F1 राइट नाउ स्टक. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मीनवाइल लोग कह रहे हैं टिक्कू में बात है कुछ. तो सहाज भाई ये कौन सी बात है, मुझे भी समझाए मिस्टर एपिक हॉरर एरर जी. एपिक एरर जी कह रहे हैं टिक्कू में कुछ बात है.
क्या बात है, क्या वही बात है शायद एनर्जी, हमें दीदी ने बताइए, भी देखी होगी। होपफुली एरर नहीं है वो। मेरी वाइफ का ऑल्ट अकाउंट लग रहा है मुझे। चलो मेरी एटलीस्ट मेरी वाइफ, एक्स से आप मेरी वाइफ पे तो आए। डैम हेवी वर्ड्स भाई, मेरी वाइफ आर वेरी हेवी वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट, बट क्रेजी वर्ड्स। मीनवाइल, गोइंग अरे टू द गेम ऑफ, रियलाइजेशन हो रहा है टिक्कू भाई को, क्रेजी। हाँ भाई, हर हर आधे घंटे में हो रहा है भाई, कि अंगूठी पहनी हुई है भाई हाथ पे। मीनवाइल, C3 इन द मैग्नस गेम, वेरी वेरी सिमिलर, बट E5 के बदले D5 खेला याकूबी सिंदारोव ने। D4, C6, E4, trying to bring the queen to the game. जैसा आपने कहा था साथ में, the queen is misplaced, so Magnus solving that issue quickly, but black now simply plays F6 and defends the pawn on D5 with the bishop as well, and also controlling E5 from white. So फिलहाल के लिए again nobody ready to budge. White taking the center, but black just maintaining the status quo. Nicely summarized. And by the way, white should play f3 here, and black can technically play e5, and this would be a wonderful position for me. Like, come on, you साथ भाई have ये काफी न्यू पोजीशन complete लग रही है। symmetry. न्यू हाँ पोजीशन लग रही एग्जैक्टली है, कभी ऐसा, देखी नहीं। हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी आधा घंटा पहले हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था इस पोजीशन को। बट या आई फील लाइक जो जो आज सुबह की well, जो फर्स्ट राउंड की जो पोजीशन थी और सेकंड राउंड की पोजीशन, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, लाइक वेरी सिमिलर टू मी। Yeah, true, true, true. And meanwhile, chat in the Arjun game, if you hop back quickly, यहाँ पे दोनों players ने jacket नहीं पहना है। वहाँ पे I think Hans Niemann, is he the only one wearing the jacket right now? I think he's the only one, yeah. यस Oh, Arjun as well. Oh, आई वहाँ पे दोनों नहीं पहना है, यहाँ दोनों ने पहना हुआ है। बढ़िया। I like the stark colors, blue, and and I don't know if this is pink or कौन सा color है? Pink है क्या ये? सैमन पिंक। भाई मेरे को इतना फ्रेंड्स की याद डिफाइंड आ गई। कलर तो मुझे मेरे नहीं को पता, नहीं मेरे नहीं को मेरे तो। मैंने फ्रेंड्स देखा है ना भाई, चैट, एनी हाँ, फ्रेंड्स फैंस हियर who recognize that reference, come on, कौन बोलता है इट्स नॉट फिन, इट्स फेडेड सैमन कलर, किसको याद है? वाह। सहज भाई, इवन आई लव फ्रेंड्स, बट इस फेवरेट स्टार मुझे याद आ रहा है, बट ये नहीं याद रहा किसने बोला था। रॉस, रॉस यार, रॉस। सैमन यस रॉस कलर, है। अब याद आया मुझे। बाय द वे, बिशप 7 कॉपी कैट अगेन, ही प्लेज दैट मूव जो लास्ट टाइम भी खेली थी, आई थिंक अगेन प्रिपेयरिंग किंग साइड कैसलिंग। ओके नाइस, बिशप f7 आते हुए, and now maybe white should also kind of do the copycat system and play f3, bring the bishop out and try to short castle as well. I think that would be quite good. रेचल ने तो नहीं बोला था आकाश भाई। सुपर इंटरेस्टिंग। Hans मीनवाइल, kind of looking away from the screen. थोड़ा I mean I don't know, he looks a bit, थोड़ा थोड़ा गुस्से में लग रहा है मुझे हांस, like I don't know why. हैंस थोड़ा हमेशा ही गुस्से में होता है नहीं? Like he's aggressive touche. player, like in a, I mean in a positive way, like he's quite aggressive, तो वो चेहरे पे body language में, like he's ready to go, like डिशुम डिशुम। Hmm. So if you had to summarize Hans in 2 words, it would be dijum dijum. I mean डिशुम probably not, maybe like the third fourth words, but top two words maybe like uh extremely interesting or something like that. And then dijum dijum. Yeah. बढ़िया भाई। By the way, F3 हाँ played by Arjun, again the same yeah, structure, and maybe D5 now, yeah, we get the same thing. yeah, d5, but the knight is not out yet. Maybe he can castle or play d5. Both of them are looking decent. Do you think any chance that because it looks so similar to the previous position, I feel like uh, wait, okay, she goes short castle. That's a good move. Oh, I it's not a good move. Wait, It is what? It's a actually good move. It's a good. मेरा decent. इंजन बड़ा स्लो है भाई। It's fine, no? I mean, it looks Yeah, logical. it's fine. It's I fine. It's feel fine. black Yeah, yeah. d5 कभी भी फेंक सकता है. I think it's not really an issue. And now, what do you play as white? So maybe you play bishop f2 and try to castle as well, no? Like अब उसने अपना king save कर लिया, तो अब तो ego की बात आ गई ना भाई, हमारा अपना अपना king save Hmm. करेंगे। Bishop f2 looks very logical. There's also a nice prophylactic move that you can try, which is bishop c2. ताकि आप d5 खेलो तो ये queen और bishop sort of h7 के pawn को देख रहे हैं. So once I take this, like all of these possibilities of taking this open up. And Oh, Arjun plays bishop bishop e3. b3. भाई, that's a slight error. Apparently black
can play d5 now, and that's a like a not a brilliant move, a very nice move, simply avoiding Mhm. that trade. I think 100% right. And if you don't play d5, then Arjun has the edge as well. So tough, sort of very critical moment for Hans early on in this game. Yeah, And एक by the way, Parham हाँ, already worse हो गया है. भाई क्या बात कर रहे हो भाई, अब तो देखा नहीं जा रहा है यार, परम भाई को देखो जीतना पोजीशन. पड़ेगा यार, आई कांट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग, ही इज वर्स with white now. And to be honest, like if a top player collapses, sometimes it's relatable, it makes us enjoy chess even more, because you feel okay, अगर ये बंदा 10 गेम हार सकता है तो मैं, like, it's okay for me to sometimes lose a chess game, but to watch him suffer like this is not fun. Yeah, I mean, 11 games in a row would be unreal, so I'm really hoping he can at least hold this to a draw. I think this is, I think, one of the only sort of drawbacks of freestyle, that there is no room to make a draw, like, Hmm. and to stop the bleeding. Because if you lose, if you go on this roll, you just continue, because आप वो Berlin draw नहीं कर सकते, कुछ prepare नहीं कर सकते, and you just have to keep going. And I think that's the only drawback in in this sense for any player. किसी के Great साथ भी हो point, सकता है, actually. right? या ग्रेट पॉइंट, बिकॉज मान लो कि अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप 3 4 गेम हार चुके हो, यू कैन फॉल बैक टू योर डिफॉल्ट ओपनिंग्स, या मैं लंदन खेलना चालू कर दूंगा, साज भाई Hmm. बॉन्कड़ खेलना चालू कर देंगे, या whatever it is, like you can go back to your default openings, and that gives you more confidence and a higher chance of holding the game and getting some confidence back. यहाँ पे क्या है, ओपनिंग्स ही नहीं है भाई, यू हैव नो Hmm. आइडिया व्हाट टू डू, एंड इसका मतलब कि यू आर बेसिकली ऑन योर ओन विदाउट एनी ओपनिंग हेल्प, and you have to fight it out over the board when your opponent is more confident. He's like, okay, ये बंदा struggle कर रहा है, इस बंदे से पॉइंट चाहिए ही चाहिए. Yeah, for sure. And I think everybody is out here to win today. I mean, Fabi को सिर्फ draw ही करना है. But I think still, if he sees a chance, he is going to take it. I mean, why not? So By the way, I have a question. Hans, yes. Before you switch, if Fabi were to offer a draw to Param, does he take it? I mean, I Why? mean, he probably would not, but I हाँ, think every fiber of his body would say yes. Like to हाँ, just stop, like कहीं ना कहीं से बंद करो इसको, मतलब ताकि maybe next day हाँ. he can perform a bit better. True, Like I've been true, in this true. situation before, and one draw really helps like that. By the way, switching to Arjun's board, and Arjun also in a slightly worse position now. Let's do a quick action replay. Short castle हुआ था. We saw bishop b3, which was an error. d5 played. He makes another slight inaccuracy with pawn takes pawn. Pawn takes pawn आता है. Knight e2, and now black is thinking. Some logical moves like knight b6 are quite good for black. Black has the center and more space, but yeah, a slightly more comfortable position. Very interesting. And what d5 move, जो crucial move थी, Hans did find. And after takes knight e2, developing another piece. The only question is कि black के पास space है, black has castled, black has free development, knight b6 maybe आएगा next, queen c7, bishop, I don't know where the d8 bishop goes, but maybe e7 is not a bad square either. What does white have then, Sahaj, in contrast? I think maybe the d5 pawn could be a weakness for black. I think yes, but the knight, if the knight sits on b6, it will defend d5 for sure. And I mean, white's plan is simple. First, I think you can try to maybe castle or maybe try to activate your queen somehow. पर अभी ऐसा लग रहा है कि Hans is way more comfortable to me. Like white का कोई clear plan नहीं समझ आ रहा. Maybe there is something. You can always take on e5 and play bishop c5. What are your thoughts on that? Like Ooh, ये bishop that's पे very रुक पे interesting. attack. कुछ है इसमें maybe. But साज भाई, आप F5 ओपन कर रहे हो, किंग F1 पे है. You know, that's while that's very tempting. First of all, what does black play first? Does he play knight b6, for example? Knight b6 खेलोगे तो this is what I was saying. Takes and Ha, bishop c5. takes bishop c5, right? And now the rook is basically trapped unless you play knight d6, which I mean has his, then Knight e5 d6 falls, is right? e5 falls, yeah. तो आपको knight c4 only move है इधर. Like not easy Oh for wow. Hans. And knight I c4 के mean, बाद अगर you're रुक not मारा really तो knight चैट को d2 अगर check पूछे, है आपके अरे पास. चैट, Oh, sorry रुको यार. ना, हाँ हाँ, तो bishop f, there is knight d2 for king, king and queen.
So you can't do it instantly. But let's say I play queen c1, controlling this diagonal. Then what does black do? Because now the rook is still trapped. I'm guessing some knight d6, bacha lo rook ko, and then hope for some e4 break. This looks promising for Hans, no? Why, this looks deadly. In fact, the best move is actually e4. Just sacking. Wow. Because if you take on f8, I can now take on d3. And it's just Ooh, basically over. Meanwhile, in the intermezzo. actual game, yeah, he played 97. ये क्या, अच्छा उसको नाइट c6 पे रखना है. वही क्लासिकल Hmm. पोजीशंस पे आई थिंक ही इज ट्राइंग टू ट्रांसपोज, Hmm. बिकॉज उसी में ही हम यूज टू रहते हैं. नाइट c6 पे आएगा देन इट फील्स लाइक नाइट b8 से c6 पे आया तो इट फील्स मोर नेचुरल. और मे बी ही वांट्स नाइट f5 एंड कुछ नाइट e3 के कुछ आइडियाज, बट लुक्स अनलाइकली. Hmm. Wow, I think Hans Riemann is the one in the driver's seat right now. He is putting the pressure. White is still not castled. I think castle jaldi karna chahiye because kabhi na kabhi ye e4 move ya kuch breakthrough hoga. The king is misplaced. We also saw knight c4 92 folks, right? So in multiple variations, a king is misplaced on f1, queen is misplaced on b1. We need to castle as quickly as possible. Let's the bishop f2. King को कैसे करते हैं? रुक भी गेम में आएगा. हाँ, आई थिंक दैट आई फुल्ली एग्री, बट आई थिंक अर्जुन थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि इफ यू प्ले बिशप f2 ना साहिल भाई, देन ब्लैक हैज दिस बिशप c7, एंड आप कभी भी कासल करते हो तो मे बी आई कैन टारगेट योर h2 का पॉन. सो मे बी Ooh. like the road to castle is not so easy. Like let's say bishop f2, let's show this to chat, bishop c7. अभी अगर आप शॉर्ट कासल करते हो तो e4 and you're just losing this pawn over here. भाई तो So रिजाइन maybe ही it's कर not दूं so क्या फिर? simple. कैंसिल भी नहीं कर सकते यार. यू नो कैसलिंग फील्स लाइक द राइट टू स्पीच. या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अ किंग दाल शाल कैसल व्हेनेवर ही विशेस टू, समथिंग लाइक दैट. सो इफ ही कांट इवन कैसल, then practically this position is not easy for Arjun. You really don't want to castle queenside. Okay, maybe he is considering queenside castles. Who knows? He goes queen c2. That makes sense because I think he does not like this h2 pawn being loose. And long castle is just one move away for him. But the problem is कि अब c file पूरा open हो गया. ये b5 a5 करके अगर अटैक करूंगा तो ये क्वीन मिसप्लेस नहीं है अब. ये क्वीन अब अटैक कर रही है. Like it actually found its purpose without even having to move. Bhai, black's best move is already a5, and if you castle, then b5. Exactly what you mentioned, and suddenly it's bottom line lost for Arjun already because he doesn't have a counter attack on the king side. King side पे कुछ है ही नहीं play. All you're doing is a sitting duck and defending. So queen side castles बल्कि पॉसिबल है बट बहुत बहुत रिस्की है. एंड वन साइड प्ले मिलेगा हैंस रीमन को. सो हैंस रीमन 97.3 एक्यूरेसी से खेल रहे हैं. 96.6 फॉर अर्जुन सो फार, बट ही नीड्स टू कम सम गुड मूव्स. बाय द वे, लास्ट गेम में याद है ऑलमोस्ट 14-13 मिनट की लीड थी अर्जुन के पास क्लॉक पे. इस बार आई थिंक इट्स ओनली 2 मिनट्स. या Yeah, I think Hans is taking more time. I think coming up with a different strategy. और वो बोर्ड पे बैठा भी हुआ है. So that's another kind of bonus. Last time he was just walking around a lot. He goes knight c6. Wait, I think same idea. Knight b8 से ऐसा लग रहा है, तो it looks more like a freestyle position. Oh, sorry, a classical position. आप लॉन्ग कासल तो नहीं करोगे भाई, तो रिस्की लग रहा है. Zero chance, bhai. You couldn't convince me to long castle, even if you like, whatever you said, you couldn't convince me to long castle here. I think bishop f2, king side castle is still my cup of tea. आराम से करो. ओके, कुछ बाल हटाए हैंस ने फिर से. भाई कितनी बार होता है ना हम चेस खेलते हैं बोर्ड पे कुछ ना कुछ तो गंद पड़ी होती है भाई. इतना इरिटेशन होती है ना होता है उससे. भाई. एंड इफ इट्स ऑन योर ओपोनेंट साइड ऑफ द बोर्ड, देन वो बंदा कहता है कि ओके डोंट डिस्ट्रैक्ट मी. ओके. You should always do it on your move. Then it's fine. Opponent की चालों हाँ. पे नहीं करना चाहिए सब. हाँ. It's always frustrating, but okay. Arjun still focused, calculating. He did miss Looking out. at Huh. some other games as well. By the way, Parham, I think, is now much worse. अरे बाप रे. Levon is slightly better against Vincent Keimer. Magnus, more or less equal, but maybe a slight edge to Magnus, like very, very minute edge. So, yeah, I think this is the only game that looks like जहाँ पे white का थोड़ा अच्छा
पोजीशन बन सकता है आफ्टर बिशप F2. Hmm. Poof. And Saj bhai, I think, ये तो है ही freestyle chess. I think it is gonna end tomorrow. If we talk about the World Rapid Blitz for a second, I think it's gonna be very exciting because last time Gukesh did not play, and there were no Indians who actually finished in the top five, for example. I think Nihal was the best contender India had, and with it played very well as well. Um, do you expect an Indian to finish on the podium in the World Rapid and in the World Blitz? And if yes, who's that player? ओपन सेक्शन में पूछ रहे हो, वुमेन सेक्शन में पूछ रहे हो? दोनों में भी. Let's start with the open for now. Open में I think it's unlikely, because I don't think we are there yet, like at least at faster formats, but it would be amazing if it happens. But for me, it's like the stats are not as high. Let's just put it like that. आपको क्या लगता है? या मैं आई एम रियली होपिंग कि एक प्लेयर तो करे. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वर्ल्ड रैपिड है, वर्ल्ड ब्लिट्स है, सारे इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, राइट? वील हैव गुकेश, प्रग, अर्जुन, विदित, निहाल, हरे कृष्णा. आई एम गेसिंग वुड आल्सो बी प्लेइंग. लाइक आई रियली रियली वांट समबडी टू डू वेल बिकॉज इस साल क्लासिकल ने बढ़िया नहीं किया, तो मे बी रैपिड ब्लिट्स कुड बी द वे फॉर एग्जांपल समबडी लाइक अर्जुन to win, right? So, for example, if he wins World Rapid champion, he's technically a world champion, right? In at least in some format. So, I'm really hoping that Arjun maybe can pull off a win there, and World Blitz Saj by any chance there. Um, Rook D1 he plays. I don't know if there is a chance why, but I don't know. I really hope so. I think I hope so, but I don't know. It's a really long event and it's hard to kind of. I think there are. I mean, there is Magnus playing, for example. जब Magnus खेलता है तो like you have to kind of agree that Magnus is going to be the favorite, By the going way, into it. Plus there is Chad Nepo as informing well. us. Like Maybe I remember the standings from the Blitz, but I was completely wrong. I think Nihal Blitz में अच्छा खेला था शायद. In the rapid section, it was Arjun who was on top, and he was in fifth place. मुझे अब याद आ रहा है. yeah 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 yeah. Yeah. We kind of betting on him and hoping he wins. He finished in fifth place with 9 points out of 13. And second best Indian was Prague in 17th place with 8.5. And on his run, Arjun defeated some David Brodsky, Victor Bologan, lost to Samuel Sevian, another 2500, Iltaz Safarli, Ray Robson ko haraya, Shan Sargisian, Nodirbek ko haraya, and he drew against Dominguez and Firuzja. So, yeah, I mean, he was very close, yeah, to actually being on the podium last time. So maybe this time is the time. I really hope so. I really hope so. But do you? But I mean, if I had to predict like podium finish होगा, I really hope so. But like I don't know. Like it's like blitz में कुछ भी हो सकता है, rapid में कुछ भी हो सकता है. I mean, we're just here for the chess. I would love to see an Indian finishing at the podium, but I think women's में maybe we have a better chance. That's Hmm. just my feeling because I feel like we have Humpy G, we have Vaishali, we have Yeah. Divya. I think those players I think have like in contrast I think they have a much higher chance for me at least. Yeah. I think for sure. I think Hampi man, of course, did very well I last think time as well. Divya So as I think, well. yeah, for sure. Divya And का बाद भी में है chance I think. हैंजी बीच में कैमरा की तरफ ही पलट गया था भाई. लाइक ही नोज हाउ टू गेट द मनी शॉट, या कैमरा की तरफ बैठा हुआ था. But yeah, it's going to be exciting. I hope an Indian wins. By the way, knight c6 ke baad rook d1, bishop b6 happened on the board. So activating that bishop on d8. And now Arjun just takes on e5. So he's offering that trade of the bishops. And apparently, if you do take on g1 here, Sahaj, there's a very, very nice move for white. Although, okay, he took back with the pawn. Or But the E6 yeah maybe. e6, exactly. So you don't allow black to take with the pawn on e5, and after bishop e6, now not taking on g1, even knight d f4, again a free tempo. Wow. Wow, that's crazy. Attacking this and then you just capture with the king or with the rook, and okay, you have the Yeah. weak pawn on d5. But he doesn't fall for it. He goes f takes e5, blue arrow, played by Arjun, a takes b6, and now is Arjun to move. More or less equal. Black has hanging pawns on d5 and e5, double pawns here as well. Uh, but looking kind of balanced. Yeah, Doesn't look like कि यहाँ castles. पे कोई player कोई immediately कुछ better है. Yeah. And now knight f6. And basically, black के पास एक center है यार. होता है ना कि if you can maintain this center, then it's amazing.
I think you will have more opportunities of playing e4, for example, at the right moment. But white can attack this now. For example, bishop b3 already putting pressure. Knight can come in at some point to some good square. So it's a battle of, can you maintain this center? Can you push this center? Meanwhile, I have knight g3, knight f5 maybe. Rook ko activate kar sakte hain. And yeah, it's going to be a battle again. 19 versus 20 minutes. Time bilkul barabar. You are right. Next few moves quite crucial, but I think let's start off with short castle. I mean, definitely we're not castling on the long side. Looks a bit risky. तो castle पहले करते हैं, फिर सोचते हैं मतलब कहाँ पे knight को रखना है and all of that. Knight g3 maybe straight में कुछ e4 का मेरे को danger लग रहा है somehow. I don't know, this bishop and the rook, any discovered check by the bishop can be a bit dangerous here. Like I think knight g3 might, is there not e4 here? Apparently no, you have knight e1. Why? But that's not an easy move to play. Oh, that's very tough. But okay, you can find it, yeah, maybe by elimination, because you don't want to play f takes e4, that's for sure. And knight f2 allows e takes f3. So it's also maybe something he can find, I think. Could be. By the way, धनुष लेके कौन खड़ा है पीछे भाई? ऐसा लग रहा है बो एंड एरो निकलेंगे. वो पीछे क्या है? कैमरा है क्या? हैंड्स के. Must be, bhai. Must be. अच्छा अच्छा. मुझे लगा अर्जुन को कोई तीर. Anyways. Okay, still no moves from Hans Niemann. Apparently, the best move is King h8, which I mean is very hard. I think Queen c7 I like, just kind of connecting the rooks. You know, I just checked the list for World Rapid and World Blitz. I think I kind of confused it. Yeah, World Rapid mein Arjun performed really well with fifth, but like World Blitz mein, like I think we were like not even a single Indian performed in top 20 even. Like how shocking is that? Yeah, I mean, it is for sure. It is for sure. Wait, So did you play shocking, I Queen think. Prague was 23rd. Like that was the highest performance like in the blitz that we had. I mean, I'm talking about the open section here. Yeah. Yeah, I think 93 we also 27. had like slightly less participation. I think like Gukesh wasn't playing, for example. And also Rapid Blitz has traditionally not been the place where we shine, yeah? Like it has been classical, for example. So So there was Arjun, Arvind, Prague, Ronak. Was Nihal there? Nihal was there, I think. Nihal was not there actually. Really? I don't see his name. I don't मुझे think कौन सा Nihal याद was आ रहा there. है वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज जहाँ पे निहाल played very well. Maybe it's 2024 में निहाल नहीं था भाई. maybe At it's least from 2023. what I can see, Got it. Nihal was not there. Yeah, got it. Then okay, I think maybe Vidit was there. Vidit भी नहीं होगा फिर, I think ये Vidit था. Vidit was not there. Yeah. Yeah, Vidit was not there. But yeah, black plays knight f6, knight g3, queen c7, rook f1, and rook f8. Thanks for reminding me, bhai. I've just reloaded the board. I think it should be up now. And now it's Arjun to play. Hanging pawns, हमारे rooks एकदम perfectly placed है looking at this e5 and the d5 square. Let's see what happens now. Meanwhile, chat पूछ रही है performance of Anish and candidates. Brother, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो. Performance of Prague and candidates. At the end 8 player होंगे. We know the name of the players. एक ही इंडियन है एंड वो जीतना है भाई. आई रियली वांट अ सिचुएशन जहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड इट इज गुकेश वर्सेस प्रग. भाई दैट जस्ट सेट्स अप अ प्रेसिडेंट कि भाई इंडियंस आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड टाइटल हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी जेब में रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. एंड बिकॉज इफ गुकेश इज नॉट अ वर्ल्ड चैंपियन एंड समबडी एल्स इज एंड सडनली फिर से वही कैंडिडेट्स खेलो, क्वालिफाई करो. Yeah, but, आई मीन इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. सो आई एम but जस्ट don't you थिंकिंग भाई think कि हाँ. just like raw thoughts here. Like Gukesh ने Ding को हराया, right? Then सब बोलने लग गए, okay, Ding form में नहीं था, उसको psychological issues है, which is true of course. But don't you think कि अगर Gukesh, for example, Fabi को हराता है, like world championship पे, like doesn't that cement his legacy even more? फॉर श्योर आई थिंक उसमें कोई डाउट ही नहीं है. अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज कि इफ यू कैन बीट समबडी लाइक फैबी और इवन अ हिकारू,
for that matter, in a world championship match, that will really cement his legacy. But also Mm. having consistent results throughout the entire year is very important. I think what Magnus does very well is कि भाई कोई भी event हो, you ask anyone कि कौन favorite है, Magnus. अब for example गुकेश for example खेल रहा है event, um very rarely like he would be the favorite, I would say, like clear favorite कि भाई यही जीतेगा. Like it's in fact I would say not Gukesh, anybody else in the world, yeah, like nobody is the clear favorite for example to win. So Mm. I would say कि Gukesh, I think part of it is of course defeating something like Fabi or Hikaru, but also पूरे साल में results चाहिए. He needs a few tournament victories. अभी टाटा स्टील जीत गए या नॉर्वे चेस जीत गए, maybe ग्रैंड स्विच जीत गए, whatever it is. Like he did not have a good 2025. I think he had a Mm. horrible grand Swiss, right? I think he lost 2 or 3 games in a row. I think was worse against Divya as well. Then he also got knocked out of the World Cup. So maybe 2025 was not the ideal year for Gukesh. Yeah, I think that's fair to say. That's fair to say. चैट में लोग लिख रहे हैं अर्जुन was fifth in rapid and sixth in blitz in 2023. Yes, bhai. I mean, I get the point. Of course, he has a chance, but हम podium finish की बात कर रहे हैं, and we're talking about who has the highest chance. I think Arjun does have a chance, but okay, like it depends on many factors, yeah. But like it's very hard to make a prediction like this, I think, for any player. I mean, and I know, for example, Harshit is playing this year as well. Do you know this, Sahil bhai? Yeah, yeah, yeah. Harshit is playing, and like from what I could understand from covering, like yes, last year's event and the year before that, like it's a brutal event. It's long, it's tiring. You remember that video of, for example, Ivanchuk and Danya, जहाँ Yeah. पर they're in the time scramble. I mean, it is so stressful. Such an event. So it's very hard to make a prediction by कौन जीतेगा. But जब तक Magnus है, I think that's the favorite, and I think that's the truth for me. Yeah. R.I.P. Dane. Yeah. I think whenever somebody mentions him, to it's a bit Of sad. But course, yeah, I mean, I would agree. I think Magnus always the favorite. Um, although I think maybe Magnus is not at his peak right now. He's not been for a while. So what ideally should happen is a couple of players rise up to the occasion, start winning a few events, maybe even ahead of Magnus. Hopefully, one of them is at least Indian. Otherwise, I think it's just gonna end with a Magnus retirement at some point, and there's nobody even close to him. Yeah. So let's hope so. mm, The 2025 was like a blip. It was not the ideal year. Prague had a good year, but maybe not for the other Indian players. Did any other Indian player have a good year? I think Divya had a good one, but we didn't Divya have won the cameras World for the Cup. World Cup, for example. So nobody else, right? I think Divya had. Um, yeah, I think that's pretty much it. I mean, Gukesh did win the European teams, like his team won, and he defeated Arjun as well in that event. So I could technically say that he has that one title. But apart from that, I mean, yeah, not really the best year Yeah. in So comparison to 2024. I mean, actually हाँ, year तो साल अच्छा गया, but हमारी expectations इस 2024 के बाद बहुत high हो गई. true, true. I think 2026 hopefully will be our year again. भाई even सालों में खेलते हैं ना हम, और में हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर इवन में हम फिर से खेलते हैं भाई. सो होपफुली इवन में हम Hmm. सब कुछ जीतेंगे, ओलंपियाड जीतेंगे, वर्ल्ड चैंप जीतेंगे, कैंडिडेट जीतेंगे, नॉर्वे चेस, टाटा स्टील, टोटल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भी है वो पता लगेगा अभी कैसा है. सो विल बी इंटरेस्टिंग. Completely. And King H8 was the last move by Hans. I think a nice prophylactic move, kind of getting away बाय द from वे, this सॉरी टू इंटरप्ट यू bishop. साज भाई, बट ओनली वन गेम एग्जिस्ट जहाँ पे कोई बेटर है, एंड दैट इज लेवॉन अगेंस्ट स्काइमर, बिकॉज अपेरेंटली विंसेंट काइमर is better. In fact, he was almost winning, missed a move, but he's still better because rook on a1 is now trapped. Apparently, he had to go bishop e3 check, जहाँ पे golden pawn ही नहीं है हमारे पास. But bishop c3 is what he goes. He goes for the rook on a1. Exchange up है तो, but black का king थोड़ा exposed है. Hmm. So maybe if I go knight d3 and I just take this, is that not good? Okay, queen Do I a1 के have to बाद take equal है it? भाई. I mean, instantly मानना जरूरी है क्या? Because I don't see Not white playing really. knight b2 here. So might as well just do something else, right? Like I'm just thinking, what can I do? Um,
Because once I Bishop take, h7. आपकी queen a1 पे आएगी and it's opposite my king. I don't like that. Like knight e5 sacrifice. Okay, maybe not right now, but I have to be a bit more careful. Maybe knight f4, maybe some tactics. Knight f4 थोड़ा annoying लग रहा है देख के, you're right. Huh. So I would rather not take on a1. After knight d3, I'm just thinking, how do I get the queen and the rook into the game? I think probably like queen c7 or bishop h7 look quite kind of logical. आप wait कर सकते हो, queen को move करो, then I'll take on a1. As Hmm. you rightly pointed out, knight b2 मतलब कोई खेलेगा ही नहीं, I think, because it just Oh, looks by the ugly. way, look at this. He didn't even play knight d3. He played e3, preventing bishop d4 check. And suddenly, like it's gone from bad to worse. And Vincent Keimer about to go to the finals. He's already won an event in Feb. He's going to end it in style as well. Wow, insane. And by the way, look at this. If you go bishop takes a1, you don't capture back. You just go knight e2. मैं c3 का square मैंने रोक लिया. And my plan is knight g3, knight h5. And that's literally checkmate. So Bhai, maybe the game is not over, bhai. there's no way though he plays knight e2. Yeah, you would take on a1, I think. Really? Knight e2 Yeah, looks logical. Queen a1 तो बाद में भी मार सकते हो ना? no, I think he just takes. Yeah, that's my guess. Chat, do you think he can play भाई knight एक e2? एक 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 मैगी बेट. Done. I आफ्टर think बिशप पे हो. I think 24 पे थे. I had recovered those two because you lost that bet. So I'm ready to put one more Maggie in. Let's go. चलो ठीक है. Chalo. 25 is a Let's good see. number actually anyways. Okay, first black has to take on a1. That's an if. But I think he will take that. And once he takes, I think queen a1, Sahaj thinks 92. Hmm. By the way, message by Cute Smile 100. I feel Arjun has potential, but not able to cross the line sometimes. Luck also needed, or things work in his favor. You know, I'm going to say something. So, मेरा बुलेट 2600 ना पिछले 10 साल से नहीं जा रहा था on Chesscom, ठीक है? Not 10 साल, जितने साल से I've been playing. I couldn't cross it. Like, I reached 2599, 2598, 2597, इतनी बार, but never crossed 2600. But once I crossed it, अब मैं at ease cross कर पाता हूँ. I even reached like 2660 or something, 2650 cross कर दिया peak. Like अरे वाह. once you unlock it ना, then it happens easily. So वही चीज है, एक बार वो लक साथ देनी चाहिए भाई, एक बार, then it becomes easy. Congratulations by the way. 2650 is very respectable, I think. अरे थैंक यू भाई. It's a वो really nice होता है ना, rating. वो फ्लैग करने में हम लोग भी थोड़े पीरो हैं. हम्म. उसमें से तो 10 पॉइंट तो मैंने ही दिए होंगे आपको. वो ब्लिट्स था आपको भाई, याद है? जो डिस्कनेक्ट हुआ था, वो ब्लिट्स था ब्लिट्स वो. था. अच्छा अच्छा. By the way, Blitz अब also I एक्चुअली. reached 2600. So अरे भाई, नाइस भाई नाइस ये तो, नाइस. भाई मेरे मैं को लिटरली, फ्लैग करके. आई मेरा एम फोन नॉट डिस्कनेक्ट किडिंग. करके टिक्कू भाई इज जस्ट लाइक एट हिज पीक. नहीं, आई एम नॉट किडिंग. मैं लिटरली जब वो वर्ल्ड कप के टाइम पे हमने खेला तब भी आई वन, एंड आई आल्सो वाज प्लेइंग ड्यूरिंग माय वेडिंग. यू नो, ओह. आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप. लाइक लिटरली मैग्नस थिंग्स. जब शादी थी, एंड आई हैड गॉटन रेडी एंड एवरीबॉडी वाज नॉट रेडी फॉर द बारात, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग ब्लिट्ज. अरे वाह. अरे तो वाह. भाई, फॉलोइंग द जस्ट, फुटस्टेप्स ऑफ द गोट. हाँ, चेस प्लेयर थिंग्स भाई. मीनवाइल अरोनियन जी अभी भी सोच रहे हैं, सॉरी, केमर जी अभी भी सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, क्या मैं वो रुक मार सकता हूं, और डू आई हैव समथिंग बेटर. I just want to stay here to see if he goes bishop a1 and knight e2. फिर उसके बाद हम switch कर सकते हैं. Just want to look at Yeah, this one moment for of the sure, game. for sure. And meanwhile, just a minor update, not to switch, but Magnus is slightly worse. So actually more than slightly worse. So you never know. Maybe Sindarov has a trick up his sleeve. भाई, Ooh, वो अरुण की interesante. शर्ट पे पानी है भाई, वो डिजाइन नहीं है, बता रहा हूं मैं. भाई. भाई. वो छींटे बहुत पड़ गए हैं, गंदा कोई कोई पानी है. कोई छींटे पड़ गए हैं, कोई गाड़ी चल रही थी साइड से, वो बोलते ना, दिल्ली हाँ की हाँ हाँ. सड़कों पे जा रहा था, पॉट होल्स में कोई गाड़ी पड़ गई और थोड़ा पानी गिर गया. भाई दिल्ली कोई कितनी सारी सड़कें हैं, तो दिल्ली को क्यों तोड़ा आपने? भाई मैं दिल्ली से रहता हूँ ना, मतलब रहा हूँ पूरी लाइफ, तो आई फील आई हैव Actually, द that राइट. is true. That is true. Yeah, that is true. I can't even disagree. I feel Arjun has potential. हाँ, ये तो पढ़ा था हमने. Yes, Arjun is very strong. I just feel luck never goes his way. हाँ, like I think crunch moments में जैसे quarter finals में वही के साथ, I think Arjun had a dream run until the quarter finals. Took out Leko, took out Aronin. Aronin वाला game कितना बढ़िया था यार. हाँ, It was ब्यूटीफुल. so good. And he was crushing Wei as well in the classical part of the game, but something just didn't go his way. Yeah, sad. It's just sad. इट But I इज. think him winning World Rapid or World Blitz would be a concession.
like of some sorts, like world rapid Yeah, for sure. yeah, for sure. I think if he becomes world champion in any format, I think he would not look at the year negatively, I think. Hmm. Meanwhile, Arjun need big tournament win to gain that momentum. Absolutely agree. Who would you like to see become the World Cup challenger? I think I mentioned this. I want an India versus India final. By the way, B5 by Vincent Keimer, which is a big mistake, and now white is even better. भाई क्या ही चल वाह रहा है? भाई, 92 तो आ गया देखो बोर्ड पे। मैंने कहा था 92 आएगा। बट ये काउंट बैगी थोड़ी बेट होगा, उसको कैंसिल ही पहले हो। मैं हाँ कैंसिल ही हो गई। यार ये क्या है यार, आई वुड हैव वन, आई एम टेलिंग यू। By चलो the way, Param चलता is है। now equal. Magnus is the only one who is slightly worse as white. Maybe we can have a look at the Magnus game quickly. ओ दैट लुक्स बैड। एक्चुअली दो ही चाल है मैग्नस के पास विच आर लाइक मेक इट स्लाइटली वर्स, नहीं तो ही इज वेरी वेरी बैड। द मूव्स आर किंग G1 एंड बिशप F4। तो नॉट शॉर्ट कासल या शॉर्ट का, अच्छा शॉर्ट कासल अभी 92 का थ्रेट है। If you go short castle, then black can go knight d2 and just capture the exchange here. So हाँ, king g1 is what Magnus has to find. Okay, in hindsight, knight d2 को देख के king g1 तो कोई भी खेलेगा। true, true, true. Also, bishop f4 also controls g2. So both moves have the same idea basically. Rook d1 also exists. I'm not sure why is it so bad though. Is there something wrong with rook d1? There's bishop e6 and bishop g4 अरे बाप रे if you भाई play वो rook तो d1। yeah. So can't do that one. So let's wait. रिस्क है Uh, तो टाई ब्रेक है। I would want a clean win by जो what I've learned from tiebreak से कुछ भी होता है tiebreak में, so अर्जुन भाई डायरेक्ट जीत जाओ। मैग्नस भाई जाएंगे तो जाएंगे, हमें अर्जुन भाई को जिताना है। निहाल एंड अर्जुन बट टू समय प्लेयर्स भाई हमारे हाँ, प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि भाई हम मुझे मुझे तो टाई ब्रेक ही देखना है। लाइक ही जस्ट आई फील लाइक। I mean, see, Samay Bhai loves his work so much, he wants to produce for 10 hours a day. Like, tournament ही नहीं है इतने यार. There's nothing we can do. Like, FIDE कितना ही मेहनत, Chesscom कितना ही tournament organize करेगा. It doesn't satisfy his thirst, Saj या Bhai. या But या I think we are human. We are not like Samay Bhai. I mean, नाम में ही Samay है, तो he's very ambitious. So, yeah, I mean, we have to be practical. So maybe 5 hours is enough. या समय भाई Are आई you back in फील 1 minute, लाइक Saj ही Bhai? जस्ट या श्योर श्योर श्योर। King G1, by the way, Magnus plays, avoiding this knight D2, fork wale ideas. Now black has bishop E6 or B5. Actually, it feels like a really strange position to me to play as from the black side. If I was black, maybe like objectively, I would not go bishop E6. मैं bishop F7 जाऊंगा. I don't know why, it just feels safer, and then I would just try to castle, and that's it. और व्हाइट के नाइट यार, इसका कोई मतलब ना, आप यहाँ जा सकते हो ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो इट्स लाइक you're gonna really struggle to kind of develop this knight, and probably this is why Magnus is slightly worse. But on the bright side, Magnus के पास 5 minute extra इस position में, so surely some concession is there, and he goes bishop e6. Wow, the best move in the position. Sindarov might be looking to make a comeback. Chat, if Magnus does not play knight f4, it's -1 for Sindarov. How could one improve chess memory at an adult age, and is memory linked with intuition in chess somehow? Memory improve करने के लिए I think you need to sort of do spaced repetition. Like I'm assuming you're talking about opening theory and endgame theory and all of that. But वो I think doesn't just apply to your to chess, it also applies to life, right? अगर आप एक चीज को बार बार रिपीट करते हो, आई थिंक मेरे कोच ने एक बार मुझे समझाया था कि अगर कोई एक ओपनिंग अगर आपको नहीं याद रहती तो रिपीट इट वंस, लाइक ऑन द फर्स्ट डे, then do it again on the third day, do it again on the seventh day, and then like once you space it out enough, then एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, you will know exactly what you have to play. And about memory linked with intuition in chess, I would say so. I would say so. Like I think intuition is sort of a something that forms part of every aspect of a chess player. Time control यहाँ पे by the way आधा घंटा with 15 seconds increment. And if the match goes into a draw, so for example, इस match में Sindarov is on 0 and Magnus is on 1. If Sindarov wins this,
जिसके चांसेस एक्चुअली हैं, काफी हाई हैं, then they will play a 5-2 as their tie break matches. Meanwhile, while Magnus thinks, maybe let's take a look at Arjun, because वहां पे पोजीशन काफी बैलेंस्ड है. यहाँ पर भी टाई ब्रेक के चांसेस काफी ज्यादा है. Black has this sort of backward pawn on d5 and we have a nice outpost on d4. कभी ये knight उठ के यहाँ पे बैठ जाएगा तो it will be a legend. And also Arjun having about 5 extra minutes on the clock. That's definitely a bonus. I like Arjun's chances here. I think Arjun का game most likely tie break में नहीं जाएगा. What do you think, chat? क्या tie break पे जाएगा या नहीं? क्या हाल चाल? How is everyone? बढ़िया अनीशा जी. Doing amazing. Discussing the games, discussing life. आप कैसे हो? Hans responds with rook d8. d4 पे maybe थोड़ा pressure. At some point he can play d4. By the way, in critical moment, apparently यहाँ पे rook f1 खेलना जरूरी है अर्जुन को, बिकॉज इफ यू डोंट देन मेरे हिसाब से आई थिंक d4 आ रहा है. अगर आप रुक से मारते हो तो ब्लैक जस्ट कैप्चर्स बैक. अगर आप क्वीन से मारते हो तो क्वीन टेक्स f4 इज हैंगिंग एंड रुक f1 इस पॉन को बचा रहा है ताकि d4 ना आ सके. एंड एक्चुअली इफ लाइक आफ्टर रुक f1 ब्लैक की बेस्ट मूव इज फॉर सम रीजन नाइट g8, व्हिच आई एम गेसिंग द पॉइंट इज नाइट g8 रख के आप e7 और c6 पे लाके वापस d4 खेलोगे, बट दिस जस्ट फील्स टू इनह्यूमन फॉर मी. साहिल भाई आई थिंक आप कुछ बोल रहे हो तो यू आर Oh, I म्यूटेड. was muted. अरे भाई इनह्यूमन से याद आया, परम मकसूदलू की 11th लॉस इन अ रो इनकमिंग बाय, ही स्ट्रगलिंग अगेन. Oof, What is that is happening, sad. bhai? Chat, 11 losses in a row incoming. I just can't believe this. Like, Param Maksudlu was strongest players in the world, almost qualified to the candidates. When he played Chennai GM, yeah, if he had won that event, if he had crossed a certain rating barrier, he would have qualified to the candidates. But he couldn't do it. He missed out. And now he's having 11 losses in a row. ये game hold कर पाएंगे कि नहीं, बहुत difficult है. मुश्किल तो है भाई. C4 के बाद D टेक C4, ये किंग कितना गंदा बैठा हुआ है जीवन पे. बट या आई थिंक परहाम डेफिनेटली इन ट्रबल एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ द 4 गेम्स ये गेम मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा लाइकली है कि टाई ब्रेक पे नहीं जाने वाला. Hmm. मे बी वी कैन स्विच बैक टू अर्जुन्स बोर्ड, क्योंकि लोग कह रहे थे यहाँ पे इन दिस पोजीशन रुक f1 इज नॉट अ ह्यूमन मूव. आई थिंक इट इज. आई थिंक इट इज काइंड ऑफ ह्यूमन, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया f4 के पॉन को आपको बचाना है d4 के थ्रू. इट इज पॉसिबल दैट ही प्लेज दिस. हाउएवर नाइट e2 भी काफी ह्यूमन है. बट प्रॉब्लम ये 92 में कि ब्लैक बिशप h5 खेल के इसको पिन कर सकता है एंड मुझे बिठाना है नाइट अपना d4 पे. और अगर आपने बिशप h5 Hmm. खेल के इसको मार दिया then I can never control d4. So maybe that's why I think rook f1 has a better chance or to be played. True, true. By the way, time situation, I think 13 versus 9. The good news is Arjun again ahead on the clock. That will be beneficial in the final moments. But can he create some pressure? Saj bhai, Arjun का best plan क्या लग रहा है यहाँ पे? Do we wanna put the knight on d4 somehow? Is that a potential plan? Yeah. That's what I was just talking about. That knight हाँ. e2 is a possibility in this position. But I think अर्जुन को लगेगा कि knight e2 के बाद bishop h5 है. And like ये bishop takes e2 मार के I can sort of No, I consolidate was the thinking knight position and आपका knight f5. d. Like knight Ah, f5 and knight then knight f5. d4. Muy interesante. By the way, knight f5 is actually a blunder. I'm not Why even am I sure not why, surprised? because I'm actually looking at this and it still doesn't make sense to me why it's a blunder, but apparently it is. Like, I'll show you. The idea is knight h5 attacking f4. आपने खेला g3, and then for some reason, you don't play bishop e6, but you play bishop g8. If you go knight d4, then g5? g5. Oh, Baap re. But oh, bishop g8 is crazy, no? that is Oh, insane. mistake by Arjun. Big mistake by Arjun. Rook d4. And now Hans has just one move in the position, knight g8. He plays the wrong piece to g8. Bhai, he goes bishop g8 and Arjun is back. भाई ये मिस्टेक्स पे ही दुनिया चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. both players making mistakes and now I think again Arjun has a bind. Basically ये रुक d4 से हटाना बहुत मुश्किल है अब.
So maybe Arjun gets some time to consolidate a little bit, yeah. And again, as you mentioned, the pawn on d5 still a potential weakness. That's for sure. बट यहाँ पे रुक नहीं बिठाना था, मुझे नाइट बिठाना था. That's what I like Hmm. more. Agreed. But I That think would have so been far, ideal. I think he has a really nice position, like strategically speaking, very very nice. चैट में कोई लिख रहा है सहज भाई ने हर्षित भाई की हैबिट्स कब उठा लिए भाई? कौन अरे वो सी हैबिट्स? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने की, लाइक कभी instead of good game you say bon appetit, and instead of something वो like that, हर्षित yeah. करता है ये? हर्षित करता है ना, करता है? स्पेनिश बोलता है ना, स्पेनिश बोलता है ना वो हर्षित तो स्पैनिश में बात करता है, मुझे स्पैनिश थोड़ी आती है. मैं तो हंगेरियन सीख अब रहा हूँ भाई. हंगेरियन में अभी मुझे, अभी आई नो हाउ टू से गुड, इट्स यो, बट आई डोंट नो लाइक सो हाउ टू से लाइक इंटरेस्टिंग येट. सो बेसिकली जब हनी सिंह कहता है यो 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 हनी सिंह, तो वो मतलब वो रिव्यू दे रहा होता है, मतलब बेसिकली गुड. हाँ, लाइक योल इज लाइक गुड, या यो. गॉट इट. बॉर्न एपेथिट खाने से पहले बोलते यार ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मत झाड़ो यार, इट्स अबाउट द फीलिंग नॉट अबाउट द एक्चुअल वर्ड्स. बाय द वे क्वीन ई3 प्लेड बेस्ट मूव. Maybe activating the queen a little bit, like getting out of the F file. Yeah, I think that's the main idea. रुख से दूर थोड़ा हट गए हम लोग. क्वीन ई3 बढ़िया मूव, आई थिंक एक्सरे से हट गए आप, यू आर राइट. एक्चुअली क्वीन डी2 सोच रहा था मैं, बट मे बी यू हैव दिस जी5 आइडियाज, एंड इसकी वजह से कि जी3 का नाइट Hmm. अभी थोड़ा लूज है, इसलिए उसने क्वीन Hmm. ई3 पे रख दी कि भाई सब कंट्रोल्ड है. एंड नाउ आई बिलीव अर्जुन हैज अ सॉलिड चांस. Hmm. Chat. Just time बस नीचे आता रहे. You basically need the same situation with 4 versus 1 minute, and that would really raise his chances. By the way, b5 played. Um, does feel like a logical move, especially because c5 square weak nahi hai. You always have b6 to control it. But again, it doesn't really do anything, right? So like, it's just a move. कितने सारे पॉइंट्स लाइट स्क्वायर पे उन्होंने फिक्स कर दिए. लिख रहा है चैट में, इतनी हंगेरियन तो मुझे आती है भाई, अब हंगेरियन की स्पेलिंग तो लिख लो पहले ढंग से. रुक डी वन ई प्लेस अर्जुन, थिंक फोकसिंग ऑन द डी फाइल, बैकवर्ड पॉन पे नजर. मे बी नाइट को d4 की जगह नाइट e3 पे रखना चाहता है वो. Hmm. I think e3 is a good square also, actually. Not so bad. ओ Okay, मैग्नस वन now. अपेरेंटली कोई कह रहा है. No, 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 नहीं not नहीं, क्या yet. बात कर रहे हो यार, He's ऐसे worse. डराओ मत यार. Magnus is worse right now, chat. Words you will only hear once in a blue moon. हम्म. Okay, now Arjun. भाई उसकी आंखें मूव ही नहीं हो रही है भाई, लग ही नहीं रहा उसकी आंखें मूव हो रही है. It looks, now I can see it, like calculating. But it is very interesting to see, like, आंखों से can you track where the eyes are looking? Yeah, but nice idea. Meanwhile, क्यों कर रहे हैं भाई ये, टू इन्वेसिव नो. अभी कहाँ लगा था अर्जुन? That will be interesting to see अपेरेंटली as well. कोई था ये, लाइक कोई एक यूनिवर्सिटी स्टडी हो रही है इस पे. Like I remember बढ़िया. one of my friends did it. Like they give you like a bunch of like puzzles and they track your eye movement कि आपकी नजर कहाँ जाती है. And they're testing like 1800 के प्लेयर, 2000 के प्लेयर, ग्रैंड मास्टर्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. Just to अगर do some टीनेजर को research टेस्ट here. करोगे तो आंखें कहाँ जाएंगी? आई रियली वांट टू से. सो होपफुली थोड़ा एडल्ट्स पे ट्राई किया होगा. मीनवाइल Wow. अर्जुन still thinking. Rook d1 खेला. And yeah, no, Arjun, no, it's Hans who is thinking. Arjun just played Rook Yeah, d1 and sorry. 6 minutes But for you know, Hans. I agree. The queen is still not a good blockader. Yeah, I feel like knight होना चाहिए वहाँ पे d4 या e3 पे. So I do want to move the queen again. I don't like the queen long term on e3. Also, how are you putting more pressure on the pawn on d5? Like we need to attack it again. Maybe attack b5 somehow. I'm thinking like, okay, I can't even play queen e2 because f4 is hanging. So advance करना Hmm. इतना आसान नहीं है अभी. Yeah, I think that's correct. ये वैसी पोजीशन है जैसे, हाँ, पिछले गेम में हांस वाज लाइक कंप्लीटली क्रूजिंग एंड अर्जुन ने वो नाइट सैक किया था. वैसा ही लग रहा है अब अर्जुन, ओनली अर्जुन कैन इम्प्रूव अनलेस हांस फाइंड्स अ वे टू लाइक स्टैक समथिंग एंड क्रिएट सम chaos ऑन द बोर्ड. Hmm. बट आई थिंक अर्जुन ये गेम जीत सकता है. आई रियली डाउट इफ दिस गेम इज गोइंग इनटू टाई ब्रेक्स बाय द वे. I have to agree with you. I think Arjun looking great, but he was same situation again, yeah. As the World Cup, जहाँ पे he was playing the second game.
was better, but can he find the finishing blow is the question. By the way, hands dipping to below 5 minutes now. So he's also feeling the pressure. And जो भी हारेगा, he's gonna join Param Maksudlu in the battle for last place. Yeah, so that's not a battle you wanna play on the finals of the tournament. So हम्म। कोई भी और वो भी हारना यार नहीं आई चाहता. थिंक ज्यादा ज्यादा प्रेशर तो अर्जुन पे होगा ना भाई। उसके 0 आउट ऑफ 12 है। अगर उसने अर्जुन को हरा हाँ दिया तो तो हाँ, and ज्यादा then Arjun प्रेशर is तो last. अर्जुन। Yeah, भाई अर्जुन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा इसमें आई थिंक। exactly. कि So भाई इससे तो नहीं हार सकता मैं। exactly, you don't want to लाइक lose. You don't want to lose this game at all. And Param is actually still losing. So I think बट Arjun परहम के लिए is. कोई स्ट्रेस ही नहीं है ना। वो तो लाइक उसका टूर्नामेंट खराब जा रहा है। लाइक इवन इफ ही Uh, लाइक wins against Arjun for example, like I think he would still be quite happy that he at least finished off strong. true, true, true. By the way, taking a look at Magnus's board just now, Magnus in slight trouble here. He goes rook h4 as his final move, maybe setting up rook g4 and कुछ g7 के pawn पे pressure. And position थोड़ी खराब है I think Magnus की, but time 6 minutes ज़्यादा. That looks quite And promising for me. and the best one for black is the very interesting castles. And after rook g4, just f5 and goodbye, भाई, game over. So castle करना है black को Oof. यहाँ पे. भाई कैसल के बाद तो अच्छा किंग सॉरी किंग जी8 खेल दिया मैंने गलती से। फोर्स ऑफ हैबिट। रुक Yeah, जी so फोर I एंड think देन यू प्ले एफ5। castle is a tricky move. It will just really put the pressure back on Magnus. आपने rook h4 खेला है and now you can't really come to g4 at all. So I think Sindarov has a golden opportunity to equalize matters. बस clock का डर है. उनके पास 3 मिनट, मैच के पास 10 मिनट. बट यार सेंडारोव आई थिंक टाइम प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल करता है। लाइक वी आल्सो सॉ इट इन द फाइनल्स इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट वेई। आई थिंक ही वाज डूइंग He सो वेल। castled. He या castled. या क्रेजी। He and बाय you द वे see him, आल्सो yeah, he's pumped ही इज अ up. पॉन अप। ही इज अ पॉन अप राइट। ओ रुक Oh, जी4 what? ब्लंडर। What? Oh my God! Magnus Carlsen has blundered the game. आई Wait, does he थिंक have an मे बी idea after f5? या What या are आई थिंक द his? आइडिया भाई आई थिंक द आइडिया इज टू जस्ट गो रुक जी5 एंड टू जस्ट सैक दिस एंड एटलीस्ट आप डार्क स्क्वायर्स पे खेल रहे हो। दिस इज नॉट लॉस्ट Ah, या नॉट लॉस्ट ah. लॉस्ट। Got it, got it. I think that's practically not a bad idea. To be honest, even in the initial position, he was lost. So to kind of change the character of the position, yeah, very, very natural to confuse matters. f5 rook g5 bishop g5 played। yeah मैं आपको बोल रहा था he's playing super fast। I But think he's trying to get Sindarov on time, which is the point here। साहिल भाई 5-5 Maggie's Maggie does not lose this। no, my first question is ki, why not take with the queen on g5 and put the bishop on e5? बात तो एक ही है ना। क्वीन e5 पे भी रख सकते हैं आप h6 खेल सकते हो। it's just about True. controlling the dark squares, doesn't matter how you So do it। you wanna bet 5 Maggie ki Magnus will not lose this. Yeah, you're saying he will not yeah lose this. He will at least draw. yeah ठीक मैं है, कह रहा हूँ डन. वो तो हारेगा नहीं। 20 हाँ 24 थी, 19 या फिर 29. आई एम इन. डन भाई डन। बिशप e2 डन. played। let's go मैगी। लेट्स अब गो. मैगी ही मैगी जिताएगा भाई। भाई मैग्नस भाई, यूजुअली आप हारते नहीं हो, बट आज हार जाओगे तो किसी का पेट भरेगा भाई. तो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा कर लेना कॉम्प्रोमाइज. डिफेंड्स h5 by the way। I think he's holding h6 for the right moment। सेंडारोव के पास 2 मिनट। Tough situation। He goes rook a7 now bishop f4 is possible to go bishop e5। कम ऑन, बाय द वे सिंदारोव भाई नो नीड्स चांस टू ही प्ले. लूजेस दिस। यार क्या बात कर रहे हो। डबल और नथिंग भी के लिए भी रेडी हूं मैं। आई एम दैट नहीं नहीं, कॉन्फिडेंट। डबल ना तक इतना मैं ये नहीं खेलता भाई. आई एम फाइव सो मैगीज इज माय कॉन्फिडेंट। मैक्स. आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट मैग्नस इज नॉट गोना लूज दिस। साज भाई, आप उतने कॉन्फिडेंट थे यार. याद है एक बेट लगाने वाले थे हम लोग, कुछ 10 मैगी हार जाते हैं एक ही बेट में. कौन अरे वो उसके बाद कितने भाई इतना सब कुछ सही प्रोडिक्ट भी किया था वर्ल्ड कप में। वो तो वो है, नहीं याद आपको। वो तो है. इतना सब कुछ है वो मैं बोलूंगा नहीं क्या क्या सही प्रोडिक्ट किया था बट ओ मैं कैंसिल हो जाऊंगा। बट लेकिन क्या क्या प्रेडिक्ट किया था भाई। ये बात तो है. बाय द वे, वन लुक एट द अर्जुन गेम, अपेरेंटली ही इज मच बेटर नाउ. +0.8. धीरे धीरे करके उन्होंने सारे पीस एक्टिवेट कर दिए. द नाइट एक्चुअली स्विच टू द क्वीन साइड टू c3, अ ब्यूटीफुल स्क्वायर जहां पे वो d5 अटैक कर रहा है, b5 अटैक कर रहा है, एंड आल्सो ब्लॉक्स द c5. सो कहीं ना कहीं पे Yeah, at the right moment, just capture on d5 and just go into the end game and let's go. या, Let's have it out, bhai. लेट्स गो, कम ऑन. By the way, the best move here is rook 4 d3, just offering the queen trade.
Wow, that looks scary. Queen takes, देखकर दिखा देते हैं, rook here, queen takes, rook takes, and ये pawn तो गए हो। Yeah. आप नाइट एच फाइव खेल के आओगे तो मैं जीते करके बचा लूंगा। डार्क स्क्वायर्स में मैं कितना सेफ हूँ, राइट? Bilkul. And the thing is, there is no weakness. F4 is the only weakness that you can attack. And G3 के बाद you're just left hanging. Yeah, okay, अब मेरा next move क्या है? Chat, by the way, ओ या, almost 400 लोग देख रहे हैं. Do like the stream. Let's get in more people because Arjun is also fighting in, to qualify and fight for the fifth place. Hans Niemann से match है उनका भाई. Hans Niemann, काफी कंट्रोवर्सी के लिए जाने गए थे. वेरी वेरी स्ट्रांग प्लेयर, कह के लेने वालों में से प्लेयर है. बोला करूंगा और कर दिया भाई. टॉप प्लेयर बन चुके हैं. बट कैन अर्जुन क्रश हैंस नीमन्स होप्स हियर? बाय द वे, क्वीन E2 रुक को पिन छोड़ दिया उन्होंने. इंटरेस्टिंग। तो उनको आई क्वीन थिंक ट्रेड नाइट नहीं H5 करना। रुक रहे ही हैं वो. इज भाई इज लुकिंग एट द B5 पॉन। फ्री का पॉन दो। हाँ, प्यादे का लालच बाबू भैया, प्यादे का लालच. बाय द वे, मैग्नस इज नाउ मच वर्स देन द प्रीवियस पोजीशन। एक बार फिर से नजर मारते हैं। H6 खेला उसने, एंड लुक एट दिस। ब्लैक हैज टू फाइंड रुक F6 इन दिस पोजीशन। निकाल साहिल ले भाई, सिंदारोव. इज दिस फाइंडेबल और नो? कम ऑन रियलिस्टिकली, सिंदारोव. लेट्स गो, ही विल फाइंड इट. रियलिस्टिकली कम ऑन कम ऑन रियलिस्टिकली भाई. बताओ। भाई 5 मैगी लगाई है भाई अब तो. यू हैव टू गो ऑल इन. या कम ऑन, लुक एट सिंदारोव. ही इज सो एक्साइटेड बाय द वे. लुक एट हिम. ही इज लिटरली jumping in his chair. He knows he's about to win. Come on, rook F6. आई डोंट थिंक ही नोज इज अबाउट टू। भाई रुक F6 में बिशप G5 है मेरे पास, एंड देन बिशप H5 इज देयर। लाइक लेट्स शो इट टू द चैट। रुक F6, बिशप G5, रुक G6, बिशप H5 है। I just take on H6, yeah, आई डोंट नो। I think. या बट यू लूज द एक्सचेंज एंड आई डोंट नो। ये भाई 1.5 मिनट है उसके पास। अरे सिंधारो भाई, come on. You can pull this off. The चैट, world doesn't expect you to do चैट this, but you गिव can. मी चैट गिव मी योर वाइल्ड लाइक प्रेडिक्शन हियर। ड्रॉ मत बोलना यार। क्या मतलब, क्या लग रहा है? डू यू थिंक मैग्नस लूजेस दिस और नो? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ। Thank you, Aditya bhai. मैग्नस अगर loses then yes, मैग्नस doesn't lose then no। Oh, played! He finds rook F6. Man is a beast. Oh, By normal circumstances, mein Saj bhai, I would say you don't find it, but just for mein Sindarov hai, he is gonna find everything. And rook F6 just kind of plays the first engine's preference. And rook G6 जब कह रहे थे, for example, bishop G5, I think was the idea, right? The plan you're mentioning. oh yes. By the way, he took 3 minutes for that move. And he has 1.5 minutes left though. So there's still some problems here and there. And Magnus यहाँ पे Bishop G5 अभी भी खेल सकता है, which looks a bit scary to me. Yeah, definitely a strong option because bishop G5 के बाद, I think you apparently have to find a move like F4 or Queen G6, which is not easy. भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैग्नस विल लूज। अब तो मेरे को भी डर लग रहा है भाई चैट को देख के। चैट ऐसे भाई मत करो यार। कई लोग विन भी लिख रहे हैं भाई. यार विन तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया। वो तो By the अलीशा way, जी लिख Arjun सकती gave है। me a huge update. I think the E pawn has been pushed by Hans Niemann. कह रहे हैं तुम्हें B5 pawn चाहिए तो ले लो, but मैं अपना E pawn push करना चालू कर दूंगा and I'm going to try and make a new queen. तो क्वीन टेक्स B5 के बाद अब क्वीन टेक्स B5 तो मारोगे नहीं, राइट? क्योंकि E2 पे मेरे पास रुकी वन है हमेशा। लेट्स से Hmm. जस्ट शो इट टू द चैट। टेक्स टेक्स E2 आया तो मेरे पास जस्ट रुकी वन है, एंड इट लुक्स स्कैरी, बट ओके, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर नाइट C3 आके मैं इसको जस्ट सीधा मार दूंगा। डार्क स्क्वायर्स पे व्हाइट इज स्टिल डोमिनेटिंग, बट आफ्टर E3 क्वीन टेक्स B5, मे बी जस्ट मे बी ब्लैक को क्वीन स्ट्रेट नहीं करनी चाहिए। मे बी ब्लैक शुड प्ले क्वीन D6 और क्वीन C7 और समथिंग लाइक दैट एंड कीप द गेम रनिंग। बिकॉज क्वीन इज द ओनली पीस राइट नाउ दैट इज कंट्रोलिंग द डार्क स्क्वायर्स। He goes queen B5। सहज भाई, जितना मेरा फ्यूचर डार्क, जितना मेरा पास्ट डार्क है, उतना तो मतलब मेरा माय पास्ट इज आल्सो कंट्रोलिंग द डार्क स्क्वायर्स, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. क्वीन B5 ऑन द बोर्ड. Queen B5 you would never consider, yeah? Queen takes B5, knight takes B5, not an option. Not in a million years would I consider that, because it looks horrible, and I feel dark squares पे Hans will just be cooked. So he's gonna try to keep the queens, queen C7 या queen D6 to put pressure on the F4 pawn. Maybe knight H5 ideas incoming as well. He By has to generate an attack, and fast. by the By the way, way, after switching back to Magnus's board, because yeah, look at this. Bishop G5 played. and he goes look at it And back, ooh, but he can't would you repeat, like right? Sindarov can't would you repeat. like would you like to draw? No, Would you brother, like I to don't draw games. I just kill them. I wanna win the every tablas? single game I play. Tablas? Tablas? Tablas?
por भाई qué? तबला वबला नहीं बजाते हम, शादी में बहुत बजाए रहे, अभी हमें गेम जीतने का है। क्रेजी। अरे हाँ, अगर वो डबल स्क्रीन वाला हो तो चैट में भी लोग बोल रहे हैं डबल, अगर वो डबल ओह गेम वाला हो तो या, दिखा दो यार, अर्जुन एंड ओह यस, क्रेजी। परफेक्ट, अबे एंड भाई ही ट्रेडेड ओपी ऑन भाई। B5, लेट्स गो। ओ वाओ, आई वुड नॉट हैव कंसिडर्ड दिस फ्रॉम हांस यार, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। हांस के पास कितना टाइम है? ही हैज 1 minute ऑन द क्लॉक। दैट लुक्स स्केरी भाई। I don't भाई like this for Hans at all. I think Arjun अभी is के about लिए to win. And स... Magnus offering the draw. Tablas. नहीं नहीं भाई, सिंदारफ मेरी शादी में आया था, तो उसने बहुत तबला बजाया वहां पे, अभी और तबला वाला नहीं बजाएगा। और आई थिंक he's gonna play for a win, he has to play for a win, right, because he lost the first game. हाँ हाँ, साहिल भाई with no bias here. नहीं नहीं भाई, I'm just speaking facts. हाँ हाँ, facts. 12 सेकंड पड़े उसके बाद facts. Come बड़े on, the आपके second facts. Sindarov, let's go. Rook F6 back. भाई भाई कुछ भी खेल दो, गए क्वीन जी 6 खेल दो गए। भाई, on he plays queen g6. नाइस, Slide. रिफ्यूजिंग द ड्रॉ ऑफर, स्लाइट इनएक्यूरेसी। अब क्वीन ट्रेड नहीं करेंगे मैगी Bishop जी, h5 आया लूज भाई, क्वीन h3। Bishop h5 and Bishop e5, I don't know, something crazy could happen here. भाई ये कौन, जो लोग कह रहे थे चैट में मैग्नस विंस, भाई यू माइट बी ऑन टू समथिंग। आई एम नॉट किडिंग, यू माइट बी ऑन टू समथिंग चैट। भाई ती वेट व्हाट, दैट्स अ मिस्टेक, दैट्स 100% a mistake, I can't imagine that. अरे यार गलती हुई गवा, अरे यार, नो नो, मेरी अति मैगी। अति सुंदरों। अरे वाह 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 वाह। भाई ये क्या हो गया यार। बिशप h5 खेला, वो क्वीन f6, अब बिशप को e5 पे भी लगा दो। भाई रुकी वन ओनली मूव। बोथ में बिशप e5 इज आल्सो गुड। Bishop e5, queen d8 खेलना है, ओह वाओ। And now f4 is a crucial move, not allowing black to go f4. व्हाइट की चाल है, रुकी वन तो खेल लो। But f4 also very strong actually for white, because then you cement the bishop forever on e5. हम्म, रुकी वन, रुकी वन, रुकी वन, लेट्स गो। It would be ironic if Sajwai wins a bet with the pawn to f4 move. नहीं, f4 ऐसा अच्छी चाल है क्या व्हाइट के लिए? हाँ, apparently it's very good. After f4, the best move for black is rook g7. Just giving it वो तो back. निकाल लेगा ना, तो निकाल लेगा ना वो। But कौन देगा rook g7 यार अपने आप में ही? Like you would think of other ways if there is one. भाई आई अगर मेरे को आप चॉइस दे रहे हो ना रुक और बिशप में से, आई विल ग्लैडली गिव अप माय रुक फॉर दैट बिशप। बट By the अब way, अगर आप रुक जी7 खेलते हो, मेरे पास f3 है। yeah, and f4 का idea वो भी था to prevent queen g5, ताकि queen g3 check is actually mate. And now, by the way, f4 only move for black. He has to push that pawn. मैगी मोड इज एक्टिवेटेड भाई, रुकी मैग्नस इज जस्ट प्लेइंग टॉप मूव्स आफ्टर टॉप मूव्स भाई, अरे देयर इज यार नो स्टॉपिंग हिम। भाई, इतनी मेहनत से मैंने वो 24 मैगी बनाए थे यार, मतलब come on Sindarov, I still have faith you can pull this off. 5 सेकंड भाई, थोड़ा जल्दी भाई खेल लो चलो, फेस को आपका। 3-2 भाई। रुक ओ जी ही 7, blunders. रुक जी 7, आई टोल्ड यू। f4 के बाद रुक जी 7 100% खेलता वो, and that would be bad for him. So now I think Magnus will take on g7 and we have tablas. नहीं नहीं भाई, I still have faith. By the way, all the three games apart from Arjun, black is slightly better now. So very interesting turn of events. Arjun on the right side, as you can see, has exchanged rooks. Now black has two pass pawns on the e file. वो दोनों बस उड़ा दे एक बार, रूकी वन रूकी थ्री रूकी फोर, एंड ही इज जस्ट विनिंग द गेम। Yeah, but f4 का pawn भी बचाना है अर्जुन को। That's the game on the right side chat. f4 का pawn is really important to save. बट कैसे बचाओगे? देयर इज नो वे यार, बिकॉज़ 95 देयर इज रूक No way, d8। Jose. भाई हैंड्स बाय द वे हैज 15 seconds। Ooh, that's crazy. I think Hans also might not survive this, yeah, because time is such a big factor here. Like Magnus का देखो 7 मिनट है, अर्जुन के पास almost 5 मिनट है. You can think in critical moments and you can outsmart your opponent. This is not the liberty that black players sort of have with such little time on the clock. Yeah, Arjun, by the way, still in the driver's seat. By the way, a lot of trades in the Magnus game on the left. As you can see, bishops have been traded off. And now it does feel like a drawn position. Unfortunately, black has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pawns. White has 1, 3, 4, 5, oh, 2 pawns down, yeah, though. भाई क्या मैगी ये गेम जीत सकता है? Is my question. Yeah, no chance, yeah. I mean, no chance.
भाई चांस तो है, देखो आपको पता तो है भाई कि देखो चांस देखो है। देखो मेरे पास रुक जी सच सच सिक्स है। बोलना, सच सच बोलना, चांस है कि नहीं, सच बोलो। नहीं, of course chance है, but I think like black is doing okay. Like now the question is, does black want to? If black doesn't want to push, he will draw comfortably. The question is, black want to push, right? For queen b3 is a way to push. So this gives Magnus also some chances, right? If black queen d7 खेल देता, there is no way white wins that game. वेल ऑफ कोर्स, लाइक हम टूर्नामेंट की सिचुएशन को कंसिडर करके जजमेंट दे रहे हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ. So he does have a chance to win because Sindarov might overpush, because considering that he was winning before and Sindarov को पता था कि उसकी पोजीशन विनिंग है. And also, when you're playing this position, you feel like I should be objectively maybe tiny bit better. Yeah, like I'm the one pushing still because rook g6 है आपके पास. There's no deadly check instantly, so you feel like maybe okay, I should be doing okay here. Um, मेरे को एक बात बताओ, हांस के पास 1 सेकंड क्यों है? एक सेकंड पे चाल खेला होगा शायद. भाई 5 वो तो टाइम होगा ना, 11 होंगे फिर तो। शायद वो क्लॉक दबाने के बाद मिलता होगा या खतरों के खिलाड़ी है हैंस नीमन में भी. खतरों के खिलाड़ी, अच्छा। हाँ नहीं, ही प्लेज ज्यादा वेरी टाइम था क्विकली उसके रुक पास. c8। अभी मैगी भी सोच रहा है, देखो 6 मिनट। अर्जुन ऑल्सो हैज लाइक अराउंड 4 मिनट्स ऑन द क्लॉक, दे कैन आउट स्मार्ट वेरी इजीली। कोई कह रहा है अर्जुन वन. भाई अभी अर्जुन खेल रहा है. भाई मैग्नस का बताओ भाई क्या रहा. अर्जुन का तो क्या ही करना है. आई जस्ट वांट मैग्नस हैंड्स फ्रॉम टूर्नामेंट डिसअपॉइंटेड. वो हुआ था भाई एंड मैग्नस डिड विन इन द रैपिड सेक्शन 10 प्लस 5 भाई सेक्शन. इफ मैगी विंस सैज डजंट गेट एनी मैगी, भाई ये कैसा रूल है? मैंने तो कहा कि मैग्नस हारेगा नहीं, अगर मैगी जीतता है मेरे को टेक्निकली डबल मिलनी चाहिए। लाइक कम ऑन, लॉस्ट पोजीशन में मैंने बोला ये। ओके बाय द वे रुक क्यों डी साहिल भाई? एट. क्यों नहीं साहिल भाई? डबल तो नहीं भाई, इतना भी दो रिजल्ट दिए थे ना भाई, तो इट कैन बी डबल because it was two हाँ results, so हाँ it हाँ। will be equal. By the way, rook d8 played. Now, do you take the e3 pawn? यस, व्हाई नॉट? एटलीस्ट वी आर अ पॉन अप। लेट्स टेक इट, Knight नाइट f4। f4. हंस Rook d2 इमीडिएटली incoming. टेक्स। रुक Rook f1 आ d2 जाए। incoming. रुक Rook d1, f. रुक d1। Ah, I like rook d1 actually a lot. Nice move. चैट बाय द वे, दिस इज कंप्लीटली इंजनलेस कमेंट्री फॉर यू या, लाइक मैं कुछ भी हाँ. लाइंस नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरा एकदम। रुक d1 इंटरेस्टिंग लग रहा है। Rook takes and knight takes, and okay, you're a pawn up in a knight pawn endgame. But I'm assuming black is not going to trade rooks. Knight d3, for example, it looks Oh, interesting. knight f5. He goes for the offensive. And by the rook g6 on the left board. So activating the rook, not. But I think the question is, why can't white just take the c6 pawn? क्या हंस का टाइम गया क्या? नहीं नहीं, no chance. घड़ी दबाना भूल गया वो लगता है। I mean, भाई जीरो ही दिख रहा है मुझे क्लॉक एक्चुअली. आई डोंट नो इफ ही फॉरगॉट. देयर इज एग्जैक्टली। नो वे यार. 24-25 seconds। बिकॉज़ ही स्टिल थिंकिंग. डज ही हैव इनफ टाइम टू थिंक इन दिस पोजीशन? एक बार देख सकते हैं समय भाई। ओके नो, he आई has time. He has time. He has time. He आई has डोंट time. थिंक वी हैव Oh, दैट blunder. Wait, सी। what? That's a big blunder by hands. सो अर्जुन विनिंग, लेट्स गो। Let's go. Oh, wait, what? वी नॉट अ बिग ब्लंडर यार, g5 के Wait, बाद रुक what? g2 भी तो है भाई। रुक g2 भी तो है भाई। Oh, it was not a blunder. It's close to equal now, Sahaj. अरे टाई यार. ब्रेक्स। Yeah, I don't want to see tie breaks. I want to see a win. This is the thing, right? Arjun struggling to finish off the game. हाँ भाई, बट आई थिंक समय भाई को एकदम टाई ब्रेक्स देखने आज, उन्होंने बोला था मुझे। तो आई थिंक लेट्स ऑनर इट या। क्या हुआ साहिल भाई? यू डोंट लुक। नहीं नहीं नहीं, see, we would love to see tie breaks, but Arjun जीतना चाहिए भाई. I don't want to see Arjun lose and play for eighth place. That's my only हाँ। emotion right now. कि second last place के लिए ओके। fight कर रहे हैं. I'm hoping Arjun will fight for fifth place. g5, come on, let's make some moves। मैगी तब से सोचते हुए over 2 minutes of thought। Okay, we can see Sindarov shaking his chair. He's very excited still. I think he still has hopes of winning this. By the way, Queen f3, very interesting move because it controls the d1 square as well. So Black Queen हम्म। का गेम में आने का आसान नहीं है उनके लिए. There's no Queen d1, Queen h5, for example. You can, and if you गुड pick up the a3 पॉइंट। pawn, right, the most obvious move, which he did, now is a critical moment because Black has grabbed on the pawn. So does White take on c6 with the Queen now?
क्वीन से मारे, रुक से, अच्छा रुक से मारेंगे तो क्वीन वापस आ जाएगी, राइट? तो क्वीन से ही C6 मारो फिर, देन यू कैन गिव अ बंच ऑफ चेक्स। व्हाट डू यू से? Yeah, I think once the white queen checks on d7 on the seventh rank, I think it's going to be at least a draw for white, at least if और not a रुक से wins. सिक्स, रुक से सिक्स भी ठीक है, आई फील लाइक दोनों ही ठीक होंगे यहाँ पे। Rook Actually, no, c6 is rook a c6 is the slighter. mistake. It's a Yeah. mistake actually. Yeah, queen c6 is the move. Actually, the best move is queen e3. छोड़ दो pawn को and queen e5 check and you are Okay, just that's tough. better. That's tough. That's tough भाई even for मैग्नस है Magnus. वो। Oh, he takes with the rook. भाई Oh my God! Maybe there's another twist down the line, Sahaj. Maybe your Maggies are not as safe as we thought they would be. कितने एक्साइट हो गए साहिल भाई, मैगी जीतते Bhai, जीतते, भाई it's मजा just तो the आ रहा chess है। talking, Sahaj bhai. It's just the chess. यस, ओके, आई थिंक दैट्स फेयर, दैट्स फेयर, दैट्स फेयर, बट 31 सेकेंड्स अभी भी, लेकिन टाइम बहुत कम है यार सिंडारोव के पास। भाई बट टाइम डिफरेंस पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया है. नाउ इट्स ओनली 2.5 minutes. इट वाज लाइक 7-8 minutes अर्लियर. एंड बट समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, हर भाई चीज में। समय भाई समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समय को टाई ब्रेक्स देखने आप हैं, देखो, बट समय. आप देखो, अगर समय ना होता तो ये स्ट्रीम ही ना होती। समय भाई कितना सम इंपॉर्टेंट है। भाई समय बहुत इंपॉर्टेंट है. आइंस्टाइन जी ने बताया था, रैना जी ने मुझे बताया था. बाय द वे, G3 only move for Magnus. Everything else is resigns. Only move G3. नो मैगी, नो मैगी, ब्लंडर नहीं करना, मैगी G3 तो मैगी निकाल ही मैगी. ले। लेट्स गो. एक मैगी जाएगी तो चार पांच मिलेगी. वही वही है. ये लेट्स गो. कैसा रूल है, ये कैसा रूल है? कम ऑन मैग्नस, गलती कर दो. नहीं नहीं भाई, अरे फाइंड्स G3, इट. ब्यूटीफुल मूव. नेवर डाउट द गोट। एंड G3 नाउ ओ क्वीन इट्स E1, इक्वल नाउ. ऑफ कोर्स। भाई हमेशा से इक्वल थी यार, जस्ट वी जस्ट डिडंट नो इट। By the तो way, कुछ भी chat, खेल सकता है। do like the stream. Let's get to 300 likes if possible. जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, I think the next year in the chess calendar is so packed. You could just go to Chess24 India or Chesscom India, open up a stream and you'll see something live. क्योंकि Indian players crush करने वाले हैं. It's going to be fantastic. ये खत्म होते ही GCL, खत्म होते ही World Rapid Blitz, खत्म होते ही India. By the way, 0 seconds. What? I think there's some error there. Most likely, hands still fighting it out. Has 10 seconds या actually. आई फील हांस के उधर में कुछ TGT का प्रॉब्लम है, या आई Yeah, आई he डोंट has. थिंक इट Yeah, इज करेक्ट। time is kind of oscillating. Yeah, between 50 seconds he has no issues. या Very या comfortable. Okay, Arjun is still pushing. By the way, Maksutlu is no longer losing and is okay. Not let's not switch, but he's at least equal. तो Levon अगर is the परहम ने only one ड्रॉ who's करा come. लिया तो Huh. परहम की वो स्ट्रीक टूट जाएगी, अगर गलती से कल उसका अर्जुन से लग गया तो दैट कुड बी अ वेरी सैड डे। I आई agree. एम जस्ट सेइंग, Oh आई एम जस्ट wow, पुटिंग इट what a आउट देयर scene! भाई। All ओह the four लवली, games. थैंक यू समय भाई, क्या आई मीन दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीन। क्या अरे इसमें तो crazy scenes टाइमर भी चल रहे दिख हैं रहा है, लाइक साज हाउ भाई. मच we can also see how much time each player is taking. Samir, this is amazing. Thank you so much. By the way, Queen E4 played by Sindarov, who's still slightly better apparently. I know it's a rook end game, very likely going to happen in a move or so. I still sense some chances with that A pawn ready to run. Oh yes. If we go queen takes e4, then क्या हम safe हैं? Queen takes e4 तो मारना ही पड़ेगा ना इधर. What else are you going to do if you don't go queen अरे e4? हमारी शक्लें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Yo, what's up, chat? 2 घंटे होगी खुद की शक्ल देखे हुए. बट नाइस टू सी माई ओन फेस एंड योर फेस ताज भाई. एंड मीन वाइल Magnus G also down to Magnus has less time than Sindarov by the way. Hmm. Magnus also doesn't Ooh, look very happy. भाई वो चूल्हा जला दूं क्या साहज भाई? 5 मैगी जो पकानी है. अब थोड़ा डर लग रहा है, not gonna lie, because Magnus also looks a bit unhappy. I think queen takes e4 के बाद he just hasn't figured out how it is a draw, but it is a draw for sure. Like we can see it on our screens that it is a draw, Oh, but he any doesn't other look move is happy. not. He doesn't Yeah, look he happy has at to all. play fast though. Play fast, play fast, play fast. 18 seconds for Magnus. Why 18 seconds for Magnus? That's a sentence I thought I would never say. Oh, Ruxis, blunders!
Yeah. I mean, it was expected, Sahaj, right? Because once you can't see how Queen E4 draws, you'd give the check and gain time on the clock. King F6 now, only move for Sindarov, who picks up another queen, I think, in his hand. I don't know, kuch to pick up kiya unhone. King F6, and I mean, the result is in for Sindarov. Let's go. could be possible. साहिल So भाई इतने excited. खुश लग रहे हैं, इतने खुश लग रहे हैं, for भाई, no I apparent met reason. Sindarov after the World Cup. I asked him a question, आंसर बढ़िया दिया उन्होंने, तो तब से मैं फैन हो गया, पर कुछ नहीं है भाई. बाकी तो बोनस है भाई, बस आज भाई. सही कह रहे हो भाई. King F6 played. Wow. Now it's just blitz, yeah? Just pure blitz. अरे ये तो हार गया भाई, ये तो डेड लॉस्ट है. Queen takes Oh, C4, rook now takes C4. it has to be a worse version, right? D6, just rook E2, rook D2. I control your D pawn, and then I start pushing my pawns, and you have no defense. Played. Wow. He plays it. King G2 आता है and then rook to D2 played as well. Sindarov is about to take Maggie down. King E5, F4, King E4, yeah? F4 Maybe just. F4 pinned है भाई. अच्छा, right, right. फिर तो खत्म हो गया ना, King E5 resigns. हाँ, I think King E5 more or less resigns in this position, and he has more than enough time as well. That means we are heading off into tie breaks, and मेरी Maggie Saj bhai, जाते हुए. how does it feel to be down 29 Maggies now? ठीक है भाई, अब गोट पे लगाया एंड गोट भी हो गया, तो फिर तो ठीक है, दिन ही खराब है गोट. भाई. अरे भाई, सहज भाई, दुख हो रहा है भाई आपके लिए यार. गोट ने दी चोट. अरे ओहो. ओहो. हार्ड. वो F4 चेक चाल देख रहे हो भाई, F4 चेक, किंग D5 पे रूक टेक्स B5, मे It's बी still सम not over. होप. Yeah, still not over actually. King C. Oh, मोटी King मोटी. C6 only move. Oh, that's not easy. King हाँ, C4 feels so क्योंकि natural. भाई, अच्छा हाँ, भाई पॉन मर क्योंकि रहा है रुक यार. B4 रुक A4 पॉन मर मर रहा रहा है है, ना, तो पॉन मर किंग रहा है, पॉन मर C6 रहा है. इज राइट, राइट, लॉजिकल. राइट. ओके, ऑब्वियस चॉइस, ऑब्वियस चॉइस. Rook A5, Rook D2 check, and then Rook A2. Yeah, I think you hold on to the pawn. मे बी मैगी कैन पोज सम ट्रिक्स हियर, होपफुली. No, for sure. I think he does have a pass C pawn. The problem is कि it's just not really a real threat. Um, हाँ, प्लस maybe C4, King. दैट्स अ ब्लंडर. Oh, King E3, King D4, Rook A6 is his plan, but I still don't see how you create any chance. You can't give a check because Black King walks up to C5. Yeah, I believe Arjun is about to draw and Magnus is about to lose. That means we have two tie breaks incoming. कौन से दो? आई डोंट थिंक वी हैव टू टाई ब्रेक्स इनका. अच्छा, मैग्नस का भी होगा. राइट, राइट, राइट. मैग्नस एंड मैग्नस अर्जुन का बोथ भी के ऑन टाई टाई ब्रेक ब्रेक्स. होगा, अर्जुन का भी टाई ब्रेक होगा. या, या. सो लुक्स लाइक अर्जुन का तो ड्रॉ ही होगा. साहिल भाई अपना ना एड्रेस भेज देना, डन पनवेल भाई, वाला. नया एड्रेस. जरा फटाफट कुछ ब्लिंकेट करता हूँ फॉर अनरिलेटेड रीजन. यहाँ ब्लिंकिट आता नहीं ब्लिंकेट है भाई. चलता है. अबे यार, ये कैसा सीन है भाई. बट डी मार्ट आता है भाई, डी मार्ट आता है. सो ठीक है, चलो डीमार्ट कर दूंगा, आप भी क्या याद रखोगे. कम ऑन, See, लेट्स गो. unlike a certain someone, I actually do honor नहीं नहीं, आई my आई bets, yeah. आई बेसिकली वो वर्क ऑन द बार्टर सिस्टम. तो मेरी मैगीज नहीं आई, बट कुछ और आ Uh, गया किसी और के बदले. आपको नहीं पता था कि राकेश भाई मैगीज लेके आ रहे हैं. That's a lie. नहीं नहीं नहीं, बट बेसिकली लाइक इट वाज द डील कि भाई ही विल गेट द मैगीज एंड आई विल गेट दैट. लाइक इतना आइडिया था. तब लाएंगे ये नहीं पता था लेकिन. I really want Giri to win the candidates. I don't know why. Bhai, I think it will be great. He's a great ambassador of chess, and I think it would be amazing if we get to see an Anish versus Gukesh. एंड चैट, Very लेट्स कीप different इन माइंड. styles, but विदित किसकी मदद करेगा वहां पे, मैं ये पूछना भाई, चाहता हूँ. अगर अनीश वेरी और हार्ड. गुकेश का मैच हुआ तो विदित किसकी मदद करेगा. ऑफ कोर्स अनीश है. आई मीन, आई एम गेसिंग. गुकेश इज his teammate. But I mean, the problem is neither will probably ask for help, yeah, because Vidit ने Anish की help नहीं मांगी, so Anish will not ask for Vidit's help. Maybe it will be like a tit for tat thing. Hmm. By the way, any chances for Arjun there, like Rook H5, Rook A4, maybe Rook F5, G4, or no? टाइम देख के थोड़ा चांस लग रहा है, बाकी सब तो नहीं. 3 सेकंड है. I mean, I don't know how he has 3 seconds, but yeah. Chat, just so you know, if both of these games end up in a tie break, we will have two matches
of 5+2 happening at 8:30 p.m. But I believe 8:30 p.m. पे स्टार्ट नहीं होगा. यूजुअली जब लास्ट गेम खत्म होता है उसके 10 मिनट बाद ब्लिट्स और टाई ब्रेक शुरू होता है. अगेन सेम फॉर्मेट रहेगा. Oh, blunder! डिफरेंट 960 Arjun is पोजीशन. winning, bhai! Rook c6 is completely winning. Let's go, Arjun! Come on, Rook c6. Come on, come भाई on, मेरे come on, भाई King. भाई भाई यार हेडफोन्स पहने हैं मैंने यार. भाई गए मेरे भाई कान फट गए बनता है मेरे भाई. कान. So I गए मेरे apologize कान to भाई. your ears, bhai, because बहुत वाइब्रेट कराना है उनको आगे जाके. But King rook to c6, King e5 was the move, and he blundered with King d5, and now Arjun could be defeating Hans Niemann. I hope he converts this time. Oh yes, he plays rook c6. Nice move. Very very nice move. Rook takes a4 पे of course we go rook b6 and then rook h6 करके h5 का pawn भी मर जाएगा. That means Arjun is through and Maggie is still losing. Come on, come on, come on, अर्जुन भाई कन्वर्ट करने का भाई पूरा का पूरा अंत तक कोई गलती नहीं करनी. टाइम कम है, आई नो, बट दिस वन शुड बी अ विन फॉर द इंडिया नंबर वन. ग्रैब्स द पॉन सहज भाई. अब h5 की बारी. Hmm. Yeah, I think Hans Niemann about to be eliminated. ये तो मतलब पॉइंट इज कि आप रुक b4 खेलोगे ना, रुक बिहाइंड द पॉन, देन आई कैन जस्ट गो रुक h6 बट एनीवेज. ही गोस किंग बट c5. सहज अभी भाई भी लुक रुक एट h6 दिस, आ लुक सकता एट है. दिस, look at this. King c5, rook h6, ठीक है. King b5, हाँ. rook h5, King c6, and Yes. now only move for white. Can you guess? रुक e5 या No, rook e5 is a draw. That's the point. It's रुक not e easy. रुक e5 is not winning. Yeah, That's it's a shocking. draw. वही मैं देखा था. I thought rook e5 as well, but it's a draw. King rook e8 के बाद frontal defense. Ah, frontal attack. Right, right. So the Frontal only attack move, should not winning work. move, is rook h4, and that's not easy. ये Rook नहीं h4 only टिकेगी move now. यार. Come on, rook h4. Rook h4, Arjun. नहीं Important टिकेगी भाई. moment because you have to नहीं cut him on टिकेगी. d4. You need the tempo right now to come to the d file. Ah, okay, but he has 18 seconds. I really doubt. Rook e5 just Ah, looks too tempting, bhai. Arjun. But once he It sees looks. rook d4, he will not miss it. Yeah, it's always better to cut him off on the d file, right? See, I अरे told you. यार, अरे यार, अरे यार. And that's still winning for some reason. No, rook How is e8 this is a a draw draw? now. But अरे how? Like, यार. आपका king दो files, it's away. I'm not sure if this is No, I think rook a e8 was the draw. win, Sajbhai, instead of rook e1. He played rook e1 though. Rook e8 was the win. Ah, rook e8. Interest. ताकि वो frontal attack ना आ पाए. अरे Rook e8 तो यार. खेलेगा Hans. Like everyone knows rook e8 in this Oh, position. oh, this hurts. This is literally Duratsky's endgame manual, by the way. Like, I've seen this exact Yeah, yeah, yeah. position. He goes g4 and up check and then rook g8 and Hans Niemann might just save himself. Bhai, I can't believe this, Saj bhai. Like, I mean, it's just heartbreaking, yeah? I mean, Arjun का हर बार Yeah. यही होता है. Like, last moment पे he spoils it. By the way, an update. Vincent and Levon have also drawn, heading off into tie break. Wait, And what? Fabi is slightly worse against Parham. भाई चारों टाइम ब्रेक होंगे क्या? Fabi का नहीं most likely, but बाकी सबका yes. भाई, that's crazy. I think Levon was like completely, the game was over, yeah? But somehow. And now King And there d5, it by the way. By the way, is. Sindarov has won. So that means ki let's go to one board wala angle and focus on Arjun's game. Yeah, let's go to Oh Arjun's yes. board quickly. Let's. There we have it. King d5 के बाद अर्जुन सोचते हुए. This is a theoretically drawn position known as the frontal attack. Basically point ये होता है कि किंग अगर आगे जाएगा तो मैं चेक्स दूंगा. किंग अगर पॉन के पीछे आता है तो I'll go rook g8 again. The whole point is that Yeah. I don't want to allow g5. अगर ये पॉन अपोनेंट की टेरिटरी में पहुंच गया तो फ्रंटल अटैक काम नहीं करता कभी भी. Yeah. Also, that's why King d5 is super important because white wants to play rook e4, defend the pawn, and then move the king to the front. So that will be winning. So King d5 only move, but of course the hands will not miss this. Yeah. Yeah, for sure. Not rook e3 खेला, king d6, and I think Hans knows the drawing method. We might get 3 tie breaks today itself. By what Bhai a sahab. show! Insane. Uh, Someone's asking who is the best endgame player in India. Like debatable. I think सबकी endgames are very good, but I think Hari
would be one of my picks because I think his endgame technique is fantastic. Hari would be one of my picks. Yeah. Sahil bhai, any thoughts on that? Yeah, I agree with you. I think specifically Hari. I think maybe Vishy sir would be my pick though. I Uh-huh. think the experience he's had probably gives him the best understanding of the end game. And end game is also about experience, I think. Uh, like Arjun knew the principles, yeah. Here, like if you ask him ki yahan pe white to play and win, he would find rook h4, rook d4 in like 3 seconds max. But Hmm. yeah, it's hard in real games. It's about sensing that moment, which is not an easy task. अभी रुक एफ8 चेक एंड बैक टू जी8 बेसिकली आपको रुक जी7 खेलना आई थिंक वुड बी अ बिट रिस्की हियर रुक को आपको ऐसे डिस्टेंस में रखना है गिव अ चेक एंड देन गो बैक टू जी8 ताकि व्हाइट जी5 ना खेल पाए वेरी And, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर and king d6, king f4 is winning for white again. So you can't move the king really. You have to move the rook. सहज कैन यू बीट मैग्नस ऑन वन नाइट बिशप डाउन भाई ये कैसा सवाल है मतलब मैं बिशप डाउन ये Just for context, Magnus played Lawrence Trent and Magnus was rook down and he crushed Lawrence Trent, I think it was like 6-2 or something like that, दैट्स 8-2 or इम्पॉसिबल something. दैट्स इम्पॉसिबल Huh? He was rook down, रुक Magnus इज was टू rook down. एंड Are टाइम क्या था he used to troll time equal tha, I think. He used to troll कितना Lawrence टाइम था Trent on this. ये कितना मुझे टाइम था याद नहीं वाज है. इट अ बुल अगर देखो अगर Not वो bullet, 30 not सेकंड का bullet, but like मैच हो देन blitz. यू कैन नॉट से दैट नहीं blitz था, नहीं blitz ब्लिट्स था. इम्पॉसिबल क्या बात कर रहे हो यार हाँ, he trolled Lawrence Trent about this. Something like this. Exact भाई score मुझे याद नहीं है, but आप टाइम देखो फिर उसके बाद बताओ लाइक इफ इट्स बुलेट चैट एक बार सर्च करो ना इसको हाँ, और उसका चार्ट सर्च टाइम करके बताओ बताना यार. मुझे भी पूरी डिटेल्स याद नहीं है, but he did defeat Lawrence Trent though. By the way, still no moves. Rook h8 played by Hans. Don't think that's a mistake. King f4, rook f8 check. या Wow, लुक्स Arjun, अनलाइकली रुकीज ओ ओनली मूव बाय द वे किंग king d6 only move for d6. Hans Yeah, but not very a very natural though, difficult I one rook think. g8 also no rook g8 also looks logical but उसमें मेरे पास king f4 है that's the point Yeah, king d6 he'll play in a second. I think he knows कि भाई rook e4, king d5, rook e7, king d6. जहां पे रुक है वहां अटैक करो उसको. Yeah, played. yeah Rook e2. Now rook g8. Yeah, very safe. Gives a check. king g2 पे rook g8 Yeah, Arjun misses the win. I think he will not be happy. But if he wins the tiebreak, it's okay, similar to the World Cup. But if he loses, then it's hmm going to be hard. Yeah. very Sage, what's your rating by around 2500? Like I think correct is 2475 right now. That's my exact rating. 2476, I think. 2476 or 2475. I think 2476, if I'm not mistaken. By the way, also Param Maksudlu about to draw. Let's not switch boards, but he's about to draw that game, so he will get the first points on the scoreboard, and that means ki Kaluana goes to I think the fifth place battle, right? Because he loses bracket. So if Arjun wins, he plays Kaluana tomorrow. If he loses, he plays Maksudlu. Hmm. ये थोड़ा रिस्की लग रहा है भाई अर्जुन के लिए बिकॉज परहम की वो स्ट्रीक टूट गई है एज वी कैन सी ऑन द बोर्ड switching back to Arjun's game frontal attack I think Arjun trying to win but looking impossible at this point Yeah. Is there any chance like rook f5, king f4 ऐसे करके बढ़ सकते हैं maybe? हाँ बट मैं चेक्स देता रहूंगा किंग e6 किंग h4 पे जस्ट चेक किंग g5 पे चेक check. Oh, by the way, here King E5 only move. Oh, interesting. Maybe that's what trying out. Yeah, he's trying it. He's trying it. Oh, this is possible to screw up Saj. I think not the Yeah, easiest choice. I feel because Rook. King Oh, he E5. finds it. Hans Niemann not joking around. Okay, Rook f5 check maybe. Then King e6 back. Apparently, it was a 3+0 game against Lawrence Trent, and Lawrence won
Acha, 5 out 5 of by 9. 9. Did he really win? But I remember Magnus told him he lost 6 games. Maybe it was 4 games, yeah? Maybe that was the. I'm not That's still a remembering lot correctly. of games, I think. That's still Yeah, so yeah, many. I yeah. mean, rook down. How is that possible even? Check, king g5, check, king f4. Okay, we reached the position I was thinking about, but now rook a8 maybe, yeah? Yeah. Side key checks now. As soon as you push g5, I'll give this check. And it is Hans who wins. Parham, by the way, making his first draw very, very quickly. तो इसी के साथ I think Fabi goes to the finals. Sorry, I think Fifth place Fabi match. goes to the fifth place match, and then Vincent and Magnus both Vincent versus Levon, Sindarov versus Carlsen, दोनों के दोनों टाई ब्रेक्स की तरफ जाते हुए. Yeah. क्या It's क्रेजी getting है भाई spicy. मतलब हम सोचते आई मेंशन वन टाई ब्रेक यू मेंशन लाइक 0 एंड Zero. लिटरली 3 हो रहे हैं ऑलमोस्ट 4 हो गए थे भाई ऑलमोस्ट Hmm. मैग्नस को यार ब्लैक से हरा देगा ये तो नहीं सोचा था मैंने यार. वाओ Yeah, I think Arjun just trying every single thing, before he agrees to a draw, because of course यहाँ पे कुछ हारने को नहीं है आपके पास. Like you can just try for a really long time until the opponent just claims. Let me just take a look at कितनी moves हुई हैं यहाँ पे. So I think the last capture happened at this point. So rook takes h5. That was move 59. Last pawn push कब हुआ था? 62 पे. भाई तो 102 चाले. Sorry, 112 चाले. We are on move 79 right now. and also I don't think players are noting it down so they will have to remember it Hmm. and claim so which is not easy तो वो आई थिंक आर्बिटर क्लेम कर सकता है ना यहाँ पे तो 75 वो मूव्स के बाद. 75 पे होता है लेकिन फिर या तो इफ but इट्स okay अ मूव 62. I think they will draw before that way before that actually they might just draw right थोड़ा now I रिपीट ही don't कर think ले. this yeah they will not really fight out too much he's trying again that same plan but it's gonna be a draw या या आई थिंक he's tried basically every single trick in the book. Rook h5 tries one more. Maybe rook h7 he'll play next, yeah, just to cut off the king that way. rook h7, then king h5 खेल के इसको आप आगे कर सकते हो, but then king आगे आ हाँ जाएगा. king को हाँ cut off करना is really important. If the king is there, then it's draw. yeah. Tablas. ये तो draw है. Opponent keeps checking or check attacking the rook. Any other idea? Yeah, I mean you just want to like try out everything, right? अगर white के पास zero risk है, so white might as well try it out. Like there's no harm in trying it out. Although ये G Post pawn king भी है, yeah, h5. passive defense also works now. Rook b8, king g8, it's over, yeah. Yeah. Very nicely pointed out. Rook b8, king g8, and pass. And no improvement for Arjun. मैं सोच ही रहा है तो ये तो काफी सिंपल है नहीं. By the way, Nihal Sareen apparently won today, so gains some points back. And now he's again 2708.2. So glad to see him winning. Let's hope so. He no, want Wait, to does see it him mean at he crossed 2750. Vidit again? Yeah, I think so he did. Was Yeah. Vidit was 2708 also, right? Yeah, he crossed him, I think. Nice. Okay, now it's a draw. Now I think Arjun will agree to a draw. Now there's no point fighting. या ये तो मतलब क्यों ही खेल रहे हो. वो भी Philidor. Classic Philidor position for everyone. Rook c6, and there it Yeah. is. Handshakes, and we are headed off to tie breaks. Yeah, and tiebreaks में 3 games जाने वाली हैं. We can already see. Is that अच्छा? That's the final game. Yeah, still going on. Let's have a look at that game as well. Oh, Rook versus 2 pawns. That's a nice. Yeah, but I think also headed towards a draw because the king is going to go here and push the pawn. Meanwhile, Fabi will just capture this pawn, and that is just king, and that would be another draw. So Fabi चलो only happy. player to qualify to हाँ. the fifth and sixth place. तो अच्छा है. Happy for Param. Yeah, at least 1 point तो मिला दो. This was very depressing. आधा And आधा भाई आधा.
Vincent Keimer, by the way, looking very confused about something in that position. Everybody is curious. Magnus also, by the way, still looking at the game. You're right behind Magnus Carlsen, by the way. कैमरा मैग्नस की शोल्डर पे रखा हुआ है ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा Why did he go रुके वन? किंग d4 सीधा ड्रॉ नहीं था क्या? है किंग G3, like I don't see the वो point. जीतने के लिए खेल रहा है क्या भाभी? Of course जीतने के लिए खेल रहा है, that's the point, no? बट क्यों? लाइक अगर आप ड्रॉ करके अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो क्यों? नहीं, I think both players are playing for a win, I feel. नो, फाबी इज विल क्वालिफाई. फाबी ऑलरेडी जीता पहला मैच. Fabi तो सही खेल रहा है ना? I think Param is white. He's the one playing rookie one, right? सॉरी आई मिसअंडरस्टूड. यस यू आर राइट, यू आर राइट. जगह फाबी की वाइट है. Fabi is just chilling, pushing the king. Was Magnus eliminated to the World Cup like Ukesh? Yeah. Magnus was eliminated in the third round by Bu Jiangji, I think, in round number 3 of the World Cup. So World Cup is a hard event. In fact, he almost got knocked out by Vincent Keimer last time when he actually won. So it's not an easy event. Go C2. By the way, now there are Rook two moves for white. finds it. Finds it. Oh, this is like a study, yeah? You often see like Rook H1, if Rook King D2, Rook takes with check. Very nice. And if you go King F3 here, then Rook C1 again. Okay, he goes King D2. Very nice. And that is a draw. Fabi qualifies to the 5th place and he will play the winner of Arjun versus Hans. Chalo, badhiya bhai. Tough fight. And yeah, it's going to be very interesting. Yeah, very interesting. We have 20, 40, I believe 10 minutes ke baad we will get to know, I guess, which position it is and when they begin. Sahil, what do you think? Should we take a break or should we just continue? Let's take a 5-minute break, chat. I think on the other side, we'll have Erigasi Arjun with the tie breaks. बहुत मजा आएगा. So do not go anywhere. It's going to be 5+2. So super fast. We're going to have Magnus ka tie break, Arjun ka tie break, and it's going to be exciting. So we'll see you on the other side of a 5-minute break. Take care.
are back after that very, very short break comparatively. We are back with the tie breaks of the semi-finals, the second last day of Freestyle South Africa. मेरे साथ है जीएम सहाज ग्रोवर। जीएम जी, क्या लग रहा है भाई? हमारे पास अब एलिगेसी अर्जुन है जो लूज कर गए अपनी एडवांटेज, एंड सडनली यहां मुझे लग रहा है कि अब टाई ब्रेक में हल्का सा मोमेंटम होगा फिर से हैंस नीमन के पास। क्या लग रहा है, क्या अर्जुन स्ट्राइक कर सकते हैं? Hopefully so, but 5+2 freestyle mein, I think anything is possible. We do have the origin, the like sort of the freestyle position in front of us. King and the bishop on f1 are the iklota pieces. Actually, bishop on c1 is also there, but the queen on h1 once again, the dark horse. Yeah, like ekdam kone mein, that will be a challenge. But by in इस format में कुछ भी possible है. No predictions as of now. अगर मैगी white से हार सकता है on demand तो कुछ भी possible है भाई. भाई मैगी से याद आया, मेरा पेट खूब भरेगा भाई। तो द फीलिंग इज एक्सट्रीमली ecstatic at the Tikku home right now with 5 Maggies coming in, celebrations in the air, पटाखे फोड़ने वाले हम लोग। But meanwhile, we can see the amazing blue lighting there, alternating करंट की तरह चलती जा रही है कि जैसी गेम चालू होगी भाई तो फायरवर्क्स वहां भी चालू हो जाएंगे। Correct. And I think we should have lift-off very, very soon. Players are already there. By the way, just a few moments ago, Magnus and Vincent were analyzing on the board itself. I think just to discuss their strategies. And we have handshake. Arjun with the first move goes for d4. Yeah, opening of the bishop, very logical. यहाँ पे भी I think d4, e4 center. I think center is the theme for today. हाँ, अर्जुन Oh, गेम पे आ जाओ साज भाई। आई थिंक वहाँ पे भी d4 ही है, so not much changed. And very interesting detail I noticed, जो फ्रीस्टाइल के चेस बोर्ड्स हैं, I don't think they are on top of the table. They are partially below the top of the table. So basically it's like गड्ढे में है वो बोर्ड। I might be wrong, but जो देखने में मुझे लगा, they are not really on top of the table, if that makes sense. not sure उसका मतलब क्या है, but नहीं मतलब जैसे कि मतलब इस टेबल रखते हो तो बोर्ड के ऊपर थिकनेस होती है टेबल की, राइट? वो थिकनेस yeah. नीचे है, लाइक इट्स बेंट। हाँ, यू सी लाइक इट्स जैसे वो जिक्सॉ पजल की तरह फिट किया हुआ है बोर्ड, आई थिंक इनसाइड द टेबल बेसिकली। तो Fancy. पीसेस का जो बेस है इट्स पैरेलल टू द टेबल बेसिकली। Yeah. And by the way, Arjun has thrown g4 on the board. तो किंग साइड पे कास्टल करोगे वहां भी अटैक है, क्वीन साइड पे कास्टल करोगे वहां भी अटैक है. For now he is attacking the d5 pawn. Yeah, and G4 is of course a double-edged move as usual. आपने F4 H4 स्क्वायर्स को अलविदा कह दिया है, एंड कभी अलविदा ना कहना मैंने सुना था किसी मूवी में, तो इट्स गोना बी टफ। ऑल्सो बोथ बिशप स्टिल नॉट डेवलप्ड, या सो यू हैव टू स्टिल चूज कि मैं बिशप कहाँ डालूं। एंड आई थिंक H4 H5 आने वाला है साज भाई। एज वी सीन H4 इज अ वेरी कॉमन थीम, यूजुअली डज वेरी वेल इन दीस स्ट्रक्चर्स। Yeah, completely correct, but for now he has to defend the d5 pawn probably via e6 and उसके बाद कुछ h4 h5 फेंक सकते हैं. That looks like a good move. By the way, Sindarov, the only player so far having a good position with the white pieces, he might actually eliminate Maggie. But let's see क्या You होता know है. what? Sarvai, maybe we need a two camera scene. One side we need Arjun, one side we need Magnus, because यहाँ पे तो analyze करने का time वैसे भी कम ही है. Because at the end we're looking at blitz now, Chad. It's 5 minutes plus 2 seconds. You can already see two players going down to the 3 minute timer on the clock. Maggie plays knight b6 and now knight c3, developing the pieces. I think Sindarov having a slight space advantage on the left side of the board. And right side पे Arjun एकदम उल्टा हो रहा है. Like it feels like black has central control there with that e5 push. They say when Bhai, you he sacked attack a on the pawn. flank, He's sacking a pawn with 95, 95, queen d5, bishop e6. And basically hands is saying, भाई मारो मेरा d5 pawn, मार के दिखाओ. भाई अमेरिकन अर्जुन का टाइम भी देखो यार. It's he has less than a minute, yeah, on the clock. Ooh, he Doesn't doesn't. capture the pawn. Yeah, I think he saw something in the position which he didn't like, and very, very, very practical decision. But I just wish he had played it quicker. And now e4 only move for Hans Niemann. You have to save the d5 pawn. Oh yes, अब बिशप e6 पे तो नाइट d5 मर जाएगा. सो हांस को e4 खेलना बहुत जरूरी है. बहुत टाइम है हांस के पास. एक्चुअली अर्जुन का मे बी दैट वाज अ ग्लिच. अर्जुन हैज अ मिनट मोर नाउ.
the time is more or less balanced now. Maybe it was a glitch. भाई यही होता है ना, जब डीडीटी बोर्ड टेबल के अंदर ढस गया हो तो कई बार Hmm. गलत पिकअप कर लेता होगा मूव्स, नहीं? Could be, could be. स्पेशली अगर अगर टेबल सही से ना रखी हो, लाइक टिकू भाई सेज. एंड इमेजिन इफ मैग्नस बैंग दिस टेबल, लाइक बोर्ड तो बाहर ही निकला है टेबल से। चलिए बोर्ड भी Oh, उसमें सिर्फ पीसेस जम आए थे, बोर्ड भी जम मार लेगा। why goes g5, Arjun, and now h6 looks like a promising move for Hans. क्योंकि वो क्वीन, अगर अगर आप h6 नहीं खेलते तो क्वीन का कोई फ्यूचर ही नहीं है h8 पे. वो क्या कर रही है उधर? भाई क्या ही बाइंड बनाई है ना पॉन जी5 से, तो क्वीन लिटरली हैज ऑलमोस्ट नो स्क्वायर्स, तो आई लाइक द मूव h6 आल्सो। बाय द वे, क्वीन सेट कैसल ओनली मूव फॉर हैंड्स, प्लेस इट। And now maybe like h4 or something, our go-to move when you're not sure what to play in freestyle, just play h4. It's usually या the right move. नाउ क्वेश्चन फॉर माय एंड इज, वेयर डज द व्हाइट किंग गो? आई डोंट थिंक द व्हाइट रूक्स हैव मूव्ड, so most likely queen side. And that's why he does play bishop d2. Yeah, I think he wants to put the king in the corner as soon as possible. Yeah, bishop d2 played, long castle की तैयारी. एंड हंस को वो क्वीन निकालनी चाहिए किसी तरह से. लाइक आई रियली लाइक द मूव h6. ही शुड प्ले h6 आई थिंक सून हियर. बाय द वे चैट, जितने लोग भी चैट में हैं, आपके आईडीज कई बार रैंडम होते हैं, सो वुड लव टू नो योर नेम्स एंड कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग। कई बार sometimes some people showed up in Goa. So I don't know if it happened to you, Saj bhai. Somebody would show up in Goa ki, okay, I'm my name is XYZ. I would say, yeah, I don't remember XYZ. Then they would say, tell me their username, and I would say, oh acha, you know या दिस हैपेंड टू मी, यस, इन गोवा. दैट इज ट्रू. that happens a lot. So would nice to know your would be nice to know your names. Yatharth, Isha. ओह वेट, uh आई थिंक मेरा वो कैंसिल हो गया. आई थिंक दिस इज, अरे हाँ यार, एक सेकंड ना, गलती से हो गया. यू Met you कैन in Goa, कंटिन्यू see? साहिल भाई. See? क्या हुआ साज भाई? You can continue, Sahil bhai. I'll just doing हाँ something हाँ। quickly. बाय द वे, निरंजन, अरे निरंजन हमारी टीम में है भाई। रमेश, स्नेशीश, नाइस टू मीट यू। उमर फ्रॉम पोलैंड, अरे बाप रे, लंबी उम्र है भाई आपकी। By the way, thanks for sharing your names, chat. Streams would like karo. Meanwhile, Queenside Castles played. The king is very safe, but कल को अगर ये bishop f5 आ गया ना, then the king can be cut, completely cut across that diagonal. So knight on e3 becomes an important piece now. But फिलहाल के लिए white's position looking slightly better, but can he maintain that? Erigesi Arjun time पे बिल्कुल आगे चल रहे हैं, so फिलहाल के लिए बढ़िया लग रहा है. On the left side, however, look at the clock of Javoki Sindarov. 1 minute है versus 3 minutes of Magnus. Suddenly Magnus Carlsen, after losing that last game, staging a comeback with the black pieces, and Sindarov पे बहुत प्रेशर बन रहा है क्लॉक के ऊपर. Yeah, Sindarov, I think, manages his time really well. जब भी उसका कम होता है, I don't think he crumbles in time pressure. So, I mean, we saw this in the previous game as well. I mean, he was better, but like in converting that against Magnus was not an easy task. Plays Queen C1, by the way. Queen A7 का plan. Look at that. Wow, सीधा रुक की तरफ नजर, and if you castle queen side, then queen a7 anyways, creating attacking ideas. Meanwhile, Sajbhai on the right side talking about crumbling. Why can't the pawn on d5 crumble right about now? Just knight d5. भाई डर लग रहा है उसको मार के तो. Not gonna lie. By the way, Doesn't play it, Maggie, bhai. now a bit better, dominating on the dark squares. No looks of it. On the right side, Hans just played knight Oh c4. wait, Slight inaccuracy. h6 का pawn नहीं मर रहा क्या? भाई h6 मर रहा है. Also, you can play knight to f6. बस black queen को Oh, played कोने में फंसा दिया है, and d5 is still hanging, and rook is attacked. This feels like white is just winning. Mistake. okay, takes. Arjun on the driver's seat, almost winning. अभी रुक को बचाना बहुत जरूरी है. रुक को बचाया तो queen g2, perhaps. Commentators are supposed to be, less emotional, but Arjun का ये नहीं जीता, बड़ा दुख होगा यार. This one he has to win now. Like there is no counterplay whatsoever. At least, क्योंकि परहम की वो स्ट्रीक टूट गई है भाई. why? I'm telling you, ये game तो जीतना ही पड़ेगा. There is no clear counterplay just yet. D5 is falling. हाँ, करा मैंने एक्चुअली.
बोर्ड नहीं आया क्या? Come on, Arjun. Come on. You can do this. You can do this. Now Hans Niemann with 48 seconds on the clock, struggling on the clock, struggling on the board. क्या करेंगे वो यहाँ पे काउंटर प्ले करने के लिए उनको एच फाइल ओपन करनी है बट एच फाइल ओपन करते क्वीन ट्रेड हो रहा है एंड दैट्स द प्रॉब्लम फॉर हैंस नीमन द ओनली वे टू क्रिएट काउंटर प्ले एक्सचेंजेस द क्वींस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डजंट वांट टू डू एक्सचेंज मोर पीसेस क्या करेंगे यहाँ पे चैट डू यू थिंक अर्जुन विंस दिस गेम चैट यस और नो स्पैम कर दो ही टेक्स ऑन जी5 पॉन से मारेंगे पॉन क्वीन ट्रेड आई थिंक अर्जुन इन द ड्राइवर सीट लुकिंग ग्रेट इन दिस पोजीशन बस वो जी5 पॉन गिरना नीचे साथ भाई If I go knight takes g8 in this position, I guess you can just go pawn takes pawn. Yeah, वो knight के पास कोई वापसी का घर नहीं है. And then Hans gets some counterplay. So maybe pawn takes pawn is the right way to go here. Yeah. That knight on f6 is such a oh, he takes. Oh, he takes. Interessante. Okay, it's still winning, of course, but now you have to find e4. Only move for Arjun. He has to find e4. And basically but it's very hard, yeah, because मारने के बाद a2 pawn hanging है. But e4 has like Arjun written all over it. I feel like, yeah, I told you. भाई मतलब मेहंदी से लिख दिया भाई e4 भाई सीजन ही ऐसा है ओफ क्रेजी मूव ओहो सीजन ही ऐसा है क्या बात ये तो आपने लास्ट वीक वाली बात बोल दी अरे भाई दिस वीक भी वही है हमारी नहीं तो किसी और की बाय द बिशप टेक्स e4 नाउ डू यू टेक द पॉन ऑन a2 इज द क्वेश्चन ओह व्हाट दैट्स अ ब्लंडर yeah knight takes e4 was winning bishop takes e4 actually now Hans is back with 12 seconds on the clock भाई रो दूंगा मैंने कहा ना साज भाई आई एम गोना क्राई मेरा क्राई आ रहा है साज भाई टिप टिप बरसा क्राई अरे भाई घोड़ा भी खा गए यार हम लोग कह रहे वाइफ रिवील भाई एक गेम नहीं जीता जैसे जीतेगा अर्जुन वाइफ रिवील कर देंगे भाई जब से आपने बोला ना अर्जुन जीता ही नहीं है बेचारा पहले दिन उसने मैग्नस को हराया लाइक By the way, takes on c6, best move played. Now rook g6 is the threat, right? Because d8 is hanging. You can't take. Played. Beauty. Beauty move by Arjun. Can we go full screen Arjun's board? I mean, like, the only having Arjun's board there for a second. I think that will end soon. Let's go. Arjun, finish him off. Maybe rook e1 attacking the queen again. Rook e1. Nice move, actually. Rook e6 भी possible है भाई apparently. Also remember chat 2 second का ही increment है यहाँ पे not 10 seconds so Hans has to play really quickly here. अरे ध्यान से मेरे भाई. This must be winning. Come on. भाई बस queens trade करनी है. I think I need to trade queens. I need to trade rooks. Then the win should be very simple because same side पे भी मेरे पास extra pawn है, right? All I need to do is trade queens. It will be an elementary win after that. Oh blunder! Rook e1. What? Bro, I think he missed the a2 pawn. Ooh, a2 pawn मर गया. भाई bishop a4 only move. Wait, queen f7 is a mistake. I think. No. I think still equal. Now he's an exchange up, but black के पास कोई weakness नहीं है और उसके पास double bishops भी है. Unless he manages to capture one of the bishops. Oh, he does. Oh, Sahaj bhai, look at this. रुक गया. Rook e1. But queen d8. Oh, winning. Wait, what? Wait, what? How is it winning? How do you finish off the game? Queen c7 ही winning है क्या? I think Arjun is winning. Oh, let's go! What a brilliancy, bhai, to finish off the game. And Arjun Erigasi wins. Let's go, brother. Beautiful. Checkmate. Rook a6 was an absolute treat to watch, I have to say. Like action replay बनता है इस पे तो यार. Yeah, एक बार दिखा दो साथ में फिर से वो move दिखा दो please एक बार. Look at this chat. This was the position. Queen d8 check, king a7 and rook a6. What a move. Rook sacrifice. King a6, queen check, queen takes b7 and knight key made by finishing it off in style. What a finish. Wow, and let's jump to Magnus's game. अभी भी चल रही है वहां पे. Magnus has also won. So 2 results. Let's jump to Vincent's game who's also winning. Yeah, Vincent is a piece up against Levon. इस मोमेंट पे सबके सब बड़ा फटाफट खेल रहा है भाई 2 सेकंड का इंक्रीमेंट wait what oh what oh my god भाई कुछ भी हो रहा है suddenly white is better now if not winning white is winning what better white is winning Vincent ने पीस दे दिया भाई एक चाल का पीस यार he had 2 bishops and he just missed one of them what is going on
अच्छा, वाइफ रिवील करना है क्या अब? डू आई रिवील द नेम और डू आई ब्रिंग कॉलर? आई थिंक नेम रिवील इज गुड इनफ, या? बुला ही लो। आप आपकी मर्जी भाई, तो इट्स अप टू यू। I'll check if she's here though. After the game ends, I'll check. लेवी को हाईलाइट मिल गई आज की। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेवी तो भाई उसको हाईलाइट की जरूरत भी नहीं है भाई, ही क्रिएट्स हिज ओन हाईलाइट्स। किंग d5 एंड नाउ वी पुश a7। अरे यार, feeling very sad for Vincent here. He had such a golden opportunity to win the game, and with just one blunder, And he's there it lost. is, bhai. There it is. And wow, Vincent can't believe it. Both players kind of laughing it out. Freaka piece. Reminds me of my games. But yeah, so Aronian wins. So three games. Magnus wins, Arjun wins, Levon wins, and Tino game make comeback is a must. Saj bhai, I think we might have three results in the next game itself. Yeah, I think no Armageddon is what is my guess. Yeah, yeah, yeah. I, Very I think likely. no Armageddon because again Sindarov को फिर से ब्लैक से मैग्नस को हराना पड़ेगा, Not gonna which I think happen. is okay unlikely. Then Yeah. Vincent has to beat Levon with the white pieces. Okay, this can be possible. And then lastly, I think Hans has to defeat Arjun with the white pieces. Possible है, but tough है, right? Tough है. Hmm, tough है. Wife reveal. भाई I'll just check if she is there एक बार. अरे 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 अरे, क्या बात है, क्या बात है. अमेजिंग, 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 अमेजिंग. चैट मीनवाइल साहिल भाई थोड़ा रिवील करते हैं तब तक. या दैट्स द सिचुएशन. आई थिंक इन अ फ्यू मिनट्स विल हैव आई थिंक द फाइनल राउंड of the semi-finals today, and कल finals होगा, starts at 4 p.m. as usual. um so yeah, I think if you think about it, Vincent अगर वो piece blunder ना करता तो he would have actually qualified to the finals. Like एक piece blunder की वजह से like now he's in basically on survival mode. Yeah. यो यो टिक्कू भाई, क्या हुआ? Yeah, I think she's on a Zoom call right now, so can't join, but I can reveal the name, bhai. I got married to WIM Parnali Dharia, so वो भी chess player ही है. And I think हम दोनों की rating भी बराबर है. And we actually played a chess game on our wedding night. तो वो video मेरे channel पे कल आएगी, I think. यो यो And यो. the funny part is, it was commentated on by Divya Deshmukh. So, bhai, completely biased commentary. Almost regret the decision of having commentary there. But yeah, that game will be awesome, bhai. मजा आया. भाई रेटिंग ज्यादा किसकी है? Rating मेरी ज़्यादा है, but I आपकी think ज्यादा है? हाँ on paper, but I think I've not played actually for a long time. Maybe that's the main reason. She has played occasionally. So उसका कारण I हम्म. think ये है भाई. But yeah, चलो बढ़िया भाई. कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक वंस यू भाई, अगेन. थैंक यू. थैंक यू, मैं अपनी रेटिंग चेक कर रहा मैरिड था कि लाइफ ज्यादा ही है में. ना. हाँ ज्यादा ही है भाई, मैंने भी वरना जैसे भी काउच पे चेक सोना पड़ेगा. किया. वरना काउच पे सोना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए, बट या. क्रेजी थैंक यू क्रेजी चैट. क्रेजी. थैंक यू. ये कब हुआ भाई? हो गया भाई, पिछले हफ्ते शादी हो गई भाई की. नाउ भाई विल बी क्रैकिंग वाइफ जोक्स इंस्टेड ऑफ एक्स जोक्स. लाइफ में चेंजेस. नहीं नहीं, एक्स जोक्स तो अभी मारे आपने 2 मिनट पहले, हाँ, बट आधा वी आर घंटा पहले. फेजिंग आउट लाइक वो होता है ना, व्हेन यू थोड़ा ऐसे कंपनी चेंज करते हो तो पहले आपको एक महीने का वो होता है, लाइक क्या बोलते हैं उसको. भाई फेजिंग आउट से याद है, कैमरामैन क्या कर रहा है अभी? आई हैव नो क्लू. कैमरामैन के बारे में मुझसे ना भाई पूछो ये भाई. देख रहे हो, ये क्या हो क्या रहा है अभी? कैमरामैन कहाँ जा रहा है, किसको देख रहा है? आई एम नॉट इवन श्योर कहाँ पे है ये. लाइक व्हाट आर वी डूइंग? Thank you, bye. या. Thank you, Nipush, bye. Thank you, Suyash, Satish, JR 2016. Thank you, bye. 2016 के बच्चे भी थैंक congrats लिख रहे हैं भाई. Thank you, भाई. Notice period, yes, thank you. तो notice period चल रहा है भाई. पता है क्या व्यू है? फ्री स्टाइल वालों हमें बुला लेते हैं, मैं पता है इस काउच से उठता ही नहीं भाई. आई वुड ले डाउन ऑन दिस काउच एंड नॉट गेट अप फॉर 4 days. क्या मे व्यू बी है भाई, इसीलिए ओहो. मे बी इसीलिए नहीं बुलाया उन्होंने आपको. मैं तो बुलाना चाहिए था ना यार, मतलब आई मीन यार, गाय कैन ड्रीम. सही बात है, सही बात है. एंड समय भाई, डू वी हैव द टाइमर फॉर द नेक्स्ट गेम? कैन वी सी दैट एनीवेयर? ब्रो गॉट इज रियल क्वीन, बिल्कुल. एंड बाद में वो कह रहे हैं फाइनली साहिल भाई विल नॉट मेक मैगी, ही विल गेट मैगी ऑन स्ट्रीम. अरे अरे वाह भाई, लाइफ प्रो. साथ में यू शुड आल्सो गेट अ प्रो, मे बी अ प्रो लाइक दिस प्रो. इन लाइफ. I have an iPhone Pro Max, so
But it can't make Maggie Saj bhai, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मेरा भाई है, लेकिन मेरा भाई अभी मैगी बना देगा मेरे लिए, आई नो। हाँ, छोटा टिक्कू मैगा सब क्रॉस कर देगा। Gonna ignore that. वाओ। Prompt. Nice, nice, nice. By the way, इस बैकग्राउंड को प्रॉम्प्ट मुझे दे दे यार, क्या व्यू है भाई, ओहो, समुंदर सामने, लाइक इट हैज एवरीथिंग, इट हैज माउंटेन्स इन द डिस्टेंस, इट हैज ओशन, it has greenery, and it has like a 5-star hotel, like everything. Why, it's like a culmination यू of everything, yeah. फॉरगॉट, यू फॉरगॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट हैज अ चेस बोर्ड। हाँ मतलब लाइक व्यूज वाइज, या मतलब वो तो चेस बोर्ड तो कहीं भी रख दोगे यार, मतलब माय पॉइंट इज इट हैज एवरीथिंग इन वन ग्लांस भाई यार। आई एम डिसअपॉइंटेड विद फ्री स्टाइल, मुझे बुलाना चाहिए था यार वहाँ पे यार, हम दोनों को बुलाते हैं साज भाई, हम भी जाते हैं यार, कमेंट्री वहीं से करते हैं, मैं तो यहीं से कमेंट्री कर लेता हूँ यार, लिटरली यहीं से चेस बोर्ड से ही। साहिल भाई आई एम सुधर फोर्टी जाएंगे अब। फाइव ओ नाइस। डाउटफुल भाई। नाइस। साहिल भाई सुधर जाएंगे भाई, मैं सुधरा हुआ हूँ यार, मैं पैदा ही सुधरा हुआ था। वी से सहाज भाई डांसिंग वीडियो और हल्दी भाई, सहाज भाई सेशन के लिए आए थे तो उसमें डांस नहीं था, बट वी डू उन्होंने हैव बुलाया ही नहीं वीडियोस ऑफ। मुझे भाई हल्दी नहीं के यार, लिए। दैट वाज नॉट माय डिसीजन यार। ओ नहीं, नॉट हर्स आल्सो, नॉट ओ हर्स आल्सो, आई थिंक वो ओ इट वाज आउच। बेस्ड ऑन, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ अस बाय द चैट, वे। आपको पता है दर्द क्या होता है? लाइक आई एम फीलिंग इट राइट नाउ, प्रॉपर पेन। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, बट रिसेप्शन बहुत आई बढ़िया थिंक, थी भाई। हाँ आई थिंक द बेस्ट वाज हल्दी, आई थिंक हल्दी में बेसिकली एवरीबडी वाज वेयरिंग येलो, like it just looks amazing, like I really underestimated how cool haldi looks, like it was really cool. नाइस, वेरी नाइस। तुम तुम इतना इतना जो क्यों मुस्कुरा रहे मुस्कुरा हो। रहे हो सहाज भाई, सहाज भाई, भाई वो जो हल्दी पे नाग, नो इनविटेशन का गम छुपा रहा हूँ। अरे भाई, लेट्स गो चैट, भाई कम उसके ऑन, बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, थ्रो दैट विल बी मोर, इंटरेस्टिंग। थ्रो। आफ्टर आफ्टर स्ट्रीम देता हूँ, आफ्टर स्ट्रीम देता हूँ भाई, क्रेजी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट शादी सहाज भाई की है इसलिए, अरे वुड लव टू, सहाज भाई इसी होटल में रख दो। भाई कैसे? परफेक्ट, हाँ ये सही है भाई। परफेक्ट परफेक्ट भाई, एक तीर से चार निशाने, मतलब हाँ हाँ माउंटेन, हाँ। सी, घास फूस और होटल। आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो लाइक भाई मैं क्या, कुछ मैं तो बात हो ऑलरेडी सकती अपना है। स्पॉन्सर कर दिया ना भाई, अब टफ हो जाएगा। ये chess.com, लेट्स गो। नेक्स्ट शादी सहज भाई की है, नहीं भाई अभी मेरे भाई की है, देन मी। बाय द वे, ओके, वी वी डोंट स्टिल डोंट हैव द सी द टाइमर प्लेयर्स, येट, या वी डोंट सी द टाइमर ईदर या। should we take a 5 minute break and be back quickly? अप टू यू। Yeah, guys, I चैट, think व्हाट डू let's यू take a. थिंक? Chat, let us know. What do you think? Next round when I think has ASAP. I'm hoping. Yeah, I think this is probably the last game, but we are not seeing any updates as of now when the games are going to begin. I believe the position would have been set. I don't think जो starting position दिख रही है वो होगी अभी। ये players भी नहीं है भाई. That's the. हाँ, players नहीं है तो maybe we can take a break, yeah. Yeah. Let's take a 5 minute break. Chat. We'll be back on the other side very very soon.
And we are back after a short break. भाई गेम्स शायद चालू हो चुकी हैं. I don't know how that happened quickly, but regardless, we are ready, and it is uh, Hans Niemann versus Arjun again. Arjun के हैं black pieces साज भाई. So this time पे a draw is enough. Yep, draw is more than enough. All players started with d4. By the way, let's just showing it d4 e5, d4 e5, d4 e5. Exact same position. So unity team में है अभी भी. Yep. And by the way, king on g1, king on g8. I think we saw that structure yesterday as well. दोनों बिशप साथ में है. That means king साइड पे अटैक लगने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई फॉर बोथ प्लेयर्स. जो भी अच्छा बिल्डअप कर पाएगा उसको अटैक अच्छा मिलेगा. द नाइट ऑन a1 अगेन द ऑकवर्ड पीस एज यूजुअल. बट ठीक है, इट हैज अ गुड स्क्वायर ऑन b3 एंड पोटेंशियली ऑन c5 एज वेल. सो दोनों प्लेयर्स काफी फास्ट खेलना पड़ेगा दोनों प्लेयर्स को. कितने एरो साज मैंने बना दिए. हिकारू वुड ब्लश. साज भाई क्या लग रहा है, एनी कमबैक्स पॉसिबल टुडे? No, I don't think so. Magnus already slightly better against Sindarov. विंसेंट का पता नहीं. विंसेंट आई थिंक थोड़ा टिल्टेड रहेगा, तो मुझे वो अनलाइकली लग रहा है. हांस, आई डोंट नो. हांस मे बी पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक सो. कैन आई वी गो टू थिंक द दिस इज द एंड ऑफ द टू रोड. बोर्ड सेटअप यार? तब तक मैं कैमरा भी चेंज करता हूँ एक बार. वुड लव टू सी both Magnus as well as Arjun, because I think these two games are very important for us. And Magnus Carlsen एक कमबैक किया था वहां पे सिंदारोव ने. क्या वो दोबारा कमबैक कर पाएंगे? इट्स नॉट गोना बी इजी. मैग्नस कार्लसन इस बार बिल्कुल मोमेंटम से खेलेंगे भाई. ही विल बी वेरी कॉशियस. Okay, he might not get a quick draw, but he's gonna possibly even win two in a row. Yeah. Yeah, for sure. And Hans goes for a4, attacking that knight on b6 with a5. And Arjun just chops off the pawn on a4. Let's go. भाई पॉन मिल रहा है तो ले लो यार. I mean, that's भाई, the lesson we have learned from greedy VD. ये मैग्नस विनिंग ऑलमोस्ट है क्या? He looks almost winning. Like bar is oh, Apparently. g4. Look at that. g4. What a move. Oh wow, what a move! And it's, I think, one of the best moves in the position apparently. Hmm. If takes g4, let's see the follow-up now. Is it going to be queen g3? It feels logical just to chop off that pawn on g4 as well. Queen g3 or queen h4 is the question. I think Magnus को भी थोड़ा careful रहना पड़ेगा, because last time जब Sindarov must-win situation में था, he did deliver Oh, with the mistake! black pieces. Mistake by Magnus. Queen g3 was not the best move in the position. 92. Yeah, h3 कुछ खेलना चाहिए था to open up files, but queen g3 के बाद h5 for black, and suddenly there is some play. h5. h5 looks risky. Actually, भाई even बहुत risky है h5 cd5, यार. even cd5, cd5 पे तो cd5. फिर and then h5 खेलोगे आप? h5. h5 तो वही बात, तो वही है ना. हाँ, बात तो वही है भाई. अभी के लिए टाइम सेम है more or less, which means games are pretty much balanced. एक नजर मैं जस्ट अरोनियन के गेम पे भी मार रहा हूँ. बाय द वे विंसेंट स्लाइटली वर्स, सो वहां पर टाई ब्रेक के चांसेस बहुत बहुत कम है. आई थिंक विंसेंट प्रॉब्ली टिल्ट कर रहा होगा एट दिस पॉइंट. Yeah, and also Vincent, of course, is one of the rising youngsters. फिलहाल मैग्नस को हम लोग देख रहे हैं क्वीन जीतने के बाद a5. Also a decent move here, I think, potentially pushing the knight with a4. And अगर यहाँ पे आप ये भी knight फ्री है. a5 मारते हो साज भाई, then is that a big problem for Magnus? Actually it was for some reason, but he doesn't go for it. He plays f5 and Sindarov is better again. Wow. भाई आर्मा is Arma भाई incoming today. आज ही के दिन होना था आर्मा भाई. I don't think Magnus के karma में है आर्मा साज भाई. I think he's gonna still play some great chess. अभी पिन हो सकता है knight तो king g2 only move, but he's gonna find that very very quickly. And basically idea है कि यार h3 खेलना है सही moment, because मेरा rook on h1 is not doing anything. My queen is blocked by that little pawn on g4. उसको हटाओ, g7 तक पहुंचो, get the bishops out. Maybe there is still potential for Magnus to do something. Ooh, he allows Knight double take. check. What? That's a blunder. I'm sorry, That's a what? blunder. Okay, what was that? I'm Bro, sorry, what was that? that makes no sense. No, I mean, okay, it does make sense, because after knight c4 check, king g2, by let's not forget knight h6 is just a checkmate.
ठीक है, आप अगर H5 ही खेलोगे ना तब भी 96 चेक है मेरे पास. No, but why would you not start with king g2 first? दैट इज बियॉन्ड मी. यस, वो करना चाहिए था. नाइट G4 इज a huge inaccuracy by Magnus. आर्मा की तरफ बढ़ते हुए ये गेम. भाई जावोकिर Wow. बेस्ट फॉर्म में नहीं लग रहा. आई थिंक मैग्नस थोड़ा टायर्ड लग रहा है मुझे. आई थिंक दैट्स प्रोबेबली मोर But he accurate here. has to strike while the iron is hot, and he has knight c4 best move played and h5 best move again. So Magnus Carlsen is now completely lost against Sindarov, and we are going into another tie breaks maybe. यप, आर्मा इनकमिंग. इसके बाद तो आर्मा ही होगा ना. Is it what's the next tie break? So why is it just Arma? We're आर्मा gonna ही. have like 3+2 or something. I don't know. By the way, h5 के बाद the problem is knight h6 के बाद black will just give up the rook for the knight, या. and then he will say कि भाई आपका king weak है, सब कुछ weak है, e4 pawn strong है. Um, Armageddon next, awesome. Wow, he plays queen e5, the one of the best moves in the position. Queen takes, knight takes के बाद he's back basically. Pawn takes pawn and देखो भाई कितना counter play सिंडरोव के पास. True, Magnus and in by the way, trouble for sure. very interesting. All the black players doing very well. For example, Arjun is suddenly better. Can we look at that game carefully? Because जो current position है, white के pieces थोड़े passive लग रहे हैं. I can see long term a5, a4 as a plan. A clear pass pawn for Arjun. Oh yes, that looks scary. That looks very scary. Oh Wait, wait, suddenly that's the a pawn mistake by went up. Arjun. Arjun also makes a slight error. अरे Queen यार. c8. I think the problem is knight b4. No, actually nothing. You can just play king g2 or something. Knight b4 is also working, but king g2 also works. अरे Knight यार b4 a6 pawn कैसे played. बचेगा? Best move. भाई a6 pawn तो a5 गया. खेला तो a5 खेला तो knight c6 आ रहा है क्या? I thought yeah, हाँ, knight c6 आ knights. रहा है भाई. आ रहा है भाई knight Oh. c6. क्वेश्चन इज उसको दिखा के नहीं. No, for sure he saw that. Yeah, he will not go back to C2 here. That's not going to happen. I mean, you can, no, because to a5 का pawn तो फिर भी attacked है. But A4 then. Oh, he goes देखो. back. Wow. He goes back. Yeah. I'm genuinely shocked by that. Even B4 is possible actually, just to save that pawn by force. And knight c6 hard to see भाई, hard to see. And Magnus kind of fighting it out. Pawn takes pawn, मर गया on the left side of the board. Sindarov is about to take that pawn on d5 and look at that majority. भाई पूरा center Sindarov के control में as soon as he takes the pawn on d5 and taken. Wow. Magnus will have to play out of his skin to hold this, but I think he can do it. If anybody can. Meanwhile, on the right side of the section, blunder by oh wow, f4. F4 opening up the king side, bishop, queen, सारे entry मारेंगे. That's a blunder by Hans Niemann. Can Arjun push that? He has. Wow. Okay, Arjun, I think should win this. I think it will take a miracle for Hans to sort of come back from this situation. भाई यही है जादू हमारे अर्जुन का भाई Magnus, ही. हाँ सच भाई. Magnus on the other hand, I don't know. वो भी थोड़ा रिस्क लग रहा है. नहीं नहीं बचा लेगा. आई थिंक दोनों बचा लेंगे. मीनवाइल ओह दैट फील्स सो पोजिशनली रिस्की यार. आपने अपना जी फाइल खोल दिया. बिशप जी4 टेम्पो के साथ आ रहा है. F3 इज सो टेम्पटिंग राइट नाउ. रुक H6, रुक G6 इज इन दी एयर. आई जस्ट फील लाइक ब्लैक हैज अ बुफे ऑफ ऑप्शंस. अब बस मतलब भूखा नहीं मरना है भाई उससे. ये तो अब बहुत ऑप्शन है हमारे पास. नाइट e5 खेला अर्जुन. आई थिंक f3 जो आपने कहा था, दैट वाज द प्लान. नाइट टेक्स नाइट के बाद पॉन टेक्स नाइट एंड f3 स्टिल इज थ्रेटेंड. बेसिकली अर्जुन बोल रहा है आप अपना गोल्डन पॉन मूव करो. प्ले f3 टू सर्वाइव. ओह भाई ऑन द ड्राइव टू लेफ्ट साइड सर्वाइव ऑफ द सुना है. बोर्ड F3 मैग्नस टू सर्वाइव नहीं प्लेज सुना बिशप यार. a2. क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ ड्राइव टू सर्वाइव सुना है. F3 टू सर्वाइव नहीं सुना यार. अरे बिशप G4 अरे, प्लेड. नाइट f3 चेक. That's so awkward for white. King F1 खेलना पड़ेगा after that check. Okay, rook f8. Magnus kind of holding on by a thread on the left side of the board. 33 seconds for Maggie. Bhai, ye, if Sindarov wins again with the black pieces, that would be insane, no? Like he's भाई just एक not मैगी giving की up. बेट लगानी है. एक मैगी की बेट किस लगानी है चीज में? मैगसी गेम पे. क्या? What do you think is the result going to be? आपको क्या लगता है? जल्दी अरे बताओ. आप बताओ ना. अरे आपने बोला तो आपको बेट लगाने, तो आप बताओ ना. जल्दी हाँ बोलो, I जल्दी think बोलो. I think Sindarov I think Magnus draws. What's your take? Magnus draws. हाँ.
चलो ठीक है, डन। क्या you say Sindarov wins, yeah? या ठीक है, तो वन मैगी की बेट, आई थिंक मैगनेस ड्रॉ, सिंदारोव विंस। मेरे को 30 पहुंचना आपके है यार। आपके परफेक्ट 30 हो जाएंगे आपके, फिर वो बढ़िया से डीमार्ट कर दूंगा मैं आपको। डन। हाँ बढ़िया, लेट्स सी मैग्नस भाई आज क्या क्या कल टिक्कू भाई मैगी खाएंगे। बाय द वे E4 के बाद नाइट F4 ओनली मूव फॉर अर्जुन टू टेक दैट बिशप एंड ही टेक्स इट। नाइट टेक्स, डबल बिशप एडवांटेज। द नाइट ऑन F3 इज अ बिट लूज, उसको बचाना बहुत जरूरी है। रुक F8 लुक्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टू मी। भाई बाय द वे, कैसल्स। ओ कासल हो रही है। अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एंड कासल कैसल्स डन। भाई। रुक एट दिस, नाइट G6 पे बिशप H3 इज चेकमेट। ओह ब्यूटी। भाई मैगी कैन होल्ड दिस, 6 सेकंड्स है दो मैग्नस के पास। He हैंस is हैज 10 pulling up his seconds। sleeve. Bhai, I don't know. I don't know if Maggie saves it. Oh, mistake by Sindarov. मिस्टेक बाय मैगी एज वेल दो। भाई टफ चल रहा है। 4 seconds फॉर मैग्नस नाउ, 6 seconds। Hans. Hans टाइम पे हार गया क्या? Wait, I वेट, don't हांस think so. टाइम He पे has हार गया 20 क्या? seconds. नहीं नहीं, he has time. He has time. He has time. कोई अपडेट नहीं हुआ हांस के बोर्ड पे? इट शोज नहीं हो 0 गया. 0 He 0। just played 95. बिशप H3 Oh, मेट। what? Did he blunder mate in one? Oh my god, mate. He blundered mate. Hans आई Niemann just blundered mate. I cannot believe that. Wow. mate in 2 and we called it. Knight G6 पे बोला था बिशप H3 and he plays Knight D5 and Wow. blunders mate in 2. What a way for Arjun to finish it off, and he will play against Fabiano Caruana tomorrow for the 5th spot. भाई बड़ा मजा आया देख Wow. के। So Arjun goes to the winners half of the losers bracket. So he'll play tomorrow Caruana. By the way, Aronian also winning. So 2-0. He will also go to the next round. And by the way, only chance Sindarov, can he strike back? He's completely winning right now. Yep, Sindarov, I think, is going to strike here 100%. 2 times he's going to take down Magnus with the black pieces on demand Oh as he wow, this is captures the just gone. E3 pawn. Bhai, look at that majority. Look at those 3 pawns. D5, E5, Magnus is E4. not Bhai, happy. Look at Magnus. Yeah, look at Magnus. He's not happy at all. He's really bishop mad at takes. himself right now. And Wait, position equal हो गई अब. wait, how? Bishop नहीं, C3 equal तो check. नहीं है. E4, Bishop E3, C4. isn't it winning? Bishop B4. Oh, Bishop B3 check. Yeah, Did he just push it's just over. A6? Yeah. Did he just push A6? No, he didn't. He didn't. Not yet. Can he push A6? Oh, Yeah, he he can push pushed. He A6. pushed it A6. भाई साहब क्या चल रहा है भाई? Oh, Oh, but black is gonna win by force. I think there's yeah, no yeah, yeah. way. This is winning. This is winning. This is winning. Check, and now D1 queen. White के पास checks and now queen D8 check, queen B8 check. But can he find a perpetual is the question. The king has to Very find a unlikely. hiding spot. 8 seconds for Sindarov. Oh, slight error by black now. Queen C7 was the better move. Wait, what do you do now? Queen E7 check. King को कहाँ रखना है? B5 पे. Queen E8 check पे. King B6 and it is winning for Sindarov. Wait, Queen Queen A check. E5, Queen A6, Queen C6. भाई Okay, यहाँ King कुछ हो ना C5. जाए भाई. अबे Queen C6 check was a draw, no? हाँ, even I thought so. It was a repetition, right? Queen E4, Queen C6 was a draw. It's a draw. It's actually a draw right now. Oh my God, Magnus is back. Wow, what भाई a 30 comeback. मैगी, 30 मैगी incoming. Oh, Bhai, now look I'm at, wondering oh, who Queen wins, takes yeah? B, Queen takes B4 and Queen takes B3 taken. Magnus is not losing this Wow. anymore. Bhai, what a save by Magnus. What a save. Insane. I don't know how he did that, by. That was superhuman defense by Magnus Carlsen, saving the game from the jaws of defeat. Wow. Yeah, there we Wow. go. He And can't believe it. Yeah, Sindarov, Sindaro Magnus also smiling. What a look game. What at a that. game. And what a sport Sindarov. Yeah, I mean, what a fight he has given to Magnus. And Magnus, of course, qualifies to the finals tomorrow. And he will play against who, Sahil bhai? I think Magnus qualifies to the final and he plays Levon, I think. Levon. Yeah, so it's Magnus versus Levon for the final freestyle Grand Slam in Cape Town, which will be Wow. tomorrow. Yeah, Aronian won 2-0 against Vincent. Arjun won 2-0 against Hans. A crushing victory for Arjun. Finally converted it. And of course, Magnus defeats Sindaro 1.5 half. So, uske saath hi we have all the results. Tomorrow, it's going to be Arjun versus Caruana. Somebody he would love to beat, Sahaj. Ooh, Arjun Caruana for the 5th place would be very, very exciting to see.
बड़ा मजा आएगा. And of course, for the first place, it's going to be Magnus versus Levon. Sahil bhai, who's your pick? Why Magnus and Arjun? I think it's a given now, Magnus yeah. and Arjun. Magnus and Arjun. Got And it. Got it. Got it. what's yours, Sajbhai? I think same. Yeah, Magnus and Arjun for sure. And Nihal also won today. That's amazing. And the best news out of all this, Sahaj bhai, I have finally reached 30 Maggies. So, it's just amazing. I feel like thanking my parents, everybody who believed in me, that I would get to this point and I would one day win 30 Maggies from Sahaj Grover. अरे 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 Like, अरे अरे ऑलवेज अ प्लेजर भाई. शादी का गिफ्ट tears, समझो. bhai. एक Tears in काम my करो भाई. eyes. भाई एक काम करो, जिस चैट पे अपना एड्रेस लिख दो ताकि मैं वो डीमार्ट कर सकूं. अच्छा चैट पे. अच्छा. You mean हाँ WhatsApp चैट पे chat? अपना. नहीं 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 नहीं, जो अभी चैट चल रही है, मैं व्हाट्सएप खुला नहीं हुआ मेरे फोन पे, लाइक आई एम अच्छा यूजिंग अच्छा. दैट एज अ फोन, सो कोई जल्दी नहीं है. मेरा जल्दी दूसरा नहीं, कल फोन भेज अभी देना भाई. खराब है. नो हरी. नहीं नो नहीं हरी नहीं, भाई. मेरे को अभी नो करना है हरी, ना. ओनली अब विद हम इट. यूट्यूब के वी कैन चैट पे सेंड इट भेजो. टुमारो भाई. नहीं नहीं नहीं, अभी भेजना है मुझे. अब करो ना यार, चैट पे लिख दो अपना एड्रेस. ठीक है, मैं पनवेल में चैट कहाँ में हो? लिखता हूँ. Wait, I thought it's Dominguez for a second. Meanwhile, chat, it was a lot of fun to stream today. Arjun जीता. जब जीतता है तो मजा आता है. We're gonna see you tomorrow. Hopefully, Arjun continues his winning streak, and tomorrow is gonna be a tough challenge in Fabiano Caruana. See you tomorrow, same time, same place. Bye bye, and good night.